I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senorita's going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader, black sheep, messiah to the misfits. Run circles, run these rappers to my shit splits. You a little late to the party. Hello everyone, welcome to another live stream. I hope you guys doing absolutely amazing. We're back again with another watch party. Today is the semi-finals, DRX versus Loud, and it's almost they're almost ready. How are you guys? Welcome. Hello. But before starting the stream, thank you so much Red Rock for the 10 gifted before even starting the stream, and thank you so much Smoker for the responsor. Sahil, thank you for the responsor. Welcome back. कैसे हो guys? बहुत स्वागत है. वॉच पार्टी हो रही है बहुत भयंकर. आज लोगों पे भी स्ट्रीम हुई बहुत भयंकर, बहुत मजा आया. अगर आपने नहीं देखी तो शीश है, बिकॉज आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं करते. बट नेवर माइंड. हाउ आर यू? हेलो वन. हेलो विकास है केदार है अभिलाष. Hello Tej, Saksham, Himanshu, what's up DK? Hello Darshan, Hates, hello Abhinav, hello Anand. Lipstick का मार्क पूछ लो. किधर? 2K मैंने हटा दिया. अरे बफर होता है बहुत. ये तभी होता है गाइस जब हम लोगों पे ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं तो निशान रह जाते हैं चप्पल के. हेलो दिनेश, क्या हाल है? हेलो डिलीटर, व्हाट्सअप. और लंडे कैसे हो? बढ़िया. 12K जी पे टू साक्षी. अभी करके देता हूँ. तो गाइज मैच शुरू हो रहा है, ठीक है? तो पता है क्या करना है. व्हाट्स द ड्रिल? हेलो केशव, हाउ यू डूइंग? ऐसे क्या कर रहे भाई? इसमें शर्माने की क्या बात है भाई? शर्माने की क्या बात है इसमें? मेरे को तो शर्माने की बात ही नहीं है कुछ. संकल्प, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सर है. अभिलाष, व्हाट्सअप. तमीज से भाभी है. फ्लॉस, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सर. भाई वाईटी पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था भाई अभिषेक. निर्मले, हाउ आर यू? 30 गिफ्ट टू एक्सियन. चलो इसी बहाने थोड़ा इंटरेक्शन तो आएगा. हेलो यश, सायरा, व्हाट्सअप. Oh, let's go Loud. Guys, आज किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? मेरे को जानना है. क्योंकि मैच शुरू होने वाला है. मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट. Smoker, thank you for the 100. We've got to see more, especially against Loud. You can't walk in with the same stuff and expect not to get hit in the face. Yeah, now of course when we talk about teams coming out with creative ideas, I still look for DRX या Loud. भाई Loud का होम ग्राउंड है, but भाई DRX मेरे को लग रहा है. Obviously Loud का होम ग्राउंड है, but
conversation. मेरे को लग रहा है कि आज Earlier, while we might be in disagreement, number one in the world. A player to watch on this team is, of course, Mako, and what he can get done today. He's been having an incredible tournament so far, Kilios. And the thing is, and this is why I say he is the best player in the world, is because he always has an incredible tournament. This guy always is the solid foundation for the team. You talk to any of the players here on DRX, they say, who would you rather leave in a clutch? They always say it's Mako. All the statistics might not back it. Mako is always there, and he's always putting up solid figures in the mid-round. And I think it's really important for him to be that good in this matchup because you're playing against a team in Loud who thrives in those late rounds, thrives when things get scrappy and they can clutch things up. So players like Mako and RB are going to have to be fantastic today. If I may, put you on the spot here. If you were to take any player in a clutch 1v1 situation on DRX's roster, would you take Mako? Right now, at this event, I would have to go for RB because a lot of people think that Xiao might be the one who's leading in clutches. It's actually RB. He's got him bested by 0.5% clutch rate with 8 or 9 more attempts. He's currently 10 and 17. Are you telling me that they have the 2 players who are 1-2 in clutches on the same team in the tournament? No, Mako's actually not been as clutch because he hasn't had to be. He hasn't had to be as clutch. I was like, that would be but RB has just been destroying. All right. Previously, 487 आज लग रहा है कि हो जाएंगे 487 में 400 बाकी Hello, well, and they might have to bring it out today if they want to take down Loud. Now, before we kick off today's semifinal, we got a special announcement about the status of VALORANT Premier. Now, if you've ever had dreams of competing on the big stage, or maybe you want to take your 5-stack to the next level, you definitely want to check this out. VALORANT Premier, guys. कॉपीराइट आएगा इसलिए म्यूजिक बंद कर रहा हूँ. तो वैलोरेंट प्रीमियर का सीन है अगर आपका 5 स्टैक है समझ रहे हो मतलब Game Director for Valorant, and I'd love to give you all an update on Premier. Just as a refresh, Premier will be Valorant's team-based competitive system that connects the game and the sport as one greater whole. This new challenge will invite you to build a team and compete throughout the act in a series of weekly matches on designated maps. If you win enough of your Premier matches, you'll earn your way into a playoff tournament at the end, where you'll battle to be crowned one of the top teams in your just like skill Fortnite. division. Premier will be an exciting way for any 5-stack of friends to compete together. But for those of you who aspire to go pro, here's Leo, our head of Valorant Esports, to tell you more about what that could look like in the future. Oh, just like Fortnite or what? Thanks, Andy. All right, so let's say you found your dream team. You won game after game and proved yourselves to be one of the best. You're feeling super confident and you're hungry for bigger challenges. In the future, Premier will be the path to the VCT Challenger Leagues. No more open qualifier events. Your path to pro starts in-game. And if you do great, you get a shot at challengers. Once you're there, well, you're playing with the pros and nothing can stop you. From the Challenger Leagues, you can promote into the International Leagues and one day, even get to champions. So it's 5 friends in a dream, playing from their bedrooms. Atom, Dhanik, and Devendra. Thank you so much, man, guys, for the re-sponsors. Dude, love you. Thank you so much, Atom, we are incredibly excited to build this very unique path to pro and create opportunities for players all around the world. Actually, अच्छा किया बे. This is gonna improve the what we shared today was just tournament scene, dude. The next step is getting an early version of Premier in front of you so that we can build the future of competitive Valorant together. On that note, I'm happy to announce that the Premier Global Beta is planned to begin in Act 3 of Episode 6 just a couple months from now. We'll be back with more details as we get closer, but for now, definitely start putting your team comps and playbooks together. We'll see you soon. Hello, MK Master. भाई बना दी जाए टीम में कैसा लगेगा RakaZone Gaming and their buddies going into the pro scene. Sheesh. Yeah, if I may very quickly, I'm so excited for Premier for a number of reasons, but the primary one is because I'm so excited for the content that will come out of Josh Maldi through his matches because he's going to ego chow the same jet 25 rounds in a row, and he's just going to get diffed every single time. Whoa! What, you can't fight back? What? I feel so badly for Bala on that team. He's just going to be hard carrying a bunch of potatoes. Here's my question. What happens when the broadcast team elevates into competitors? Who runs the show at that point? We've tried that. Right? Well, these guys certainly won't. Well, I'm like a silver KJ one trick. Maybe minus Josh plus you? Yeah, there it is. That might be an upgrade. Solid upgrade. We're not sorry. I'll be the thank you for the calming force. Just losing it. All right, now earlier we put a poll up on Twitter and asked you to tell us which team is going to move on to the grand finals. The results are in. And
Let's get that reveal. That's what I like to see, baby. DRX, bitch. Gets the backing from the DRX. fans in the DRX prediction. I will admit I am utterly flabbergasted. Are you? Raka नहीं कंसिडर होता ब्रिजेश भाई बहुत बेहतरीन खेल रहा हूँ डायमंड 1 है अभी देखो What's happening to Twitter? Are we too excited because we're in the crowd and we're not looking at Twitter? They're all here. They're all in the audience. DRX जीतेगी DRX. We really do. I feel like this is kind of the expected result. I feel like this is a 60-40 game in favor of DRX. I kind of want to punt and Pred loud, but I think that DRX is probably the fair favorite here, right? They've stuck to their same roster. They've had a lot more experience. They've shown us good ideas, whereas Loud is still putting the pieces together. They're still in that developmental phase, and I'm not sure if it's enough to win today. Wow. Well, I already feel like I know where all of you are going because most of our discussion has been focused around just that. But let's go ahead and get you on record officially for your predictions. You can either pull those whiteboards back out if you want. I'm really going to leave it up to you. I really like drawing. I know, I kind of My mom was an art teacher, she'd be disappointed if I wanted to make sure that Mimi had permission. I'm not going to bother because my marker's not working. That's also Would you like a marker? And again, Would you like to borrow a marker? we already I'll give you a blue one. We already know. All right, Mimi. Fine. DRX versus Loud. You said it was a 60-40, but that 40% can still DRX I'm in Preds right now. So I wanna go for the 40. Woo! I'm very loud in this one. ये क्या लिखा है लोडू क्या लिख दिया इसने Okay, yeah, don't take Mimi to Vegas. Bro family friendly है क्या लिख रही है लड़की Achilles? I don't need a whiteboard because I have a jersey. पर subscriber DRX 1 push are रहा gonna take भाई it. no one There it is, and there's facial hair on the line. And if they don't, I'll be handing this over to Doug. Man, that jersey is going to look so good on me later. No one, yeah. I 1000% am going मेरा Loud here. I membership think, यहाँ yeah, का होता है the thing is, Shubham they just bhai, look so strong, thank you. right? They look very good through the brackets मुझे that भी they've वही come लगा, through. सच्ची में वही नहीं लगा। They seem like top 2 in the tournament. To be very honest, I think it would be quite frankly shocking if they don't make it to the finals. I mean, said Doug, thank you you might for the wanna swap it, Fred. I don't know if response, you want that Hello, jersey because I have seen Seth wearing it It's every kind single of day at the छोटा hotel. छोटा Not लग sure रहा if it's been washed. He probably like Yeah, sleeps true. in it, wakes up in it. Shows up to the arena Showers every in day. it. Exactly. I actually shower in the jersey. Oh. I don't even I don't take know. it off. Akshay, thank you for the I don't know if it makes it responsor. Yeah, I'm like a never nude with the You just DRX really jersey. love the 53 months bhai 53 You'll look months great in the jersey. The mustache will look great on the floor if you end up losing. I'm going to be happy either way, I think, when it comes to this series. I'm just भाई, hoping वो ठीक है, that पर after तू flying है all कौन this भाई? way, we go the distance for me. यार I ऐसे think मेरे को that's भी really जाना what it चाहिए comes ना down ऐसे to as we casting move to the best of जैसे fives. रॉसी I भाई really गए want to see वैसे these two ऐसे teams मैं push each other all the way. Yeah, and I do think that's exceptionally likely for this series and the one tomorrow. Really, Yes. and the one Saturday, be honest. All आओ the भाई matches विषय are हो good. जाए They ought to be हो जाए very, भाई। very competitive series. It भाई feels like we DRX have जीतेंगे the बता रहा four हूँ best बेस्ट ऑफ 5 है that are just left saying over. It should and make for a lot of according fun. to the Do you analytics agree with that? Four मौका best teams. Do you feel like बहुत we बूट can kind of बनाने वाला definitively है say that in a single elim bracket we somehow actually Dinesh wound bhai, our way to like आज truly? I thought we were gonna have at least one team Inner- that upset inner their way से all the way in. आवाज आ रही है Like a miracle DRX run. Hasn't happened. I think all चलो these पता four चल teams गया really कौन deserve their हारेगा spots and are going to play such close matches today. thank you I for agree. the I mean, I can thank get you the for crowd the getting riled up. sponsor I'm ready to go. It's going to be exciting. They're getting riled up and they're getting बढ़िया riled up for है, good बताओ। reason. Let's get this day started and kick मौका off अबे the हाँ Alpha वही bracket मार्को है semifinals. वो It's the भाई मैं उसे Americas मौका taking बुलाता on the हूँ Pacific. जब वो मेरे Loud साथ खेलता versus था DRX. Best of 5. It's all जब से CS:GO on the खेलता था line. भाई। We're here in Sao Paulo, Brazil for Lock All the In best Day यार 13 यार and God it bless you यार starts God bless right you now. God bless you यार हो जाएगा मेंबरशिप वो ये क्या नया एजेंट है ये क्या है ये मार्वल कहाँ से आ गए ओ अच्छा राइट गेम्स अच्छा ये तो इन्हीं का गाना है नया एजेंट रिवील 4th को है हाँ DRX वालों को क्या मालूम एक ह्यूमन इंडिया में 32 months योगेश भाई मगर आज देखना सारी पनौती उल्टी हो जाएंगे आज Todo brasileiro que joga FPS é um sonho levantar um troféu muito importante desse assim em casa. 이제 한 발자국 남았기 때문에 충분히 갈 수 있다는 자신 있고. Stacks. Suhas, thank you for the re-sponsor. Only 2 teams in EMEA left. Only one of us can go to the final. Navi. That's going to be a bit of a revenge match. I think they gathered one of the best rosters in terms of individual skill. But we're a pretty scary team. 1v3 for Shapout. 1, 2, 3! I'm still aiming for MVP this tournament, so I need to step it up.
MVP of the Got to tournament. respect when Bhai respect move is that due. forward, bhai. When we're on the server, only 5 gift if team will support win first match. Let's go Chetan bhai. 5 gift if DRX win the first map. Sabemos que a DRX é time muito forte e vai ser confronto bem difícil. 일단 이번 락인 대회에서 보여준 라우드는 홈그라운드여서 그런지 모르겠는데 일단은 정말 자신감이 넘치는 모습이었고 그리고 이제 뭐 소리 지를 때 यार ऐसा भी हो यार इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हो ऐसे किसी स्पोर्ट में और इंडिया में ही हो तेरा भाई जो चीखेगा ना तेरा भाई बोर्ड का ऐसा बड़ा सा स्पीकर लेके जाएंगे वहाँ पे नहीं हो रहा है क्या ऐसे क्या बकचोदी करें 그런 싸움에 저희가 주눅들지 않고 잘 이겨내면은 어렵지 않게 이길 수 있어요. दर्शन भाई कह रहे 500 गिफ्टेड DRX win 3-0 याद रखना है दर्शन भाई आजकल बहुत स्कैम हो रहा है वैलोरेंट में मेरे साथ हुआ है रेड बैग नहीं है रेड ड्रैग है ग्लैडियस Aqui está रेड Brasil. ड्रैग का जैसे एक पनौती Faz zoeira. बहुत कम है O Brasil está vivo, um solo brasileiro. ब्राजीलियन सोल ये थैंक यू फॉर $5 पनौती एक डाल सकते हैं इमोजी Let's have some fun. हेलो पूर क्या हाल लाल बस अंकिता क्या बोल रहे हो तुम कैसे बोल रहे हो शर्म आ रही है म्यूजिक बनाते क्या तुमने ऐसे क्यों बोला शर्म आ रही है तुम्हें करूं मैसेज अभी अरे कपड़े देख लो कपड़े अच्छे हैं कपड़े तो कोई भी पहन सकता है हाँ अभी कर रहा हूँ मैं सिम इंसान थोड़ी देख रही हूँ बेचारा एक जना मेहनत कर रहा है वहां पे 24 घंटे मतलब स्क्रीन के सामने ताकि हम उसे स्क्रीन पे ऐसे देख सके तुम यहाँ दूसरी टीम के कोच को कर लो अरे यही सिखाया मैंने इंस्पो देख रही हूँ समझ रहे हो यही सिखाया यही दोस्ती में सिखाया मैंने तुम्हें आउटफिट इंस्पो Doesn't rip its head off at the end of this. I mean, they've collected a new stuffed animal every match they have won since जीजू के लिए champions. बुरा This team लगा is गाइस still देख रहे undefeated since हो then. ये लड़के हमेशा ऐसे पछताते हैं I'm a little worried that it's going to turn into a post-match celebration. And speaking of, let's dive straight into map select. We're waiting on those vetoes first before we get into the 5 maps that we'll see played. If I may very quickly, this is the only time I'll do this. If I do it again, you guys can slap me on the wrist, whatever. I hate to be the guy who makes a joke about loud, playing in front of a loud crowd, but they're so freaking loud. I have to ask them to turn my headphones up. It's deafening in here. Yeah, the game has not even started yet, but for both these teams, first best of
5 in the tournament. They both head back to their permas. And the भाई माँ को बहुत मारने वाला है भाई माँ को बहुत मारेगा मैं बता रहा हूँ बहुत भरेगा वो copyright music आन दो यार अब क्या कर सकते हैं आ गया तो yeah so no surprise that Pearl comes in for them while they will have to recover from that narrow loss to NRG just a bit ago. Now for the side of DRX, we kind of talked about how they've already had to show 5 maps. So I'm mostly curious about what they feel. अरे मैं ये कह रहा हूँ जो crowd को देख के कह रहा हूँ मैं इतना सारा crowd goes back to that question, have they innovated some new strategies over that map, or is it going to be more of the same? A big thing for me, though, that I'm excited to see is that split. IPL cameraman supremacy. Historically, if you go back in time, this was their most dominant map in history back during the first season of VCT. That it has been, but it's also one. Guys, आवाज सही है 40% कर दूं बहुत है ना आवाज ओके ओके तो W हो जाए chat में. Feeling prepared. We end with Fracture and Ascent, and this map pool is really interesting to me because Loud in the first 4 maps get to play all 3 of the maps that they've already played, that they've already shown. Yeah, I was about to say, Doug, we've got the guarantee, right, of Pearl Icebox. By crowd to hai. We make it to Fracture and Ascent. Do you feel like now seeing the maps fall in, and as we dive into the Prime Gaming Agent Select, that will actually get to that 4th and 5th map? I think हाँ ज़्यादा crowd है बहुत मगर इनके महंगे headphones होंगे यार. To be honest, and I think it's because of what you mentioned. Oh, DRX might be making a change here. RB has picked Dipesh, thank you for the responsor. Okay. They are trying to cook something up here. Previously, they were just playing off these executes with Buzz, with tons of initiator utility, with the Sova. Now they've made a change. It's clear that that time since the alpha bracket has brought Hey, babes. And this is going to give us a mirror match on either side. So it's all going to come down to who has the better strategies and who is going to be able to pilot this composition to success. Ash 1505, thank you for the responsor. Welcome back, Treasure. Thank you for the 100 channel for 10 gifted total initiator kills in map 1. Total initiator kills in map 1. Overall, for both Prajwal, both team. क्या लिया इन्होंने? कितने player लिए ये तो देखी नहीं मैंने. Yes, the battle of wills, the battle of titans between DRX and Loud here. And it is that Americas versus Pacific rivalry that stretches even further right here, right now. And Josh, Vindication, Revenge, there's so many labels you can attach to this. But it is Let's go DRX! that we witnessed from champs of last year. And at Champions, you heard some of the same stories from the desk. DRX are probably the favorites. Loud are the underdogs coming into it. Who came out on top? Loud in a commanding 2-0 that embarrassed DRX. By final verdict दे दो. Initiator कितने? Brings his team Loud. I am DRX. दो ही है ना. तो total kills दोनों की मिला के first map में. First map में दोनों की मिला के first map में दोनों की मिला के 35 kills. 35 kills. Loud an opportunity for them to get one step closer. Let's go DRX. Trophy, something that nobody has ever done in VCT history. आगे जा. Approach, you're seeing it. भाई अंधा है क्या lovely. Play it up draft and he's shut down. Sadak was aware of it. कोई दिक्कत नहीं 45 करेंगे. To try and help him take Loud जीतेगा बोला था ना. भाई DRX जीतेगा मैं बता रहा हूँ. अबे मेरा यार ये आसपास बहुत. अबे क्या comeback? ये क्या है? Backstab. And Zest is going to have his work cut out for him right now, being swamped and swarmed. There's 4 players now waiting to match and flash. That's a connection. Oh, nice shot. Doing a decent amount of chip damage there, decaying down, making it ever so slightly easy still. Holding it down, and Zest is dealt with. All down to RB and Mako. The reposition is there, but it's not planted for them, and they still have to deal with Sadak from the high ground. Walls on walls, obfuscating this one. The tap onto the nice. Running forward. John, baby! Clean it up. अबे अभी खत्म नहीं हुआ ठीक है. मेरे को refresh करना पड़ेगा. Been so good on pistols. All of these top 4 teams have though. We truly do have the creme de la creme playing in the semifinals. भाई एक round हुआ है बज रहा है. Loud have been so impressive. एक round में बज रहा है. Focus super heavily. We have some secret guests coming today. And you can see that actually, even though DRX have adjusted their composition to play a mirror match in this game, still those B post plants causing a problem for DRX. It ruined them in the game against Cloud9 and led to a massive failure on Pearl. It's one thing being able to just pick the comp, it's another thing entirely to match up against the team that started doing it here on Pearl. And Loud strike early with another first death onto Buzz. Not one that he could have particularly avoided though. Not quite, still being beamed down. And भाई मियामी बना दे इन्होंने तो.
Throughout their run at locking and that Alpha Wow, bracket, quite fiery, passionate plays, sometimes a bit of overheating, I won't lie. Marco! You can see excitement going, gets the blood pumping, but this week to prepare for this on either side. $5. अभी आ रहा है मेरा? और बढ़ाओ एक सेकंड मैं डिवाइस चेंज करता हूँ. नहीं आ रहा तन में. Ready for it and building up towards the Seekers too. Could be a big ultimate, especially when Loud are going to be playing Ruchir most of the time. Match देखने. Playing in those मत कर. back positions, anchoring the site. Ruchir. Has been a weakness on the defensive side. Felt like आ रहा है लेकिन कम आ रहा है. वहाँ इनपुट से वो बढ़ा ना. Discord के सेटिंग्स से. How are you Tanmay sir? How doings? Never mind guys. इनपुट डिवाइस आपके समझ गया. हाँ. वैसे तन्मय भाई आप शादी को क्यों नहीं है? मैं नहीं, ऑडियंस पूछ रहा. क्या सुनाई नहीं दे रहा है मेरे? क्या? There's going to be a lot of importance placed on this one. Loud obviously. नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा. So the weaponry is a bit weaker. Flash play through the wall. Trying to take the fight zest. Holding it down. Will not be able to claim the second though. मेरे को आ रहा है. आपको आ रहा है मेरा? हाँ मेरे को तो आ रहा है, सबका क्लियर आ रहा है एकदम. DRX या लाउड जल्दी बताओ. लाउड. यार 2 DRX 2 लाउड, 2 DRX 2 लाउड. लेट्स गो. या अभी अपने को वो 3 DRX 2 लाउड भाई ऐसी चीज है. 2 लाउड. Alex looking worried about mid actually. He could have been compromised in the moment still. Cove's going to go down. Should offer that safe plan for Stacks. And you can see there was a nanoswarm that was laid down earlier. Just trying to predict where the plan location might be to push them back. But to see if DRX can hold on now. These post plants were ruinous for DRX. It's a 4v4 with 500 Look how far back some of their players are always positioned. Stacks and Mako cannot help these guys on site. So far back, and now that that wall goes up, it's going to make it ever so slightly. Claims the one, an instant trade. Players are weak though. RB still active, still around, and he's going to be that final layer to this fight right now. And what timing can he take? No one clearing horse through. Anybody going to be watching this? Though buys them a bit of time. RB. Time chips down. हाँ भाई क्या बोल रहा था भाई? हैं? क्या बोल रहा था? हाँ बज रहा था. क्या बोल रहा था? बज रहा था ना 2 राउंड में? भाई फ्री राउंड था यार. That's a big one. And I think Loud have got some learning moments from that round for sure. They round looked at the box clearly at DRX, and they know that a lot of people are going to be playing off-site. DRX's post plans would be, they have a couple of players pillar, a couple of players all the way back towards the ult orb. They like to play off the site. And Loud assumed too much there based on looking at the VODs and didn't actually clear the site. Sadak ran forwards into the break. And RB was never cleared, never noticed in fact. They were just happy to wall it off, I think. So as Loud go into their B post plants, their B retakes, they're going to have to put a bit more attention and not just assume everyone's playing for those spam angles. The Cascade pushing back that one angle. There was a flash as well prior. Buys them that kind of space that they were looking for there. And an alarm bot, so really just making sure they layer down that utility, making it quite difficult. Stacks gets his ult online here, and this is a good one for pushing B. ये कुत्ता करते तो पिछवाड़ा दिखा के क्यों करते पूरा? But it seems to me like they're going to be running into ASUS here. पता नहीं, लेकिन वो कुत्ते को भी मूवमेंट पता क्या रहता है? Left right way. The difference maker, operator in his hands. यार ये आसपास बहुत बीटी है यार. ये हार्ड स्कोपर एक तो लॉन्ग लगा के बैठा है भाई. वो लेवल पे तो करने दे. भाई ऐसे कौन हार्ड स्कोप करता है? ये देखियो हार्ड स्कोपर भाई. अबे तो क्विक जूम थोड़ी देगा प्रो है करके. अब मरेगा. भाग. अच्छे माजा. An easy one-handed to ASUS. कोई दिक्कत नहीं 4v5 है. आ गया. We'll see how they play this retake though now. Once more post plan positions, the back of halls. Be held by there from the Phantoms. Reload, top up the clips once more. Still a couple of bullets left waiting. Snake bite though. That's the supplemented. Being squeezed and the timing just not good. Hello. अरे झकास आ रहा है. Hello, कैसे हो? Myself. अरे मैं मस्त. What is that from Stacks? Hello sir, nice to meet you. Myself Mechanical Pandey. And still comes out on top. These DRX players that are in passive position. हाँ भाई कोई बज रहा था. For example, in this round. हाँ मैं देखता हूँ डबल क्लिक करके खोल भी लेता हूँ कभी-कभी. Being supporting Loud just to flush out the people from backside.
हाँ भाई बिंग्स बज रहे थे हेलो आवाज नहीं आ रही हेलो हाँ आवाज नहीं आ रहा भाई आवाज नहीं आ रहा भाई क्या बिजी है आप गेम देखो हम बहुत देख चुके हैं When you look at how RB's position in backside there with stacks, they're isolated, they're on an island. देख रहे हो आसपास को एक किल निकाली पूरा टीम को बेट किया और ऑफ बचा रहा है नहीं मैं तो आई एम यंग आई एम जस्ट 22 separate fights where they're favored in both on the retake and yet they cannot coordinate it properly. These DRX players are holding on so strongly. DRX भाई हार्ट स्कोप फिर कर रहा है भाई कैसा प्लेयर है मां कसम Speaking to Fraud about it, he said, you know, listen, we got some young guys on this team. Sometimes that kind of passion, it bleeds into moments like that where they just have a little bit of a misstep. They don't play like they have been in practice. भाई हर बार बी हिट कर रहे हैं बे It can be a double-edged sword. Bait you into being greedy and going for more perhaps, or of course the sound itself. यार अपन ये किसका मैप है अपना मैप है किसका है भाई अपना है भाई DRX जीतेगी ये देख लो हार्बर एक ही मैप पे हार्बर और वाइपर दोनों खेलता तो एकदम समझ में नहीं आता क्या हो रहा है वॉल ना मयूर जी थैंक यू अरे नहीं हो रहा है क्या Goodness, the movement. And there's no punish inside. अरे whip नहीं rifle in a couple of the hands of them, but RB still locking down the angle, still good. मेरे सबसे पहले आप 3 सेकंड की डिले पे हां तन्मय भाई रिफ्रेश कर लो हां even with pistols in hand रिफ्रेश कर लो रिफ्रेश ट्विच रिफ्रेश कर लो अच्छा ट्विच पे देख रहे हैं तुम dodges मूवमेंट्स हुआ है ट्विच पे ऐड का सीन नहीं है तन्मय भाई को अपने शो पे बुलाएंगे भाई बुलाएंगे तन्मय भाई को जरूर बुलाएंगे तन्मय भाई मेरे व्हाट्सएप का हाँ जी ट्विच पे तो ऐड आता है ना वो प्राइम है प्राइम गिफ्ट किया आधा सेकंड आगे मुझे तो नहीं आता कुछ मैंने गिफ्ट किया हुआ है ट्विच पे भाई पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है आज बिंग्स मेरे को सुपर चैट आया रस्की आइजनबर्ग जॉर्ड है And all of this with Buzz having 4 first deaths. वो मेरा सिम कैरेक्टर है जी You know they're certainly getting the openings, but they aren't. Sorry, 3 first deaths. But they're certainly getting the openings. Actually मैं कोई भी कंटेंट फ्री में नहीं देखता तो मैं जैसे भी सबको ऐसे सब किया हुआ है ट्विच पे on the opposite side of this look like they've been in this spot before. And wow, what a difference दोनों चैनल के the DRX of old, where we would see them at this point in the game. And you just knew in your bones the crumble was coming. No more. भाई फर्स्ट मेंबर था मैं तुम्हारे चैनल का मेंबर फर्स्ट टॉप 10 में tested it defies many of these global events now and this most recently in these months making sure that they don't finish in that 5th to 6th place that was cursed time and time again. This time they're for grander sights in this match. Opportunity, a chance to really carve their name out in VCT history and potentially claim that trophy. Obviously, still one more match before that. You might be getting ahead of ourselves as this is the beginning of the series. A flash play. अरे अभी बहुत इंटेंस मैच चल रहा है इंटेंस अंकिता इंटेंस नहीं इजी है लाउड जीतने वाला इंटेंस कुछ भाई 3-2 है और बचना बंद करो अभी पिछला राउंड ही आ रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा भाई with ASUS this pushed up taking a peek doesn't have the dash active. This is such a risky play. It could be anyone meeting him. It's good info. भाई ये क्या कंट्रोल है भाई आसपास को तेरे आसपास को ये from such ये जोक पे मार दिया position from RB. Looking for some sort of indication that they could be pushed deep and ASUS well he has to respect that. He does भाई फिर भी आ रहे भाई time to strike now for DRX. होता है भाई अबे इसकी अभी तो अल्ट आई थी Up close, dash has to be used at this engage from ASUS. Still, the second layer of util is there. Snake bite, flash, and pushing forward. Ball's going to be gained. And now there's their counterplay. Seekers and their own reckoning. Bye. 2 kill. Oh my God. खुद भी मर गया बेचारा. Down to his own snake bite. Lockdown going to be used close. Someone has to break this. No one's on the spike. It's getting a bit panicky. अरे detain होएगा तो. Where are the protocols? Where is the play being made? 2 detained leaves it down to a 2v2 here. And suddenly DRX might have saved themselves. It's looking dangerous. Time running low. Hard to tell when the crowd is cheering and chanting. It's a maelstrom of emotion right now up top, up close. अरे यार राका भाई आवाज आ रहा है हेलो भाई ये क्या था भाई पुश करना था ना इसे कहते हैं प्रो गेम्स अखिल थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सर भाई पुश क्यों नहीं किया
But there's a couple of important things to point out there. First of all, huge amount of ultimates being used Guys! around. And starting पुश कैसे नहीं किया उसने भाई अल्टी में 2 बंदे डिटेन हो गए हैं और साइड पे देखना कहां तक लगा हुआ है That's absurd, and it's not just because he's been getting भाई पुश करना था भाई 4 जिंदा थे 2 तो डिटेन थे 2v2 था ना तो 2 को मार देते वहां पे और कंट्रोल भी ले लेते thank you the responsor the second layer to that too long का plan actually found those picks beforehand and they're going aggressive भाई आसपास का एम तो है There was a slightly delayed with it. Fantastic opening for ASUS, going to be waiting back. Doesn't even 2v4 था अबे तो 2 डिटेन हो गए तो 2v2 हुआ ना in good time. And he's certainly getting the better end of Buzz. It looks like Team Nerf. मैं DRX Buzz is the one that's out of sync with the rest of his team on DRX. नहीं मैं लाउड हूँ Going down as the first pick मतलब actually in the मैं prior लाउड round. नहीं बिंग्स तो लोड़ा है मैं समझ गया था भाई But now 4 players. मैं समझ गया था मैं लाउड टीम को सपोर्ट मैं पहले बता रहा हूँ अगर आप कुछ फाइनेंशियल कर रहे हैं तो मैं भाई मौका बहुत मारने वाला है मैं बता रहा हूँ आज माको सॉरी बहुत मारेगा माको A lot of space being given to DRX in mid. मनोज थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सर नेक्स्ट मेंबर ट्रिप डिसाइड कर रहे हैं ब्रो ब्राजील ही सोच रहे हैं अरे नहीं हो रहा क्या वो टैक्टिकल था टैक्टिकल Trailblazer on the back now, the pressure and player is known onto Salah. ओ भाई टाइमिंग हो गई there just to escape into flowers. He has moved away still. Nana Swamp. Push them back. देखा मैं क्या बोला माको मारेगा बहुत गंदा लड़का है Fantastic slow round here from DRX. 3v3 है. Cowan seemed to respond though, and that puts things down into a 3v3. And they're being met for it. Stax had no idea that ASUS was on the flank. Oh, but ASUS is alone. Only the knives to work with. There's going to be that cascade in his face. Where's the rest of the team? Sadak moves his way across. Great flash timing off. भाई लोग का blind क्या रहता है ना dodge भी नहीं कर पाते. Swarm's buying the time. A tap of it forces the fight, forces a peek. Jet आगे defuse करेगा. But it is still running. हो गया क्या? On top of it, having a defuse Half all कर लिया down to उसने. Stax. Smoked off. अबे left. या ओ कर दिया ये Consolation prize towards the end for Stax there as he picks up. पांडे जी आप किसको कर रहे हो support? But Loud has what matters. A 4th round on the board. दोनों एक जैसे समझ गया मैं. हाँ समझ गया Really nice to समझ गया. आप VALORANT को pressure. समझ. The threat that he could be there. Stop the DRX players from being able to focus their full attention forwards. The economy has been kept. अरे पांडे जी बोलने पे नहीं जाते DRX भूत भरेगा देखना अभी And less does the fast majority of the trading for Loud on this map. भागी देखा केजे See the round getting played out. जब हार्बर रिलीज हुआ मेरे को लगा नहीं था कि प्रो प्ले में इतना यूज होगा. He's one away from his डबल कंट्रोलर अभी नया मेटा है. डबल कंट्रोलर डबल इनिशिएटर. Funneling those ult orbs into him. The plan. किसी को नया एजेंट के बारे में कुछ पता है क्या? Build and prioritize that ultimate. Gecko नाम है. And I think also Stax could start using these in the post plan to stop the retake happening. तेरे को मिल गया क्या? बिंग तेरे को मिल गया क्या? Around the map there in 7 and even in prior rounds too. रुक जा निकाल रहा हूं बिंग्स निकाल रहा हूं रुक जा हाँ बोल Time to strike is nigh. राका भाई याद रखना शादी हो गई है. Leicester has to try and stop this now. आपकी भी हो गई ऐसे यार करते सूट नहीं करती आपको. They know he's into the side. He's cut this one up for them, but भाई ये जिंदा कैसे है? Swarms in their feet. Another snake bite placed down, but Stax with full distance. भाई इसका एक और अल्टी आ गया. Way through onto the side. Post plan Viper's pit going to be. अबे 4v3 है मेरा कद्दू रीटेक करेंगे. नहीं ये सीधा एक को है भाई हार्बर का भी अल्टा है. Abilities whatsoever. They just walk inside. It has to be a miracle. माको को स्कूल से छुट्टी मिलता है क्या ऐसा खेलने को? Kill claim with 30 up remaining, and now the ults are flying through. Stax ओए देख लिया. And positioning is known. No one can stand still. Oh my God! गया. And niकाला. Loud there too. क्या था ये? भाई वो अल्टी में कैसे मार दिए दो बंदे? And they know that forces Stax to spam it. And they're essentially kind of trading the cove there. As Stax Bro, ult में कैसे दो मर गए? Swings. आप रात भर grind कर रहे हो. Just a couple of moments that have gone wrong for them. I think the But- game plan is actually perfect for DRX, to be honest. They're farming ult orbs correctly. They're getting into good post plant situations. ऐसा क्या सवाल पूछ रहा है I mean, बिंग? in that round,
They खेल रहे हैं ना have Valo. a 4v3, I think, देखता with a रहता हूँ down and a online. reckoning हाँ to वैलो play का भी with. ग्राइंड चालू है. Everything should be Kabhi. favored towards them. Sorry. And yet Loud's skill and confidence to just get up inside the Viper ult. And the way that DRX are dropping off मेरे sides को लगा ही था seems वैसे to be तन्मय all भाई के favouring दोस्त लोग Loud. का शादी You वादी हो can't गया है give them तो that much समझ रहे हो? space. ये पिछली शादी के बाद ये ज्यादा बेशरम हो गया ना? हाँ हाँ हो गया वो तो. ना? अभी तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता. ऐसे. Winner getting to move on, move up through that tournament to that final. ट्रेनिंग चल रही है इसकी, अभी ट्रेनिंग की जरूरत है इसे. Lift an even grander and इनकी greater सच बता, ये ब्लॉग करा था इसलिए तूने हाँ बोला ना प्रपोजल के टाइम. ब्लॉग? अरे ब्लॉग के लिए शिट यार ऐसे मतलब माइक पे नहीं बोलना था. That's why it's about redemption here as well as Ram Rohan. And I'm currently looking at Buzz, who played pretty poorly when they ended up choking at champs. He's currently 2-7. कोई दिक्कत नहीं, अभी जेट की अल्टी है. जेट भाई जेट ड्रॉप नहीं कर रहा. ओ तन्मय भाई. That's quite spectacular. क्या हो गया? Expect Buzz. मैं सुना आप प्रपोजल के व्लॉग और फिर वीडियो और फिर रिएक्शन तीनों चीज करोगे. That needs to adjust his tempo. हाँ बोलने के तेरे को तो मालूम है हाँ बोलने के लिए करना पड़ता है ये सब. Dog going to be used now, pushing through, getting a bit of space there into Art, making sure that nobody was ever so slightly close, but Battle of Panoti. the defensive setup of Loud, they've got ASUS holding that one deep angle on the A main choke with the operator, so that's going to be giving them constant peace of mind. This round is everything for DRX. One away from getting ecoed and sinking to a terrible बीपे क्या है, बीपे स्काई है ना, और ये ऊपर बाय बीपे रोटेशन आ गया वाइपर का भी. Pump a little bit of the util there into Art, but they don't break that वाइपर आ alarm. गया, हार्पर भी है, बाय The job. मिड खाली है. Yeah, really fully मिड there. हार्पर And देख it's रहा है. allowed less the peace of mind once more to rotate over here to help them out. Yeah, Reinforcements. Peace of mind is absolutely the correct term to use. Loud can commit Bye, so wow, much उसने players ult to कर दी. ये लोग सिर्फ बीट कर रहे हैं. as well off a tiny amount of utility, but the वो time is ult पे भी ticking. घुसे. The DRX have got to go in. फेल हो रहा है इनका. 30 सेकंड में कैसे वो लोग कुछ करेंगे. It could just be that spam. Cove down, exchange of fire, back and forth, back and forth. अरे with a plant spike भी on करना the है floor. बाबा. With 24 seconds left, this is looking like a bit of a disaster. Less is going to be the target that needs to go down, but the Seekers from Kawazine earned. Going to be expended, well used now. 13 seconds left. Zest catching Aspas. Oh, Time. अरे यार. Oh! The gravity of the situation really just laying itself down. And over this time, the spike was picked up. भाई सड़क गली में बैठा है चुपचाप. Yeah, that's Much it. thank you to वो two बोलते months. मैं भी यही साइड पे हूँ टैरेट देख लो. Sadak desperately trying to stay alive there, tucked into the corner. भाई But क्या that's all the खेलता है ना time लेकिन. pressure, and Brent, I think one of the mirror most रखा crucial भाई points of DRX the round का you तो picked up as it was happening. अरे होगा पांडे जी, मैं बता रहा हूँ देखो. How do you get According to the my spike down in pro this situation experience, when Les has the presence of जब mind to 11 होगा ना, and it covers the entire अगले हाफ जब स्विच होगा, तब देखना स्ट्रेट एक भी राउंड नहीं देगी लाउड को, सीधा searching for their इक्वल first प्लेन. spot in a grand final. चलो भाई, let's go. It's not an eco round actually. They सड़क still नहीं, managed to सादक pull है, a सड़क है buyout भाई, with आसपास सड़क. knives and scraps and odd ends. Yeah, really just clutching. भाई बस करेगा Bottom of कुछ. the barrel in terms of the बस purchases they're able करेगा. to make here, but we are चल बस. rapidly एंट्री approaching निकाल the ले end of मेरी this जान first के half. चूचे. It's a lockdown to ये पे use. कोई तान है लेकिन लास्टिक और Away रिजल्ट from the 100 side, Loud. It's going to be alerting them now. that भाई they know अल्टी this कितनी is going जल्दी to be नहीं आ रही. getting towards that B hit once more. Seekers. हर राउंड ऐसा लग रहा है कोई ना कोई through अल्ट the मार रहा side. है. No one going to be waiting for this one. भाई ये राउंड It's नहीं gonna आने be that चाहिए भाई. 5v5, and a lockdown is now going to be used on the opposing side. This is going to give so much space. Trailblazer instantly destroyed. RB, sole player left into the corner. Slight little cubby to play inside of, but he's alone. Needs to try and survive. Needs अरे to एक और मारता मेरी जान. just one kill will be it. Nice DRX. The rest of the team playing those 3v3. post plans. Operator angle. अरे यार Lay ये down at the हार्बर speed that अलग gives पन Tuyas होती the है. ability to start sticking भाई. this now. Where's the spam? Oh, Where's nice. the answer? It's util, but half on the board already. And the pressure is on. The Nice. pressure is mounting to spam. Anything can Oh! happen. अरे यार. टाइम है. He wins it out. हाफ Time कर taken दिया away. उसने. Will he have enough? It's down हो to जाएगा, milliseconds. हो जाएगा, हो Surely, जाएगा. surely he will do it. भाई क्या रिटेक्स करते हैं ये लोग. Commentator overtime काम करके hype बना रहा है. It's the same punish on DRX. When they leave too many players,
playing that long-range spam. Loud are gobbling them up. The aggression, the confidence to push forward, and this wall does so much. The high tide. भाई ये क्या शॉट मारा भाई इसने? भाई कुछ देख के सीख पा रहे हो कि नहीं? भाई तुम्हारे साथ 30 किल MVP था मैं Immortal lobby में. And almost disbelief. प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं हम, गेम प्ले का नहीं. अच्छा प्रेडिक्शन, अच्छा वो भाई मैं बता रहा हूँ ना, राउंड स्विच होगा तो प्लेन जीतेंगे. अच्छा अच्छा. माँ को बहुत मारेगा भाई, बहुत. क्यों क्या किया उसने माँ ने? Need to be set up well for it, and if there's even the slightest amount that's out of sync. राका भाई माँ को मारेगा. Cause what we're seeing right now. अरे माँ को बहुत, अरे माँ को नाम है ना उसका. Has to back away actually, but still not clearing the alarm box. The alarm box is not going down. Zest was previously playing Sova on this map, and it was his job to deal with the utility. It feels like with this compositional adjustment, दो और फिर मेरे को लगता नहीं है वापस कर पाऊंगा ये चीज में. हाँ दो बार तो चलाना पड़ेगा. There is no one stepping up and wondering about where the killjoy utility. मतलब 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम में. चैट में लाफिंग इमोजी चल रहा है कि नहीं भाई? Buzz has to face it in order to get rid of it. Purpose is solved. Remaining. Weaker firepower on the side of DRX, but maybe they can make the most of this one. Flash around the corner, high ground angle, turret. It watches it. Starting to see them take that space still. Less भाई ये loud less अलग BT है. Lovely kill to 5. भाई 1 किल लोगे. राका भाई आवाज आ रहा है? भाई एक और राउंड था, क्या कह रहे हैं? जी भाई, any sort of plays here. 9-3 up. तो मैं हार्बर के पास एक और राउंड का था. अरे उसी के पास है. Seeing what they can do. Being swarmed and approached from every position. That was it. Spam down angle is common enough. Wall bang. GG. That'll clean it. Finalized. Loud win. DRX अभी भी. DRX जीतेगी. In the 10 days that DRX have had since they played their last match, ये ब्राजील में कोई भी स्पोर्ट बिना आवाज के देखना अलाउड ही नहीं है ना. वर्ल्ड कप के टाइम पे बुबुज़िला था, इस बार ये क्या है? But the execution is just not there. The firepower overwhelming. ये वाला ना? Everyone's got a plan क्या है until they उसके get हाथ में punched in the mouth. क्या है? And DRX look lost out there. अपना IPL में होता है ये. 5 है. Now it is on that final Best of 5 है guys, 3 भी नहीं. Best of 5 है. DRX hoping that they can scrape together around. The battle to be taking place here. Looks like all 5 members of DRX wading right into this one. Knives in the hand of ASUS. Dash going to be engaged. Spam flash. Trying to push through. The right click. No one's cleaning. ASUS. And they all fall down. भाई क्या? क्या ये मतलब क्या तूने सपोर्ट किया DRX को भाई? हेलो. Dominating. अबे वो so many words you could use वो to उठ के describe उनके this half, but it कंसोल is पे जाके loud चमाट in मार that के आएगा अभी driving नेक्स्ट. seat. क्या करेगा और? मैं खेलता है भाई आसपास. कंसिस्टेंटली बाप खेल रहा है मतलब पूरे इवेंट में. अरे स्क्रिप्टेड है पांचों मैप. And it was a 9-3 half the last time these two teams मुझे faced. लग नहीं रहा है कि अंकित वापस मिलेगा. And then threw it away. Do you believe in curses? Loud just looked too strong to let this as a drop. professional Sure, the Loud, same could have been you must said be enjoying if you're watching that game Yeah, of champs too. I am just loving it. Electric first half, but let's भाई down अभी to the desk to break it all Best down. of 5 है, 9-3 हुआ है. Curse activate हो गया. So it's a big. Thank you so much, Brett. No. It didn't take long for Loud to find their rhythm as they pushed the first half scoreline to 9-3. But Doug, actually start on the DRX side because we saw them make the composition pivot to match Loud. Yeah, and I think that it's been so much fun to. I nerd out about Harbor so hard, right? But it's been so much fun to watch how they're using their utility. But what's been most impressive to me is their heavy investment into the Reckoning, right? Everyone is trying to funnel those orbs through the orbs. चलो हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं. क्या लगा तुम लोग को? पिंकी क्या लगा? ये आपका? कोई नहीं तन्मय भाई भी इग्नोर हुए guys. It's not about getting millions subscribers and being famous. This is very much the same for the Reckoning, and for those early rounds, it was working out really well for them to be able to breach into this B site and get that plant down. And actually, in this replay, we see them pushing ASUS away. And I want to go next to Kilios. The Jet matchup that we have in this one, ASUS is in a rhythm right now. No, he absolutely is, and Buzz is completely out of it right now. He's trying to dance with 2 left feet. You can see 64 ACS. This is one of the weakest performances that I have we have ever seen from Buzz. He currently finds himself 2-11-2. That is brutal, whereas ASUS is completely. तेरे गेम में जो 2 डिजिट का दिखता है ना पांडे, इसके भी गेम में तो 2 ही डिजिट है.
अगर आप हर राउंड में 150 का डैमेज दोगे ना, मतलब एक बंदे को मारोगे तो आपका ACS 150 है वैसे। प्रज्वल थैंक यू फॉर द मेंबर वेलकम। भाई वो कितना चिल है ना भाई, टॉप फ्रैग करके ऐसे लेता है भाई, मैं भी कितना डाउन टू अर्थ मेरी तरह बिल्कुल। डैमेज का मतलब किल्स के ऊपर नहीं है डैमेज। पहला फर्स्ट ब्लड निकालेगा तो 150 है, उसके बाद 100 ऐसा कम होते आता है ना। और ACS मारा तो ज्यादा है 35 बोला था मैंने। Fashion in his form as well in the arena right now. मरने पे भी कम बस राका भाई ठीक है जी, मरेगा कम। A decent part, I can imagine. It doesn't matter how veteran you are. It doesn't matter how many global events you've been to. It doesn't quite prepare you for this. भाई W करेगा देखना आसपास। And the newer players on Loud are still putting on excellent performances too. You saw the results there for both of these teams on Pearl. DRX had one map on Pearl where they looked immaculate and one where they stomped Cloud9. Loud being shift walk कर रहा है, शर्म आ रही है इसे 9-3 में shift walk कर रहा है। Possibly bring this to OT though. It would require the pistol, I think. ये कैसे wall बनाई इसने? Much more besides. Yeah. Many rounds उसने बनाई है, मैं हूँ। Goal of this round going to be that A split pushing forward. Zest. भाई चूतर दिखा के खड़े हो भाई, क्या कर रहे हो ब्रदर? खत्म GG। Exchange stacks the will stay alive still. Eventually falling. Aspas is claiming so. GG। भाई वो चूतर दिखा के खड़े हैं भाई। अपने टीम में स्लॉट नहीं है, ठीक है? Bit of false information. Mako still. तो 11th राउंड पे बोलूंगा राका भाई को। अरे रुको 2v3। अच्छा 1v3 है। Turn around for him. And Mako, we've seen this guy pull off magic before. But 7 बुलेट में 3 बंदा कैसे मारेगा? जा। भाई इंस्टा लॉक जेट प्लेयर है क्या इनका बस? हेलो कपड़े पहन के नहीं आए। It's unreal. वहाँ पे गर्मी बहुत है। Long range with the frenzy, mid range, close range, doesn't matter. 4 health, whatever. This guy gets it done, and he's a big game player. That's what's incredible. 4 health में 3। That time on Loud has taken him भाई from उसने being 4 a HP में 3 मारे पता है? quickly. It's been Aspas who's the one who has to really step up. It's been said in a couple of the interviews as well. Guys, मैं dinner के लिए क्या खाऊं? When Loud went on that dominant run, when they won the championship आप title अभी last डाइटिंग पे हो year, या? like you said, Josh, नहीं आज he कार्ब was खा रहा हूँ मैं। a bit green to it. Obviously, many तंदूरी हो belts, जाए। many titles under his belt, or at least a competition. But he's had to really step up for his team. Very nice. Yeah, and listening to Sadak as well after they completed the alpha bracket, he said that he gave big credit to Aspas, and he said Aspas is talking a lot during the games. Very delicious. He's giving him a lot of ideas for what to do in terms of the calling. So he's not just there fragging. He's offering a lot more to this Loud squad. And stepping up now that he is one of the veteran presidents. भाई ये बस कुछ करेगा, इंस्टा लॉक जेट करके कुछ कर रहा है ये? Of this young player. Just show भाई आपके सपोर्ट की वजह से हो रहा है, just saying। 2 किल है उसके। वाह भाई पीछे से चप्पल पड़ गई उसको। Yeah, Loud, ready and waiting. A couple of them playing anti, making sure that they weren't falling prey to any of that. And DRX not even offered that luxury of trying to die to the spike to deny those ults. Loud are going to be vacuuming it all up. This is चलो यहाँ से कमबैक है, यहाँ से कमबैक है पांडे भाई। अब देखो यहाँ से कमबैक है। Let's go. चलो ये कमबैक है, ये कमबैक दिख लो। इंडियन गेमिंग शो में मिले थे बैक से याद है क्या? थोड़ा राइट चेंज करके पांडे भाई आपने। Pacific region as फील्ड well. में आ रहा हूँ मैं भी थोड़ा ऐसे राका भाई के लिए। Only representatives left in the tournament. DRX कमबैक बेटे, कमबैक। देखो ये कमबैक They get देखो। a spot for their team अब बस at देखते Masters जाओ Tokyo. Sorry, a spot for their region at Masters Tokyo. They're fighting for the Pacific. For the region as a whole. Lovely util laid down here by DRX, but again just maneuvering away around it and into pincer. भाई ये लोग का स्टैट बहुत अच्छा है भाई। भाई उनका केजे चूतड़ पे ही खा रहा है हर बार गोली। DRX, they cannot withstand it. Aspas still alive, 5 bullets. And backup is there. Down to Buzz and Zest. Smokes off one of the angles, but the crossfire is too potent, too powerful. Guys, likes and NHK. Guys, अगर आप enjoy कर रहे हैं तो
5 के legs. ASUS at 22 kills. कोई दिक्कत नहीं यार. Best of 5 है. If you wanted a jet diff, if you had that on your bingo card, oh my God, you've gone and got it. This guy's on a different level right now, and that has got to be tough for Buzz to comprehend. Heading into Icebox, I got भाई आस-पास ही मार रहा है भाई, क्या मार रहा है यार वो. पार्टी बदल लो. दिल से आवाज आ रही है. Going the other way for DRX to have a chance in this. ASUS with a double updraft. Yeah, but nobody giving him a look. The final boss made manifest. Let's see what he does with this. Dash enabled. Nice. Slightly missing. There was a flash delay. And there are trades online still, 3 on 3. And all the pressure, the gravity of it all on the shoulders of DRX. Lovely utility to clean this one out. It's down to भाई ये भी हार गया ना, मेरा हो गया आज का. Is that 1v3? Oh भाई. So much to do, yet already he's made it one step easier. Kill found, jump peek. Knows nobody's on it. Waiting for the push, but a double swing. Challenge 2 for 20 gifted. Winner of map 2 with winning team total kill assist. And it says a lot. Winner of map 2 with winning teams. Nice one, Raka. Good round there. He's been their best performing player so far. Winner of map 2 with winning teams total kills and assists. So consistent for this squad. Total he kills. takes a ton of fights. He wins a lot of them. He's the biggest trader that Loud has. He's just always out there doing what his team needs. By 70 kills. That is the first of 9 map round में 70 kills. The DRX need to dodge तीसरा kill था ये हमारे बस भाई का. It just seems impossible. यार ये तो exact बताना है क्या? What's stacked against them here? Assist कैसे बताऊँ? Assist नहीं बता सकते. Anubhav, thank you for the responsor. But we know the DRX are not the team anymore to crumble, to fold under the pressure. 35 बोले थे ना, अभी कितने किलो है? 11 और 26 किलो. We've seen it now a couple of times over 2 different tournaments when the pressure's on and they still have what it takes to come back. Maybe not in the map, but in the series overall. भाई बस 3 किल पे है यार, बताओ. A bit more long term. Definitely. भाई ये ऐसे घूमेगा पूरी साइड पे तो 3 किल पे ही होगा. I think another thing that we're just seeing demonstrated here is that the Americas region is clearly the best on Pearl. We haven't seen an Americas team lose on Pearl, except for when NRG beat Loud, and that's 2 Americas teams fighting against each other. Something about this Americas region, they've just got the lead here. It doesn't matter what comp is being played, they get this map. Seekers parting ways on either side now. Trying to lay claim to this side. A dash forwards. Nice! Reset and backs away. Dash still in his hands now. He's got another one online, but ASUS has claimed some space. Nice! It is just down to him, but he will comeback हो रहा है, comeback हो रहा है. Beast in the making. And so one of Raka bhai, एक round eco करके 5 ulti एक साथ दबा दिया है ना मैंने. Try and even it up, but ठीक है. No room. 5 ulti कैसे यार? भाई ये round भी अपना ही है क्योंकि 3 ulti हैं. DRX are going to start to build themselves up a bit in terms of the economy. Obviously not something that they can, use when they lose a round because they're 1 and done right now. But as the rounds get closer, let's go, good round. They're down to, a scrappy 1v1. Come on, 12, 3, 12, 13 crore. 12, important things, big ults to rely on too. If you're going to go through this long, arduous journey of getting us back to OT, you've got to be so disciplined with how you use those resources. It could all go wrong in just a moment. Mako, dogs in his face, stunned there. It's Sadaku's turn. भाई इनका कीजिए क्या W कर रहे हैं? No worries whatsoever, and a squeeze into the connector. This could be it. RB is next, one after another, all down to Buzz, operator. Good luck, son. Would have to be the play of your career. Dash active, but the players are rapidly approaching his position. And they all tumble. 13-5, Loud claim map number 1. Let's go. Congrats, Bincy. Nah, easy prediction, nah? Easy यार. Loud is just in too good form. Yeah. और दूसरा मैच के लिए क्या बोलता है देखो? कल वाले के लिए? अरे अभी BO5 है. कल वाले के लिए मेरे को नावी. अरे अभी तो BO5 है. लग रहा है नावी जीतेगा. तब मैं BO5 है. अरे नावी क्या? बिग वॉच ही है. तन्मय भाई अरे क्राउड का हालत तो देख भाई. अरे ये लोग अभी यहाँ से हारेगा तो राइट हो जाएगा भाई वहाँ पे. फुल जोशीला क्राउड है. They're going to be heading to the only map in the first 4.
where Loud have not demonstrated that they can take a win just yet. So that is actually going to put the pressure on just slightly. क्या हार्ड स्कोप हर बार वे आप भी नहीं करोगे। अरे अगला मैप क्या है? आइस बॉक्स ना? आइस बॉक्स। Small change. Winning team total kills plus map players with least deaths. भाई लोग का म्यूजिक में क्या वाइब रहता है? कौस्तुभ, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सर। प्रज्वल भाई कह रहे हैं विनिंग टीम टोटल किल्स प्लस मैप्स प्लेयर विद लीस्ट डेथ। अच्छा, कौन सा मैप का प्लेयर होगा जो लीस्ट डेथ? इनका वाइपर कौन है? फ्रॉम द इनसाइड। लाउड का वाइपर कौन है? लाउड का वाइपर। तुम लोग क्या खाया रे डिनर के लिए? बिंग्स तू क्या खाया? हमने खाया आज पाव भाजी। राजू थैंक यू फॉर द 100। हल्का सा ये बनाया क्या? किसने बनाया? सेमी वेजिटेरियन मतलब आधा क्या खाया? अंकिता लेस है ना? हाँ लेस। हम लोग मैंने पालक पनीर एंड राइस खाया आज। अब भी एक्चुअली खा रही थी। पालक पनीर एंड राइस। यस। और राका तू क्या खाया? फ्राइड राइस। किसके साथ? वेज या नॉन वेज रखा भाई? वेज फ्राइड राइस विद ग्रेवी नहीं दाल के साथ थोड़ी सी। हैं? तो दाल तूने पूरा डाला या कम डाला दाल? तू फ्राइड राइस और दाल खाया? हाँ सुबह दाल बची थी ना तो फ्राइड राइस के साथ खाया। तू फ्राइड राइस और दाल खाया? सिंह थैंक यू फॉर द फॉर्ची। तो पक्का हार रही है भाई DRX के फैंस। बेचारा मजबूरी का शिकार हो गया। क्या है ये? पांडे तू क्या खाया? भाई मेरे यहाँ खिचड़ी बनी थी लेकिन पड़ोस वाली आंटी ने ना पाव भाजी भेज दिया था तो मेरा भी पाव भाजी हो गया थोड़ा। अरे वो गुजराती आंटी तो गुजराती में थोड़ा तो लेकिन क्वेश्चन ये ट्रेडिंग चलता रहता है। पड़ोस वाली आंटी ने भेजा क्यों इज द क्वेश्चन। ट्रेडिंग चलता रहता है। इट्स ओके। अरे मतलब बहुत क्या दाल ज्यादा नहीं। पिंक है उसमें बीच में चाय। हाँ ऐसा। भाई क्या महंगी चाय रही है यार हमारे एक सेकंड तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई। पड़ोस वाली आंटी का डिस्कशन कंप्लीट करना है। मेरे को भी चाहिए। रेगुलरली खाना भेजा करती है? नहीं हफ्ते होता है 3-4 दिन में। कब मेरे 3-4 दिन में तो आ जाएगा। हफ्ते हो रहे 3-4 दिन। जी एक मिनट हर 4 दिन तेरे को आंटी पाव भाजी भेजती है? यार एक क्वेश्चन है। नहीं खाना भेजती है अलग मतलब कुछ भी बना हो तो ऐसे। अच्छा इसके पहले क्या भेजा था? पांडे जी एक क्वेश्चन है आपसे। अगर वो मेरी लाइव स्ट्रीम देखे तो मेरे डेमोग्राफिक में क्या एज रेंज में आएगा उनका आईडी? उनका नहीं आए वो तो। पांडे एक और क्वेश्चन है। वो पाव भाजी भेज रही है तो तू क्या भेज रहा है? मैं तो खाता हूँ बस। मैं तो खाता रहता हूँ। अच्छा तू कुछ मेरी मम्मी कुछ बनाएगी तो वो दे देंगे वहां पे कुछ। पता नहीं बनता है कुछ तो इडली डोसा बन जाता है तो। हाँ जिस दिशा में ये आप ले जाना चाह रहे हैं ना मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा हूँ। कृपया हमें प्लीज थोड़ा क्यों आंटी स्ट्रीम देख रही है? आंटी का बेटा देखता है वो भी वैलो खेलता है और मेरी स्ट्रीम देखता है। अच्छा सॉरी राज आओ कहीं नहीं थी बका। राज कोई खोटो ना मान दो राज मेरे को भी भेजना पाव भाजी यार। Let's test your jinx skills. एक बार बोलो लाउड जीतेगा। अरे पिंकी तूने क्या कहा? तूने भी पाव भाजी खाया? लाउड जीतेगा। चलो लाउड जीतेगा। योगेश भाई ने बोला लाउड जीतेगा। क्यों अलग-अलग खा सकती है बिंग्स? हाँ नहीं खा सकते हैं वो तो खाते भी हम लोग बट नहीं। अभी राका से पूछो उसकी वाइफ ने फ्राइड राइस के साथ दाल वेजिटेरियन खाया हम लोग होगा। एक साथ खाते हैं नॉनवेज अलग-अलग ऐसा। राका तो ये दाल और फ्राइड राइस वाला। अरे एक्चुअली क्या हुआ तन्मय, हमने दिन में दाल रोटी बनाई थी ठीक है और चावल बनाए थे। तो अभी मॉम डैड दूसरे वाले घर पे हैं गए हुए हैं क्योंकि कल बैंगलोर जाना है मेरे को। आप भी आ रहे हो वैसे? तू मेन पॉइंट पे आना भाई। तू क्या है तेरा ट्रैवल शेड्यूल बता रहा है भाई। दाल राइस क्यों खाया? क्योंकि कल मेरे को बैंगलोर जाना है। अरे नहीं मैं काम चालू है और मॉम डैड गए बाहर। हाँ तो खाना ज्यादा बना दिया था ठीक है तो उसमें राइस बचे थे तो उस राइस को फ्राइड राइस बना दिया और वो ही दाल यूटिलाइज कर ली। अच्छा नहीं मेरा एक सवाल था। 29 challenge to find a player with least deaths. Total 75. It's a very big question. क्यों मतलब? फ्राइड राइस के साथ दाल अच्छा लगता है क्या? हाँ क्योंकि नहीं अच्छा नहीं लगता क्योंकि खाना वेस्ट ना हो ना फिर डस्टबिन में जाता वो फिर।
अच्छा खाना वेस्ट ना हो इसीलिए। यस। अच्छा इसने वो वाला कार्ड खेला, समझ रहे हो तुम? सोशल कॉज हो गया, आगे सोशल कॉज हो गया, वही जहाँ पे अपन कुछ आगे बोले तो समझ रहे हो? इससे अच्छा तो पांडे वाला भाई। हाँ पांडे अच्छा, सर आप then मैं बताओ what ना। did you eat यार? तुमने तो बताया नहीं। वो मैं अभी तो डिसाइड कर रहे हैं। मैं डिसाइड कर रहा था। मैं अभी मंगाया हूँ चिकन पाड़ थाई नूडल्स, जो मेरे को बोलने को बहुत मजा आता है। पाड़ थाई। हाँ क्या होता है पिंकी ये? खाती है पैड थाई नूडल्स, और उसके साथ मैंने फ्लैट मंगाया नूडल्स होता एडी मम्मी ट्रफल डम्पलिंग्स। है मम्मी। एडी क्या? मम्मी स्क्रैबल 20 पॉइंट स्कोर वाला खाना मंगाया भाई मैंने। पाड़ थाई नूडल्स और एडी मम्मी ट्रफल डम्पलिंग्स। तो ये जो एडी मम्मी जी है, ये कौन से एज ग्रुप में आती है? बिंग्स तू बस एक बार बोल के बता मेरे को, तू चिकन फाड़थाई नूडल्स और एडी मम्मी ट्रफल डम्पलिंग्स। भाई ये क्या मारा वो उसने? स्पेलिंग बताओ, फाड़थाई ये क्या नूडल्स एंड एडी मम्मी PAD कुछ तो डम्पलिंग्स। पैड थाई नूडल्स बोलते हो वैसे तो। पैड थाई? हाँ मैं एक्चुअली इसलिए मंगाया ना राका, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में वेस्ट हो जाता ना, तो मेरे को +1। करेक्ट 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 करेक्ट। ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है पहले से बना के रख रहे थी भाई? अंकिता तू पनीर खा रहे, तू छोड़ तू पालक पनीर और चावल खाई रहे, क्या है? अंकिता सीन ऐसा है कि वो डिश ने बना हुआ था, लेकिन उनसे इंग्रेडिएंट्स लाके रखा था ना, तो वो वेस्ट हो गया, समझ रहे हैं? दूर का सोचा कि दूर का। अच्छा अच्छा। गाइस लाइक कर रहे हो स्ट्रीम को, ऐसी बकचोदी और कहाँ मिलेगी? आज ही लाइक करिए, फ्री है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वो भी फ्री है। फ्राइड राइस के साथ दाल खाने वाले भी लोग हैं। बड़ा अंडरस्टैंड। उसी को तो बोला अच्छे लोग हैं, सोशल कॉज के लिए खा रहे हैं। पर राका एक बात बता, अगर रोटी और चिप्स बचा होता तो तू क्या करता? रोटी को चिप्स सब्जी बना के खाता, क्या करता तू? तो फिर आफ्टरनून में मैं क्या करता, उस रोटी को गरम करता, उस पे घी लगाता और कॉर्न्स लेता, कॉर्न्स को बॉईल करता और कॉर्न्स को रोटी के साथ रोल करके अंदर नमक मिर्च मसाला डाल के उसका मस्त रोल बनाता और चिप्स को एज अ स्नैक चाय के साथ खाता। चाय के अंदर डुबो के? ना डुबो के नहीं, साथ में ऐसे एक चाय के सिप और फिर एक चिप्स, एक चाय की सिप, एक चिप्स। अच्छा, कौन सा चिप्स रहता है तेरे घर पे? चिप्स वैसे मैं पसंद नहीं करता चिप्स। वैसे अगर मैं करूँ का तो सबसे मेरे को पसंद है वो कुरकुरे के येलो वाले आते हैं ना, एक येलो वाले कुरकुरे के येलो वाले, ट्विस्टी, वो मेरे फेवरेट हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, तो तू रोटी रहेगा घर पे तो तू पालक पनीर मंगा के नहीं खाएगा, तू उस कॉर्न को बॉईल करेगा, उसके ऊपर घी लगाएगा, उसको रोल करेगा। हाँ तो मैं खुद से कर सकता हूँ ना उसमें फटाक से। पालक पनीर भी खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं। पालक पनीर आएगा 45 मिनट्स में, ठंडा आएगा, फिर उसे गरम करो। लेकिन रोटी भी तो तू गरम कर रहा है, तो कौन भी तो बनाना है, कौन को बॉईल कर रहा है? अरे तो कितना टाइम लगता है कौन को बॉईल करने में? 10 मिनट्स में बन जाएगा डिश, वहाँ 45 मिनट्स वेट क्यों करूँगा? कौन तुम्हारे घर में भी है? हाँ है। कौन है? हाँ अच्छा। कौन रहता है? अच्छा, स्वीट कॉर्न। हाँ स्वीट कॉर्न। हाँ। पर तू चिप्स को वेस्ट नहीं होना देना करके तू कॉर्न एक्स्ट्रा बनाता है ताकि चिप्स वेस्ट ना हो। यस करेक्ट। वो उसको चिप्स सेपरेटली खाने हैं, चिप्स सेपरेटली लंच के बाद स्नैक में। हाँ चकना टाइप्स। समझ गया। For the rest of the series. Yeah, don't get me wrong. I love the swing, follow-up right? question But it was a miss, and I think you can acknowledge. क्यों? देखिए इसके भी एक और पॉइंट है, जैसे अगर मैं ये करूँगा तो मैं आईआरएल स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, तो उसकी जो डोनेशन आएगी वो अपने मैं होम लोन में लगा सकता हूँ। आईआरएल स्ट्रीम मतलब तो कॉर्न बॉईल करने वाला आईआरएल स्ट्रीम करेगा क्या? कुकिंग स्ट्रीम करूँगा उसको, तो क्या होगा उससे? हाँ कुकिंग स्ट्रीम मैंने बहुत बार किया है। तो इससे क्या होता है, देखिए आप पालक पनीर करोगे तो जेब से पैसे जाएंगे। एक बार तूने सच में कुकिंग स्ट्रीम किया है क्या? हाँ किया है बहुत बार। अरे ऑडियंस पकती है उसका मतलब वो कुकिंग स्ट्रीम नहीं है? नहीं, कुकिंग स्ट्रीम किया है मैंने, जिसमें मैंने खाना वाना बिरयानी भी बनवाई है और बनवाई है, प्लीज बनवाई है, फोकस ऑन द बनवाई है। अच्छा
कुकिंग कोई कर रहा है, ये सिर्फ स्ट्रीम कर रहा है। अच्छा 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 और ये आसपास को देखियो। ठीक, काफी आज आई फील क्लोजर टू यू राका टुडे। ये सेटअप हो गया, इसका चालू हो गया मैच। हाँ, पिक कर रहे ना। I want to see. I just want to see because I want like the idea of like a counterweight. You know, like. I mean, this is just two jets. Your comp picked against you. Their comp against them. The only अच्छा स्मॉल बस यही सीखना है मेरे को करियर में, ये चीज स्मॉल टॉक करना। हाँ, स्मॉल टॉक, ऑडियंस रिटेंशन जो है ना आपका रेट, वो ही सीखना है। क्या है प्रेडिक्शंस क्या है? I love that they're not changing. DRX भाई, obviously dude. 3-2 DRX। अभी तो तुम्हारे मैप पे याद रखना, बेइज्जती हो जाएगी अगर भाई अब बस इतना मारेगा ना, कसम से बोल रहा हूँ, बस बहुत मारेगा। एक काम करेगा, एक काम करेगा राका, अभी जरा जोमेटो या स्विगी खोल, ओके खोला, और अभी दाल और फ्राइड राइस मंगा, ठीक है? तो अभी तो डिनर कर लिया। हाँ मंगाया। अगर DRX हारा तो लाइव ऑन स्ट्रीम खाना पड़ेगा तेरे को। खाऊंगा पक्का, डन। और अगर DRX जीता तो तन्मय भाई आप मेरे को नरूलास का हॉट चोकोफाज खिलाओगे, ठीक है? नहीं तन्मय भाई यही चीज खाएंगे ना, दाल और फ्राइड राइस। ओ हाँ यार, करेक्ट तन्मय भाई खाएंगे, यस ठीक है, हो जाए एक चलो। काम करो, फिर तुम भी ऑर्डर कर लो। नहीं मैं ये चैलेंज मैं छोड़ चुका जब से शादी होगा ना। देखो ना 2 मिनट काय को मिल रहा है, मेरा रागा चल रहा है ना ये चैलेंज रागा को बस कंटेंट दे रहा हूं An unknown quantity. अच्छा मेरे को लगा कि मेरे को बोलेगा राका कि तुम कौन उबालो और फिर उसको रोटी में डालो। ना दाल forwards though, Loud not going to be dissuaded. चिप्स भी खाना पड़ेगा, Ball's going to be used, but they're going to be claiming space and planting up top. Anything to try and disrupt this one doesn't look likely. It's a different hurdle compared to what we're going to see from DRX on their attack side. Unless, he gets away with it there. Facing into 2 players, but not punished. Very good information, even just manages to strike a little bit of a blow there, and damage done. Exchange of the bullets, the weapon, or even a snake bite up close, Sadak. Oh, almost. My goodness. Marco. Comes out of that 1v1, but he will eventually fall. Now, how does the play get made? Skipping a hop, Zest almost granted an opportunity to claim. भाई ये क्या था भाई, ये क्या था Viv? विप कर दिया रे Zest ने। भाई Zest भाई वो क्या विप किया उसने? And they take the pistol. 2 E's with it. Another great wall there, actually, that stops people from being able to get deep. I am on You can see that Tuiz has put time into his harbor. We already knew that based on what we've seen from him on Pearl. What's poppin', guys? But here, looking comfortable too. I mean, आप कैसे आए इतने जल्दी? DRX dead on the wrong end of another pistol round. मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी और की. Great play from these guys on site too. I think there's a real temptation once the flank is given up to just give up sight and go and fight. Super heavy. कंटेंट खा लो, खा लेंगे भाई, डरते हैं ये। Really nice reaction from Sadak. क्या खाया डिनर में? यार अब भी जस्ट चाप खाया मैंने. मेरे पास आप मेरे पास सुन रहा था मैं आपका और आप. He did claim the all, that was his goal. खाने का सुन क्या है? They constantly have records एक गेम जब हम लोग थे तभी तो नहीं आए थे। This is one of the first times where Loud's aggression has actually challenged and punished him. The spike is alone on Sadak here. Okay, the Loud guys are starting to come. अरे finally bomb drop हो गया भाई. Dropped. There was a moment of danger, but I don't think DRX is going to be able to capitalize. ये क्या है? Still swinging wide. His classic classic से मार रहा है. Making quite sure work of things. Still, Mako ended up taking decent chunk of health away when he was trying to contest and fight that one. Now a close angle. Nice. The right click over the top. How does he duck and weave and dodge this one? He has 1v2 doable है. And RB now. He's the leading clutcher of the tournament, but Les is watching for it. Time away. अरे यार. Now will there be a double face? Not quite still. क्या हुआ? आप हार गए हो, हम जीत चुके हैं। Vamos! Loud as they head into that bonus round. We'll see what they choose to do with the economy. 3-1 है मेरा prediction है 3-1. Decision that they have to make here. But there might be some low-level investment that still works. DRX. As we've said, yeah. Same here, buddy. Same here. On Icebox at Lock. Loud have only been forced to show 3 maps up to this point, and they've been very clean. Only dropping that single overtime DRX, DRX,
DRX तुम देख रहे हो सोवो नहीं खेलते going to be able to invest fairly heavily into this, and they're trying to apply pressure over towards B, so using the cascade, and I think this makes a lot of sense with that cascade online. I don't think you need the Sova drone as much. Kawanzin can rely on the Sky, which he's been playing at this tournament alongside Breach. We haven't seen any Sova from him. It does relieve that necessity of having the drone, like we were discussing, you know, to push players, oppers off that angle. खेल तो रहा है. When they are just walled off like that. कहाँ खेल रहा है भाई Loud की टीम में? Approach here, you can see ASUS. उनकी टीम में कह रहा हूँ मैं Loud की टीम में. Flash now, but look, the reason why. B main control, slowly, steadily gained. Interesting turret, अपने account use Gets करोगे posted while the high tide is up. राका भाई देख रहे हो 4 फैंटम 1 वैंडल. It kind of controls the area, or at least gives you good information if people are going to swing through the ये wall क्या as to where they're information coming from. Defense में Phantom ही use होता है. They're moving up deep into position. Flash push forwards, Reckoning as well. Positioning node, and guess what? Laying claim to this one, less from the sidelines. The fuck? Just creating moment after moment for his team. 4 players left up for भाई क्या read करता है? They do not feel like they're dissuaded, despite the fact that they had the weaker weapons. Still, there is that answer. Zest, good kill to find. Left down to that 3v3 now. क्या वैभव किस लिए कह रहे हो? And this looks dangerous and very well planned out by Loud. Can the post plant hold on? It's not planted in a great spot. Dash forwards though, cuts up the angle, and that's Sadak out in the open. 2 years, Sheriff shot does find itself. Kawazin, he's got the rifle, but it's not quite planted for him. The angle, how about the defuse? Zest. Oh my God! Absolute insanity. क्या aim है भाई? Looking at Macula again. The bonus round strategy is so nice. The way that they take B control and then lurk less up, and that's the value from the Sky is the flash through the wall, getting deep and allowing for that post plant. Kawanzin looking deadly in the clutch, and Buzz has his chance, right? That's the moment where you want Buzz to step up, win around for his team, hold the momentum of Loud. दोपहर में बैठ के Falls again in a duel लंच करता हूँ तो that you would normally expect him to win. Love you. Updraft up top, that's to try and punish this. Aware that. But फाटू भाई तो 6 बजे से stream करते हैं. And Buzz gets it. That's उनकी दोपहर 6 बजे होती है. the difference maker. अच्छा 6 बजे lunch करते हैं. इसका नया game कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है ना इसलिए पुराने stream देखते हैं समझ रहे? Sadak, aware of this, knows that there's 2 players close, and space being gained. Buzz only to 1 before an instant answer back with this crossfire, despite the weaker guns, despite the pistols. भाई बस के पिछले गेम 3 किल थे. This one now. What is the call? ASUS kill claim. भाई ये मार के कैसे चला गया? Space still going to be vacuumed up. Oh my God. अरे यार. एक डैमेज नहीं दिया इसको. एक डैमेज. The way that ASUS is dash backwards. एक डैमेज. They don't look like a new team. These do not look like newer players. I know Sadak said that we're a new roster. You know, we have to prove ourselves. भाई आसपास ऊपर गया. भाई कैसे नहीं एक डैमेज नहीं दिया उसको. Of the newer players, Kawanzin and Tui's, they have been integrated so well into this squad. राका भाई order. The fundamentals look to me just as good as they did with the old Loud squad. And maybe that means Tui's doesn't quite get as active in the round as somebody like Rakara or Mako, but that doesn't really make too much difference. So here we see it again, the cascade take B long control. Buzz, his confidence certainly hasn't waned after Pearl. And still, Seeker spots the target, Sadak moves forwards, where's the kill? Dash up top, kill still nice. found right as he's evacuating. Nice. And he needs to just cannot land that second shot. Oh. He'll have another chance though. Unrelenting. Please Mario That's what mat. it feels Please like Mario when mat. you're on the opposing side of this one. Mario Loud, mat. not willing to give anything up, and the spike was planted in the middle of all of that. ये वाला जीत लेगा. Let's now yeah, this is going to really start to put that time pressure on DRX. What can they do with this? Off angle is magical. अरे गया. 2v3. Buzz, what can you find? Zest in the pit. Gets the first obstacle down, but the angle's watched for. There's just too much to do, isn't it? Tap of the spike, doubles up, decaying all the way down. 1 kill from the Tracers, but time far too low to make the most of it. And Josh, this map, we were talking about it, the desk was talking about it. It needed for DRX to strike back to show that they had what it takes to really compete. And so far, it's not looking good for them.
I think it's a must-win. It's the first map in the series that DRX had a chance to pick, so it's up at the top of their pool as well. They've demonstrated how strong they are on Icebox against some of the other teams they've played. And also, once you get deeper, once you get to Split and Fracture, Loud have already showcased that they look incredibly scary there. If Loud can't get punished on a map they haven't even had to show so far, where can DRX even win? Where is the limit? That's the big question. And I think at the moment, डीगल क्यों ले रहे हो भाई तुम? सेव ही कर लो डीगल भी. तुमसे एक डैमेज तो हो नहीं रहा. वो देखो आसपास आके भूत बनाएगा देखो तुम्हारा. that Loud are playing at. Here again, less up through tube. Looking to get aggressive. Now last time RB was the one that died early and opened the gap as the turret went down. This time Les bullies his way through, pulls RB back towards him for another cheap kill. And he won't be dealt with. Pop flash play, Mako just मैं बता रहा हूँ भाई क्यों ही लेनी है भाई. I love this. जरूरत ही नहीं है. And to think that they haven't even had to show Icebox so far in this tournament. And it looks this drilled. They're getting all of the benefits of the KO in terms of the flash through their wall. But they also have the reconnaissance of the dog too. Rifle upgrade. But so much to do for Buzz. भाई आसपास पूरा घूम के मिड से आके वापस से यहाँ आके मार के गया. Lead for Loud on the second map after dismantling DRX 13-5 on. And it feels like they could still show us more unique strategies. We've seen heavy B pressure. Bro, Navi versus Loud क्या sexy final होगा यार. Playing Harbor Viper makes it really difficult for Buzz to get aggressive. I don't see anybody challenging Navi except for Loud. हाँ ना. Loud, loud, loud. आपने नावी का लास्ट मैच देखा था क्या तन्मय भाई? हाँ मैं पूरा टूर्नामेंट देखा हूँ. हाँ. सबसे बेस्ट गेम प्ले किसका लगा आपको? सबसे बेस्ट गेम प्ले? हाँ. एसके रॉसी. सबसे बेस्ट गेम ये क्या सवाल है भाई? Talk thank you for the sponsor. मैं थोड़ा इंडिविजुअल टाइप. मेरे को डर का कूल लग रहा है भाई. हाँ क्या वो फैनेटिक वाला का किल कर रहा है भाई. वो भी मार. नहीं वो भी एक किसका था वो बिंग्स जो साइफर लेके वन टैप मार रहा था. सेंडर जी के अगेंस्ट. सेंडर था ना. सेंटर था. एक शॉट वो इतना नहीं था लेकिन वो इतना नहीं. अबे भाई क्या डीगल से वन टैप मार रहा था. ट्विस्टन मार रहा था उसमें यार ज्यादा. नहीं ट्विस्टन और डरकर. हाँ ट्विस्टन अच्छा प्लेयर था. नहीं ट्विस्टन और आसपास का कंपैरिजन करोगे तो आसपास फार बेटर है उससे. मतलब आसपास फार बेटर बट डरका इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ. मेरे को ये सिंगल एलिम मेरे को फॉर्मेट थोड़ा लाइक पेपर एक्स पहला राउंड में निकल गया. मेरे को थोड़ा सैड हो गया. एक और मौका देना चाहिए. So here's that interaction we were talking about. Buzz with his operator. लेकिन इससे वो भी है कि सब लोग अपना 100% ही देगा. That is a perfect मतलब मिस्टेक का रूम नहीं है. अच्छा शॉट था ये बस. हमारा भाई बस ने क्या मारा. भाई उसने ट्रेड भी ले लिया तुरंत. There's no time wasted. Skipping a hop, jumps up to the box, and he just rips away the opening that Buzz earned for his team. And Sadak, of course, there's no. पर नॉर्थ अमेरिका का एक भी टीम नहीं है ऐसा एकदम सैड हो गया. इट्स लाइक वर्ल्ड कप होता है और वर्ल्ड कप के फाइनल में मतलब ऐसा मेन कंट्रीज ही नहीं है. इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कोई भी नहीं है ऐसा. ये लोग का गेम प्ले देख के लगता भी है मालूम ये लोग यहाँ पे. अरे भाई ये क्या थ्रो कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं ये. स्वाम क्यों फेंका. राका दाल किधर पहुंचा. This looks impossible for DRX. यार अभी भी best of 5 है तुम्हारा मैप है याद रखना. Fifth map after going down 0-2. The team has demonstrated that they're not out of series this early. That they don't crumble instantly when they face adversity. And yet today I feel like what I'm witnessing is just Loud utterly outclassing. ज़्यादा ही नहीं है Loud के पास. Loud have a different strategy for every time there's a gun round, and DRX are left reeling. They can't even use the lessons of the prior losses. To try and claw their way back into it.
पेट ईगल बाय कर ली भाई Orbs available. भाई इको राउंड में तो जाके मर जाओ बस टाइम वेस्ट मत करो Now a dog clears the one side of it. Interesting cascade, but it is that weaker buy for DRX. And ASUS just trying to get as aggressive as humanly possible. And look at how deep they're pushing. I mean, the wall just gives them all the space. New strat again. Yep. A new flavor to it. DRX with full weaponry this time. It's constantly DRX who have to react to it. And I love the flexibility that adding the harbor to this comp gives them. High tide round the side. Sheriff in the hands of Mako. Makes the most of that one. Seekers, though, popped off. Pointing out a positioning precisely known. And it's less than 3. What's the fourth? Will he get it? The answer is yes. Nice try, nice try. Mako less mara. खत्म हो गया भाई 2 टप्पे दिए भाई 8093 और फिर 80 Louder mixing in some safe rounds where they play a standard post plant on Icebox with a lot of these more aggressive looks. This time the wall allows them to take snowman control. Previously they've been flashing through it. Map 3 कौन सा है? Getting aggressive on people. भाई ये सुपर बूट पहन के आया था मेरे को ऐसा लग रहा था एटलीस्ट thrown at DRX. And I mean just look at the players, look at the coach. They're out of ideas. Press में आ गया कोच उनका. Speechless. Best case scenario is going to be 4 rounds for DRX, but with the current momentum, the pace of which this game is being played, it just looks so unlikely. And अभी तो आई थी अल्टीज की 2 राउंड पहले 2 years once more grants them all the space in the world to get a free plant, and less has been this consistent thorn in their sides. पहली बार मारा इसने लेफ्ट drone coming down mid from Zest looks back up tube. Finally, snowman control again. Nice. Crossfire. It was good to play in one, but it's an immediate trade. Lockdown for a lockdown now. This is where things get scrappy. Nice. Moving across. अरे भाई आसपास. Nice. Nice भाई. Jet div. Lockdown gonna be. अरे काटो इसे जाके. Out in the open. नेट चालू किया था क्या उसका नहीं है. Stick this one without a care in the world. भाई देख रहे हो डर रहा है वो जा भी नहीं रहा अकेले भी 2v1 में. भाई. Eventually, 8-1. it is DRX able to claim that first round. तुमने ये देखा वो जा नहीं रहा था पता है जा नहीं रहा था वो डिटेन में भी मारने उसने गाली बकी होगी पैसे कम है देखो this time very important. But I also think that DRX have driving a wedge in on the retake and separating one half of the post from the other. उसको पूरा स्कोर लिखा भाई disappointed that this wasn't a 12-0 half. Yep, things you 8-4 I froze. Win in Brazil. A push down the tube here from Stacks, following his cascade and a recon dart. Looking maybe to add a different flavor to this, let's baby. First kill. Things start to go the way here of the Korean team. A lot of adaptation's going to be enough. ऊपर देख और ये शॉट लगता ना कसम से भाई angle to try and watch for. ASUS really being pushed onto the common angle now. तनु भाई रिफ्रेश कर लो 5 मिलीसेकंड in his hand doesn't want to spray. Snake bite at the floor though. कर दे spray. Should keep him safe for but a moment. Now though it's going to get difficult as the smokes start to fade away and dissipate. Kawazine flash was waiting. No play off of it, but that's just spam. ASUS catching it. Zest is low. Stacks does trade. But this is very quickly getting out of hands right now for DRX. One of the sole opportunities. Nice by Stacks. Ace है इसकी ace है. Solo play by Stacks. The trade, the anchoring. Wow. Shuts things down with a 4K. 8-4. Let's go DRX. 4 rounds in this half is the bare minimum to get things back on track. Guys like करो. For our podium team. Like करो अगर आपको अच्छा लग रहा है from champs. And right now you're seeing that gap between third and first. But of course, Loud with those 2 changes, you expect a different result here. And instead it has been just as dominant. Stacks looks to try and turn the ship. इसके बाद split है. And Loud take a timeout to hold that momentum before it can go anywhere. Anger the beast. Split हुआ है भाई. There's that crowd by Loud. Loud guys, what's going on? We dropped 2 rounds. अब समझा रखा भाई मैं क्यों बोला था लाउड जीतेगा.
And Buzz has been able to find some value with the operator. He's actually working around the cascade very nicely. Even when he was on his own at B, found a first blood, and drop back. And it seems like DRX wants a hard anchor A, which I think is a nice adjustment too. If you end up playing back on A and playing retake or post-plant utility, what you end up finding is the harbor walls just lock you out. So I like the adjustments, but to me, Bren, the problem is DRX are just adjusting way too late. Do you remember on Pearl where it was round 11 by the time they broke the alarm bot for the first time? It really put pressure on Sadak's defensive holds. It feels the same here again. 8-2 है 8-4 होगा और फिर कमबैक होगा और फिर अभी इसके अगेंस्ट जाओगे राका भाई? Making those adjustments. हाँ? शर्म करो थोड़ा सा. I need to String remove arounds by Loud. I mean, listen, they have kept the money up. Let's go DRX. By Buzz maar raha hai by oksbi despite losing the back 2 rounds. There's an opportunity there. Buzz, I believe he spotted a body. Moves away. This is an angle. Yeah, Buzz maar raha hai. Brave from him. Not expecting that angle to be watched for. Tanve bhai Buzz maar raha hai. Cascade, so it can't be broken as easily. अपन 4 round पे अभी भी जीत सकते. Clears away the one box. करते एक spam करते अरे यार. Right मारता ना. Shots. हाँ. And it looks like Stacks might want to challenge over at Snowman too. This fight is about to be taking place at the back of Snowman. Feels like it's going to be important. Stacks out in the open. RB does collapse from the side. क्या हो गया भाई? Oh, like he was fully moving. Still claims the kill and it's got the pit online. Raka. Danger time. Retaking with the operator. But हाँ भाई 2v2 है 2v2. You could try pushing a Hunter's Fury in here and seeing if Buzz can follow it, but he's only one player. Doesn't have the dash. Shock dart. Seems better to just group up. Tap onto the spike, forces a snake fight. He is moving forwards and it's a flick of the wrist. Locks on. Down to Buzz. No time left. Decay going to be building back up here. Percentage play gets off of it. Resmoke. हो गया. Let's go, Buzz baby. हाँ भाई Wings भाई आवाज आ रहा है. अबे वाह कैसा चोम टू कितना करेगा मेरी जान. And I think he's done a great job of silencing the doubters too. Horrendous performance from but he has bounced back. His operator and that clutch being about the only thing that DRX have got working for them on Icebox. 12 and 9, stepping up to ASUS and providing one last lifeline for DRX to hold on to here. If they get the 4th and get the pistol, maybe they can make a map of this. The economy still not challenged for Loud, of course, after 8-1 rounds in a row. But the adjustment has come, and so much of it has been based off Buzz. Holding this corner. Is anybody going to be there to try and break this trailblazer that's being used over and over again? बस भाई को थोड़ा पीछे चले Shot out of जाना the sky. हाँ अब जाना चाहिए अब देख क्या हो रहा है. पीछे चले जाना चाहिए बस भाई. देख रहे हो खौफ तो है देख रहे हो खौफ देख रहे हो तो अंकिता देखा भागे एक off और एक part Like I said, the adjustments, they really are coming. It just takes Loud. सोवा की अल्ट है. Oh, but भाई. आपका होगा ऐसा कॉफ को भी. Their way into this site. The Seekers online. Kawazine wants to lead it over Flash, is what it seems like. Now the Reckoning. Right into the back. Sadak not scared of taking this space. Even the fight as well wants to be the point of contact. Nanoswarm lay down on his feet, and DRX, no attempt from them to try and refight this one. They had plenty of ults to do so. There's the Reckoning, used up close. ASUS forced to move. Hunter's Fury as well, spots them out. One tag onto Sadak. Will there be anything else? Kill found still. Loud, still alive. ASUS trying to take the fight too. What a great reset from Mako. Yes, down but brought down out of it. Reflect by Yes. And let's just finalize it. 9-3, familiar sights for Loud and DRX dating यार पहले अल्ट मारनी थी मेरे हिसाब से. Exactly the same result from Pearl. The same level of dominance. इस बार लग रहा है मेरे को. यार मेरे हिसाब से पहले मारनी चाहिए थी यार. What can't this team do? बहुत देखे मैंने. सोवा की अल्ट पहले मारनी चाहिए थी. Possible, doesn't it? And unstoppable if you're thinking about Loud. Absolutely fluid as the gameplay, great adaptations, but I'm curious, the first half done, let's send it down to the desk to find out more. Thank you so much, Bran. It's another 9-3 first half, and it comes in our first look at Loud on Icebox. And Mimi, this team has just... Favorite breakfast? मैं तो सिर्फ चाय पीता हूँ.
तू कुछ खाता नहीं है? ना. Bad दूंगा तुला. Only 1 tea and 1 banana. Banana? Yeah. Slowly खाता है क्या तू banana? हाँ, एकदम फील के साथ वो जो दिखाते हैं ना. किधर? वहाँ पे. वहाँ. दाना ने पहले वॉच पार्टी ना एंड हो जाए. वो जो. वाह भाई. फ्रूट्स का. हार्दिक थैंक यू फॉर द री-स्पॉन्सर. फ्रूट्स का ऐड आता है. And then flashing through them and continuing to fight in their post plants, which adds a lot of complexity to the comp. Now we put a big spotlight. I just have coffee. You have just coffee? Yeah. Do you watch Binks eating the banana? No. You turn around. तो ऐसा. I'm doing my other work. Yeah. अच्छा. Other work. अंकिता, तू क्या खाती है ब्रेकफास्ट में? एक सेकंड, इसके पहले माय बेस्टी आंसर दे. तन्मय भाई से चालू करते हैं. तन्मय भाई आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? उस हिसाब से बाकी लोग आंसर देंगे, थोड़ा सेफ होंगे, वरना बाकी लोग पहले टूटेगा ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. हाँ तन्मय भाई आप क्या खाते हो? मेरे को देख, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट. या फेवरेट. मैं क्या खाता हूँ वो नहीं, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट. वो सवाल था. जो खाते हो. वैसे तो मैं फास्टिंग करता हूँ, अभी डायरेक्टली लंच खाता हूँ. पर मैं जवाब देना चाहता हूँ, तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरे को इडली पसंद है. मेरे को, मैं इडली कैसे खाता हूँ, मैं ऐसा बोल में सांभर डालता हूँ, इडली को मैं कट करता हूँ, उसमें गिराता हूँ, और फिर फोर्क से ना काटा उससे मैं जो डुबा हुआ इडली है उसको निकालता हूँ, और चटनी में ऐसा घुमाता हूँ, और फिर स्लोली मैं मुंह में डाल के चबा लेता हूँ. स्लोली मुंह में डाल के चबा लेते हो? क्योंकि गरम रहता है ना, सांभर गरम रहता है ना. अच्छा. इडली ठंडा रहता है. मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मैं खुद टूट जाऊंगा. तेरा बनाना गरम रहता है क्या? मेरा बनाना रूम टेम्परेचर. तो तू क्यों स्लोली खाता है उसको? Up against Loud. क्योंकि मैं गरम रहता हूँ. It's a different beast entirely. It really is. This pistol so important. भाई ये देखो कहाँ चला गया. चलो गया. Contacting through. Oh my goodness, ships in the night, and ASUS claims the kill. He heard the updraft, he knew the positioning was there. There's so much confidence. It's outrageous भाई confidence. ये क्या है भाई? ये क्या था भाई? Every part of what DRX are doing. चल के गार्डन है क्या ये? And now things are forced to go quiet. Reassess. Which areas of the map do they really control here? Slowly का ना आराम से ना गरम into A with his turret. It's unlikely anyone's pushed up because they've already seen ASUS. He's the most aggressive player on Loud. Have to clear it though. Look at that drone being used from a very far back position. Oh, भाई drone कहाँ से कर रहा है? Get that tag on ASUS. So space gained. ASUS looks like he wants to have another go at it. This would be behind this wall. There's a tar that doesn't even clear him. This would be absurd. But the real play is happening in Tube and under orange right now. Yep, split play. So important. Less spots it out in that Viper head to head. That's Arbido from below. Flash play. He's back in. That's it. भाई आसपास इसकी माँ को नमन. What's the name of the game? यार वो अकेला ही मार रहा है भाई पूरी टीम को. Absolute gremlin just lurking around B main. Nice shot रे, अच्छा मारा. Too much to do. भाई स्काई ने क्या ब्लाइंड दिया बताओ. Thank you for the response. Pistols secured. DRX का मेंटली खत्म हो गया रे. है ना. You talk about containment. Yeah, DRX are just getting stuffed in a box right now, but how do you contain this? चालू होने से पहले लोग मर रहे तो क्या ही करेंगे. ये आसपास राउंड होने के पहले ही उनका स्पॉन में घुस रहा है भाई. In the round. And this is the problem when a player gets that level of confidence, when they feel like everything is working, suddenly they're going to disrespect your utility. Suddenly you're going to have to deal with them, and if you can't win those fights, if you can't preempt them and shut them down, ASUS is going to have 20 kills in 13 rounds. 20-8. भाई फिर डीगल ले लिया भाई. क्यों लिया? तुम पिस्टल ही चलाओ भाई. क्यों इकोनॉमी वेस्ट करनी है? And I feel bad for Buzz because he's been playing all right this map, but he just can't hold on. He can't keep up. No one can. Different high tide now. Separates a lot of the side, gives a bit of space to the defenders here, but I think the goal is to try and get that plant down. Util, though, stops that. Stacks! Wow. Oh, he tries to go at the rope, but Sadak was spamming it. That's so good. Hopes and dreams resting on these shoulders. Trying to hit these shots with the pistols, but Loud far too good.
Never a missed opportunity. Never any signs of weakness so far in this series. DRX not going for it. Just happy allowing Loud to get up to that 11th round. And this, I mean, look at this score. 13-5 map 1, 11-3 lead for Loud map 2. भाई वो कैसे मर गया वहाँ पे? They look insane. And I want to cast people's minds back to the lower bracket final at Champions, where DRX met finals की बहुत against, the NRG core, then known as Optic. They lost 13-8, 13-5 in first matches, and they still pulled it to map 5. I can't do it अगर Sunday को. I don't know. So it may still be too early to count DRX out of this. They might still make a match of it. But so far, this has just been a flattening. Just for a clear gap between these two teams. It's just audience वो सिल्वर में chillings करते करके. मैकेनिकल भाई आपका क्या रैंक है? भाई मेरा रैंक तो मैं गोल्ड 2 हूँ अभी. मैं अभी 78 इलो अराउंड हूँ. मैं गोल्ड 3 हो जाता हूँ फिर वापस गोल्ड 2 ऐसा घूमता रहता हूँ आसपास. ओह आपका फेवरेट एजेंट क्या है? मैं तो यार चेंबर खेलता था. चेंबर में था फिर नर्फ हो गया तो अभी रेना फेड ऐसा सब ट्राई किया बट रेना पे फॉरेस्ट 2 खा लूंगा ब्रो. जब सबसे राघव भाई जिसको सपोर्ट करते हैं उससे चालू है मतलब रेना. मैं अपने चैनल को सपोर्ट करता हूं. बता ना अगला एजेंट का कुछ ऐसा गॉसिप देना. क्या मुझे लग रहा है सेंटिनल हो सकता है. इनिशिएटर है वो अनाउंस कर दिया भाई. उसका नाम भी बोल दिया ना यार. गेको नाम ऐसा है. हां क्या कौन बोला? हां सब कुछ आया. यामी वैलोरेंट पे आया है. कल देखने मिलेगा शायद. कल नहीं परसों फाइनल लोग शोकेस करने वाले ना. परसों देखने मिलेगा तुम्हें. नहीं परसों भी नहीं. परसों है क्या फाइनल? परसों. आज और कल सेमीफाइनल है. अच्छा चैट में से कोई बोल रहा है एस्ट्रा का अपोजिट होने वाला है. अच्छा अपोजिट में क्या होगा? मैंने लीक्स में देखा कि एक मॉली है, एक फ्लैश है और एक पेट है जो apparently plant और डिफ्यूज करने में हेल्प करता है. लीक्स में Really just being caught out and he opens out of 48 health now. Some pet that helps you plant will go down though in that 4v4, but the way Loud have been playing, anything could happen. They don't have rifles, but we'll see. Moving forwards now, waiting for the next wave of that utility. These passive postmans really. भाई अगर ये इससे मर गया. Maka needs to spot this. Oh my god, are you kidding me? क्या बात है. Way all the way through. Good movement from Sanak. Still, he will get his head ripped straight off. Now Aspas, 18 health. And a dream. Thank God, bhai. Much more offered to him. So DRX, round claimed, puts them at 4. अरे वो मेंटली डोमिनेट कर गया. To try and pave their way to any sort of semblance. अब देख उसने ऑफ उठा लिया. अब तो और भूत भरेगा वो. The more they start getting onto the board, जो जिगल करके वो लोग इन्फोलेट है ना. भाई अगर क्रेजी है. 10-11 पोस्ट के हारेगा ना तो एकदम ही गिव अप हो जाएगा भाई. The way that they load ult orbs onto their players will allow them good opportunities. मेरे को लग रहा है तन्मय भाई वो जो अभी कैफे दिखाया ना वहाँ पे सब दाल और वो ही खा रहे हैं फ्राइड राइस. Divansh, thank you for the member. But DRX, this has to be around. Thank you, Divansh. Bye. They need to punish Loud and send them into an eco. Guys, like कर रहे हो ना? 10k likes is the goal of the stream. If you haven't liked it yet, तो like करो. Loud they can use that reckoning to make it so much more difficult for Loud to retake. So leading the charge, common angle the spam, it pushes stacks down onto the ground. Much damage. That's through the cove as well. And so, a suboptimal plant location for DRX to play this post plant. Buzz, Clawbass pushes them back. Will he survive? Yes, that's going to be a reckoning. Good timing on that one. It's a refight taken. Dart not being found. Nice. And again, nice. Rifle spam, crossfire setup. Maka still alive, still kicking in the 545 health. Dodging, weaving, ducking. It comes down to 2 years. But even he can't quite manage those expectations. So DRX break the economy. 10k likes रे 5k भी नहीं हुए likes. Post plan by DRX. That's what you need to see from this squad. Getting the fire back underneath them and pushing Loud down to an eco. The crucial play there being that Stax has been generating these ultimates really quickly. He's got the spike on his shoulders, and the reckoning comes through exactly as Loud wants to go for the retake. And that means these players
are uncomfortable. They can't stay in the same spot for very long. They can't trade for each other as easily or hold angles properly. It rips apart the retake, and DRX are using utility at the same time, like that recon you saw coming through. Diligent play. Did you eat normal rice with sugar or not? Combo there. They rice with sugar? No. It's going to be Loud going for those ult orbs, just like DRX were when they were on their defensive side. But how do they get through this one? They've made it well known. Push coming through. Buzz. Receiving a friendly shock dart is what it feels like. Up top. Oh my goodness. Narrowly spots that one. Still waiting to be taken. Push all the way in, and Stacks, he just doesn't even know what's happening. Into the cove. Gotta be a recovery now for DRX. So damn bad. Handed over the rifle. Sadak taps the spike. Right now baiting out of position. Moving forwards. The flash is good. Zest does claim it. Receiving his eyesight back into it. Tap onto it. Sadak again trying to bait the swing, but RB shuts that one down. Unless he's got the energy up, wall going up. Hi, hello. No way you can hello. With this. In between the legs. Positioning known. Less hunting. भाई हालत देख लो भाई हालत देख लो इसकी. Or does he? No, he doesn't quite have this one. It's a, HB, thank you for the it's a nice response. cute play. But DRX. Sugar rice नहीं rice पूरा पता है पूरा. शुगर को और मिक्सी में घुमा के और एक पाउडर फॉर्म बन जाती है पूरा. वो बूरा और राइस गरम करके वो खाता. कभी कभार बहुत He certainly makes things doable. A recon dart is lovely, even if it doesn't hit less though. It's still good to be able to एक बुलेट नहीं लगी माँ कसम भाई. Push the spike on the next tap. Still though, I think we saw some really good things out of the retake. उसने spike type किया तो क्या फट गई होगी ना. देख रहे हो इको राउंड में 4 गन गिराई है उन्होंने. Space for the rest of भाई लेकिन कितना मस्त है ना वो खुद हाथ रहा था वो उससे रिकॉल मार के. Which is right about now. Aspas, close angle, wider swing actually, damage is good. Drop down to 30 health, big punish. Gotta respect that now, pushing all the way through. DRX have a timing, they have an opening. They don't want to let this one slip. Get that plant down in the close corner. And look how Stack saves the high tide for the post plant. That means that Loud have so much more space to go for an instant retake. Hunter's Fury, Zest using his close. Still, how does Buzz fall there? भाई अब ये देखना कोई चेक ही नहीं करेगा. Oh, lockdown destroy कर दिया. The danger is here, right in the pit. RB does not get cleaned up. Oh, this is ridiculous. What a reposition from RB. And what is going on here? What is occurring? How does the kill get found? Sprays down. Nice, RB. Oh, nice. The perfect timing. Turning them into mincemeats, re-swing. 2v2 हो गया बताओ. ये आसपास कहीं भी घूमता है. अब आसपास बोले मुझे कैसे भाग रहे हैं बे उससे भाई. Still, it should be him saving the rifle. पर एक और इको करना पड़ेगा ना यार. 11-8 फट गया. Come on, let's go. नहीं अभी इको है अभी इको 11-8. Yeah, strange there actually because नहीं isn't इसका loud का इको है. Save that into the next round. No operator online. पूरा नहीं होता sugar. 11-8. Still, Abhi, thank you for the response. Welcome back. It's not going to be immensely damaging that decision. I think the real one is RB's reposition. Just looks immaculate there. But I think looking from an overall strategic point of view, as Loud decides to take a timeout here, you're seeing DRX with a really different approach to a similar comp. Instead of using their high tide to make a lot of space for themselves on site, taking snowman control, or getting through it to take the site. Guys, क्या लगता है बेबी? Loud लग रहा है क्या चैट में? हैं? या फिर यार मेरे माउस की बैटरी डेड हो. I need to revote. भाई नहीं कर सकते भाई. फैजल भाई आप revote नहीं कर सकते. Before the post plan ever happened. And so when DRX retake, they have to look left, right, clear snowman, clear tube, clear top side. DRX are actually playing a much more claustrophobic game, and it's gonna give Loud opportunities. So far though, it is working. But DRX have had to burn a lot of ultimates to get to this point. They've used a Reckoning, they've used Hunter's Fury in the Viper's Pit. What they really need is Stacks to get another Reckoning online by the time we hit round 20. आसपास के आसपास जाना मतलब dead. They also need to make sure that Aspas doesn't kill everyone with Blades on, and the way that this guy's been playing that is well within the realm of possibility. In a normal match against most teams, when you see Loud, आज लोग को हो गया भाई होगा क्या? You're thinking, okay, a bit of breathing room, but Loud have been able to make these half buys
bit more dangerous. Now we see an approach. It's an attempt to push away, and he sort of plays away from a main drone. What does it really see? Flash to try and as well hide information. Gets the tag though, अगर ये and मारता ना off knife. of it. Trying to take the space Nice, back. Mako. Wide. Top of pipes. Nice, Mako. Kill found, and so the big pain point. Nice, nice. ये smoke में adjust, पट से headshot. भाई आ गया form. Dynamo भाई का आशीर्वाद, भाई साहब भगवान. Nice, buzz by. Stacks is still 2 away. I'd bye like to था see ना? him hunt for this final kill. bye His is the most bye important bye. ult to get online for the next बस round. बोल रहे भाई गरम होके Buzz by को गुस्सा आ गया. But even so, it's possible that with an ult orb and a plant, they'll have भाई that ये still to save play क्यों नहीं with. कर रहा? Oh, spam. Almost. Moving across. आसपास के Right पास reaction. Yes, जाकर. गलत बटन दबा के अल्ट कर दे. As a prime game, Bye. that round could have got dangerous, but they neutralized नहीं that अभी full बैग allowed. very nicely. अरे नहीं तन्मय ये भाई- एक राउंड था हाँ ये एक round था अभी बाय. तन्मय आप ये बताओ ना, आप आ रहे हो क्या बैंगलोर? हाँ मैं बैंगलोर में हूँ नहीं वहाँ आ रहे हो क्या समिट में? हाँ तू का 4th को आ रहा है 5th को आ रहा है आप बताओ. मैं 4th को 5th को मैं बॉम्बे जा रहा हूँ ठीक है. Vision, thank you for 3 आप वहाँ euros. पे shift हो गए क्या They नहीं can ना? get into this round with a lockdown Bangalore and then shift play हो गया, Reckoning हाँ. post plan. हो गया? But there is going to be a बस भाई ने massive 20 pressure मारे, on B. राका. Aspas, you've got to be joking. बस भाई ने The 20 मार balls to दिया. push up, make a play Yes. like that. अरे यार अभी There was a फैंटम से क्यों नहीं स्प्रे किया? And he used a ton of zone Calibration util by- just to maneuver his way around that one and potentially collect that kill. Still moves forwards. Now वाह dashes भाई up. चाटा खा लो Looks जाके. for double up. B moves around, blind, but to the angle, and he is fully blinded up. वाह. Coverage is ओ there. भाई भाई, साहब एक क्या crazy था रीड है भाई. आसपास का One लोग. after another. भाई क्या क्रॉसफायर था वो? Kawanzi and Sky look so phenomenal, man. Utilizing both of those flashes, knowing that the first isn't good enough. With current relieving line the of build, pressure. भाई DRX को तो हरा सकते हैं. I mean, he just looks immaculate क्यों in these वो- positions. क्यों गया yellow के Such ऊपर? जरूरत a ही नहीं था. phenomenal pickup. I think DRX rushed that though. Once they had control of B and they pushed Buzz back, and they pushed Aspas back, RB had the perfect time to go for a lockdown. You stick a lockdown there and you wait, you apply so much pressure to Loud. ऐसे पिक कर रहा मतलब And DRX instead they फ्लैश just ran मारे. it into the But ball. And it has set Loud up. उसका आसपास गया उसने येलो फ्लैश मारा Map तब वो point for dash them. करा. No problem Ashwin, sorry क्या बात है बेटा. The margin for error that is allowed for a team like DRX. मैं लगा No longer क्रॉसफायर available. बहुत Lockdown strong. going to be used up close though. This is punishable if they have util for it, but I said it's just going to be a pit. I don't know how Les is going to stay in sight here. He's going to have to evacuate his pit. Is he just going to allow himself to get detained? Yeah, apparently. Wants to keep it up. Obviously, the Viper nerfs, meaning he has to maintain that. Dash has to be used. Disengaged by Buzz. And no punish on Les. No punish भाई at all. ये It's 200 back IQ up था actually. remaining. Spam. हैं जी. It's dangerous. वो गया ही नहीं भाई. If falls here, they lose their big ult for the post plant. Cove just barely keeps him Whoa. alive. And here's the भाई. flank from Aspas. Oh, Aspas And from what an behind. answer. भाई, Shot Aspas- landing. Warbang damage. सब लाल And है. they are weak. Missing the second one. Ah. Everyone falling low. गया, Buzz, गया, the भाई Aspas डिफ्यूज हो रहा है. Meanwhile डिफ्यूज हो रहा है. डिफ्यूज हो गया पूरा डिफ्यूज हो गया डिफ्यूज हो पूरा गया डिफ्यूज हो गया भाई. over. भाई आसपास MVP भाई. वो चार तीन बंदे उसको मारने के लिए भागे. मारने चार के लिए बंदे. चले गए. खौफ है ना उसका. अरे कोई नहीं. This retake style looks incredible Split from में अच्छा Loud. खेले हम लोग. The aggression coming out from Aspas. हाँ, and split Kawan भी है. अच्छा खेल सकते हैं ना. pushing forwards, making space कौन अपन? for one of their team to get on the defuse. The Brazilian retake अबे looks माउस कहाँ चला गया मेरा? कौन सी स्क्रीन पे and है? the crowd are pumped. अपना भी टीम मेरे साथ तो खेल Loud रहा है. are one map away from being able to get themselves in a position where they पूरा green could हो गया है be बे. our first ever team to lift 2 trophies. And इसको ग्रीन स्क्रीन में रखें तो क्या होगा? That's what they're fighting for. And honestly, the attempt from DRX to try and bring it back, it was good. Adjustments were made. लंच हो गया, डिनर हो चुका है, वो बचा है ब्रेकफास्ट. नहीं ब्रेकफास्ट खत्म तो नहीं ब्रेकफास्ट हुआ. डिनर हो चुका है, लंच ब्रेकफास्ट तो बता रहे थे ना. क्या बता रहे थे? ब्रेकफास्ट में इडली सांभर बता रहा था. फिर हाँ. बिंग्स बोला कि वो स्लोली बनाना खाता है. बराबर. राका तेरे को गरम होता है. ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है राका? फेवरेट बेस्ट मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है आलू का परांठा एंड बनाना शेक.
and banana shake. Yeah. Aloo or banana shake. Aloo parantha and banana shake. Yes. Will conclude. Heavy breakfast खाता मतलब राका भाई. हाँ, heavy breakfast because मैं usually heavy breakfast इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा lunch late होता है और dinner भी late. क्योंकि तुम लंच टाइम पे उठते हो. हाँ, brunch होता है. Heavy breakfast कैसे खाएगा वो? Lunch पे उठेगा तो? नहीं, favorite breakfast यही है. वैसे मैं brunch ही करता हूँ. देखा. अच्छा राका, तेरे लिए एक सवाल है, ठीक है? हाँ, जरूर. सपोज तू ब्रेकफास्ट लेट खाया, ठीक है? उसमें तू आलू का पराठा बनाने गया, ठीक है? और उसमें थोड़ा आलू बच गया, ठीक है? अच्छा, आलू के परांठे वाला पिट्ठी आलू उसे पिट्ठी कहते हैं एक्चुअली, जिससे वो मैश्ड वाला मैश्ड वाला बच गया, थोड़ा ऐसा आधा पराठा जितना, ठीक है? ठीक है. ओके. और आधा बनाना बच गया, ओके. ठीक है? और पिछले रात का तू नॉनवेज खाता है क्या? हाँ, खाता हूँ. और पिछले रात का ऐसा 1 कटोरा चिकन चिली बचा है, ठीक है? चिकन चिली बचा है, ओके. तो अगले दिन अगले दिन क्या करेगा ताकि वेस्ट ना हो खाना? देख, वेस्ट ना हो, बिल्कुल ऑर्डर में बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ऑर्डर में, ठीक है? जो आलू की पिट्ठी बची है ना, उसको मैं ब्रेड के अंदर रख के उसको टोस्ट करूंगा और सैंडविच बना लूंगा, ठीक है? तो वो सैंडविच इज ऑफ इट्स आलू पराठा सैंडविच. आलू पराठा नहीं, आपने बोला आलू बचा है. पराठा खा लिया, आलू बचा. पराठा खा लिया, आलू बचा है. हाँ, तो वो खा लिया, ठीक है? अब केला बचा है, केला तो ऐसे ही खा लिया. अच्छा, तो आलू का सैंडविच और केला. हाँ, और जो चिकन आप कह रहे हो, चिकन चिली, उसको गर्म करके फिर खा लिया दाल और फ्राइड राइस के साथ. वो तो रात को खाया ना. अच्छा, तो उसके बाद एंड में तू जेल्यूसिल तो खाएगा ही ना? ये क्या होता है? वो क्या होता है? डाइजिन. नहीं, मेरी डाइजेशन बहुत ही अमेजिंग है. जिस हिसाब से अरे आपको पता है ना धन भाई, नॉर्थ वालों का फुल स्पाइसी, फुल हैवी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वैसा. और मैं एथलीट भी हूँ एक तरीके से, सो हैवी चलता है. कौन से तरीके से एथलीट? कौन से तरीके से एथलीट है? मतलब अरे अभी क्रिकेट खेला था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, मैराथन भी किया था, स्ट्रीम का कैच अच्छी पकड़ी थी राका भाई ने. वैसा स्ट्रीम का. अच्छा, ठीक है. अंकिता तेरा? मैं बोनविटा पीती हूँ बस. नहीं, फाटू से पूछो ना प्लीज. अरे तन्मय भाई, ये जेलोसिल ज्यादा इफेक्टिव है डाइजिन से. तो वो हैवी एसिडिटी होती है तन्मय. अच्छा, हैवी एसिडिटी होता है. एकदम हैवी, बहुत हैवी, एकदम क्रेजी हैवी. बहुत एसिडिटी कब हुआ है वो फाटू? सेल्फ क्लेम भाई. मेरे को याद है. विंग्स तुमको याद है? मुझे पूरा याद है. मेरे को तो याद है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बस एक ट्रिप पे हुआ था. गाइस, बाय द वे, अगर आप अभी भी जेल्यूसिल और डाइजिन के बीच में ना कौन सा बेटर लाइक नहीं करा तो लाइक कर सकते हैं बिल्कुल. तो दोनों एक साथ खा के देखा है क्या? नहीं. जो तीसरा आएगा उसका फिर एक काम कर, तू ना राका जैसा एक ऐसा 2 ब्रेड ले, ठीक है? उसके ऊपर जेल्यूसिल का जो लिक्विड आता है ना वो मल. अच्छा, फिर उसके साथ डाइजिन अलग से. मैं भाई वो सच्ची कर लेगा, भरोसा नहीं है. और एंड में ना एक्चुअली जो बिंग्स करता है ना, बिंग्स जो धीरे से बनाना खाता है ना, सेटअप हो जाता है. वो एक्चुअली एक डाइजेशन ठीक से होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन है वो. एक्चुअली खाना धीरे से खाना, वो एक्चुअली है वो. तो बंग्स भाई, तन्मय भाई ये बोलना चाहते हैं, खाओ कुछ भी, धीरे से खाओ, डाइजेस्ट होएगा ही होएगा. बराबर. तो डाइजिन में वो केला डुबा के भी खा सकते हैं. इसमें डुबा के क्या? डाइजिन ऐसा कटोरी में लो, फिर उसमें केला डुबा के खा सकते हैं ना. थोड़ा रूअफ़ज़ा फ्लेवर नहीं आएगा? ट्राई कर सकते हैं. पांडे जरा 1 मिनट, जरा डिस्कशन को डिविएट नहीं करते हैं. अच्छा, सीरियस डिस्कशन, ठीक है? हाँ. अंकिता, तू तो बोनविटा पीती है ना? हाँ. और फिर ट्यूशन से आने के बाद ये भी ठीक है. फिर कॉलेज हो गया क्या? अच्छा, ठीक है. और फाटू, तू ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? अब मेरा ब्रेकफास्ट नहीं, सीधे लंच होता है मेरा. अच्छा, हाँ, ठीक है. तो नहीं, फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है वो क्वेश्चन था ना ओरिजिनल. हाँ, फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? वेल आई वुड प्रेफर मसाला डोसा.
मसाला डोसा बहुत बढ़िया चॉइस भाई। इधर जा रहा नहीं है अंदर कुछ मसाला डोसा खाएगा। Thank you. Brilliant effort on the back half of the map for DRX, but it just wasn't enough to unseat Loud. We end in a 13-8 scoreline, and look, we've already talked about all series long, but Onion ना रवा onion मसाला डोसा खाया क्या? रवा onion मसाला डोसा। अरे पाटो भाई कभी आप सच ये सब इमेजिन करके उत्तप्पा के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? भाई किसी को बेस्ट डोसा खाना ना रवा होता है जिसमें छेद होते हैं, बराबर? ठीक है, क्योंकि तू डोसा में सब कुछ डाल रहा था, मेरे को लगा उत्तपा का बात कर रहा था। नहीं कुछ और होता है। पाटू तू गुड़गांव में 32 माइलस्टोन गया है? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मैं बंस टीबोन वही गए थे याद है? हाँ, वो वहां पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, उसका डोसा खा ले भाई, उफ। मैं ऑर्गेस्मिक भाई डोसा खाने जाऊंगा। ऑर्गेस्मिक 2K quality streams because of the lag. ओ किसने सबसे कम अच्छा मेरे को पार्टू का चॉइस सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू पार्टू सबसे बेस्ट। तन्मय भाई मेरा कहना था यार आरपी की सबसे कम डेट है। तन्मय भाई लेकिन जहां से मैं डोसा खाता हूं ना, यूजुअली आप डोसा खाते हो तो कितनी चटनियां मिलती है आपको? 2 मिलती होंगी सिर्फ। हाँ, एक ऑरेंज और एक व्हाइट और सांभर, कोकोनट और एक ऑरेंज और सांभर। सांभर हाँ। जहां से मैं खाता हूँ वहां पे 3 चटनियां मिलती है। अरे वो जेल्यूसिल को चटनी नहीं बोलते रे। वो जेल्यूसिल अलग है। कैलाश जी मगर वो नहीं करता। जेल्यूसिल बोल सकते क्योंकि जैसी आवाज है वैसी सही है। ग्रीन चटनी के साथ डोसा खाता है भाई, उनकी स्पेशल चटनी है वो। क्यों ग्रीन येलो दिखती है? ये ग्रीन दिखती है तो बैंच ग्रीन चटनी ग्रीन ही दिखेगी ना फाटू भाई। क्या यार फाटू स्पेशल क्या है? नहीं बिंग्स अभी तू डिनर में क्या खा रहा है? स्ट्रीम पे देख रहा हूं मैं, क्या खा रहा है? अभी कुरकुरे टाइम पास। कुरकुरे येलो वाला नहीं वो कुरकुरे नहीं है, वो 2M का वो करारे वाला मतलब वैसे ही सेम 2M। ओके सबसे खराब खाना ऐसा does anyone remember any like the worst meal you ever had? वर्स्ट मील आई एवर हैड? नहीं, खराब खाना तुम खाते हो? पास नहीं, सबसे गंदा मेरे को लगता है साग। मेरे को भी सरसों का साग नहीं खा सकता मैं। रोटी मैं साग नहीं, मतलब सेम साग की जगह में मतलब स्पिनच गंदा। हाँ, like what food do you not like? ऐसे जेनेरिक लगता है। साग यार, मेरा तो ऐसे लाइन बहुत लंबी है यार। मेरे को मालूम है इसके बाद क्या आने वाला है, मेरे को लग रहा है क्या आने वाला है। मेरे को भी नहीं मालूम रे। नहीं मालूम, मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें मैं फंस चुका एक बार तन्मय भाई इसमें। अच्छा, मैं बस मैप 3 के लिए रुका हो रे। अच्छा वैसा तो तब तक मैं कंटेंट कर रहा हूँ। मेरे को लगा आप बोलोगे खाने को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो बोल और ओपनली डिसरिस्पेक्ट करो भाई, कोई प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे राका तो रोज डिसरिस्पेक्ट करता है खाने को, फ्राइड राइस और दाल खा के। कौन लोग कह रहा कौन सा सब्जी पसंद नहीं है मेरे को? बैंगन थोड़ा वो प्रज्वल मतलब एक चीज सही है तो अगर 50% तो बनता है। कभी ऐसा हुआ है जो आपको जैसे बैंगन सब्जी है बराबर आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है और बैंगन ही पड़ा है और आपको ऐसा है कि खाना ही है, कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो आपने खाया हो कभी फोर्सफुली? हाँ खाया, फोर्सफुली तो खाया है मैं। फोर्सफुली खाया है पर उसका ऑप्शन हमेशा लाइक बचपन में जब मम्मी बनाने का तभी बैंगन और रोटी अगर है डिनर में और बैंगन नहीं खाने का है तो फिर अलग अलग इन्वेंट करना पड़ता है। जैसे राका इन्वेंट करता है ना, तो रोटी को दूध में डाल के शक्कर डाल के खाने का। क्या? बहुत यम लगता है वो। मैं खाती थी बचपन भाई, वो में। दिल्ली में लोग शादी के पहले क्यों बोला तूने भाई? पर ये दिल्ली का ओके यार, ची यार नाम रोटी दूध में। हाँ रोटी दूध में और शक्कर ना भाई, दूध रोटी तो मस्त होता है। स्पेशली वो ट्रायंगल वाला परोठा बनता है ना, वो लोग ज्यादा खाते हैं, है ना? ये उसका कट्टू बना के होता है, उसमें शक्कर डाल के। ये यार का भाई नाक डुबा दी यार। मैं ना रोटी में ऐसा दूध में रोटी डाल के शक्कर डाल के खाता रहा। फिर मैं मेरा कजन के घर पे गया,
वहां पे मैं डिस्कवर किया कि उसके कुत्ते को भी दूध में रोटी डाल के देते थे। तो मेरे को थोड़ा ऐसा डिसरिस्पेक्ट वाला फील आया मेरे को। अरे मत हाँ, बोलो मेरा यार, मैं भी कुत्ता देता भी था अपने दूध और कुत्तों रोटी को। खाता है। मैं भी देता था अपने कुत्तों को वैसे दूध रोटी यार। दूध और रोटी ना, हाँ। हाँ। तेरा लीस्ट फेवरेट सब्जी कौन सा है? किसका? किसी का भी, कोई भी बोलो, मैच चालू नहीं हुआ अब तक। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मेरे को बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद, जैसे गोभी हो गई, ठीक है, बैंगन हो गया, गोभी तेरे को पसंद नहीं है? नहीं है पसंद, पता नहीं क्यों, पर हाँ नहीं पसंद। गोभी बाकी सबको पसंद है क्या? हाँ हाँ। गोभी में भी दो गोभी होते हैं ना, मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल, खा भी सकते हैं, नहीं भी। पत्ता वाला। एक पत्ता गोभी ना, वो मैं पत्ता गोभी में चाउमीन में खा सकता हूँ, वैसे नहीं खा सकता। हाँ, वो वैसे अच्छा गोभी लगता है, मंचूरियन खाते हो ऐसे, मतलब ठीक है। हाँ, बराबर। तो ऐसे कभी हुआ है कि जैसे मेरे को ये सब्जी है ना नहीं पसंद, क्योंकि बचपन से ही नहीं पसंद, तो मम्मी किसी को करेला पसंद है? मेरे को करेला बहुत पसंद है। मेरे को करेला फ्राई बहुत पसंद है, करेला फ्राई। करेला फ्राई बहुत चाहता हूँ पसंद है। कि फाटू का सवाल कंप्लीट ही ना हो। मैं वही ये। अबे इसकी इतनी बड़ी लाइन है, मैं ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, क्या रिश्ता ढूंढ रहा है क्या? अरे भाई पूरा सुन लो भाई, लंबा बोलना। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बाहर जाता हूँ और तुम दूसरों लोग का हाथ का, बचपन में स्कूल के डब्बे में क्या लेके आते हो? ठीक है यार डाल लिया था भाई। मैं यूजुअली वेफर्स लेके आता था डब्बे में। वेफर्स क्या? मैं हाइड एंड सीक बिस्किट, बनाना चिप्स। हाइड एंड सीक बिस्किट, सूखे आलू बनाना रिलेटेड की पसंद है। हाँ। टिफिन में अगर कोई गोभी लाता है, मैं दूसरे की गोभी खाता हूँ। पता नहीं दूसरों की गोभियां खाते हो फाटू, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सब्जी। Seth was talking about that. Attempt at a reverse sweep was the closest. हाँ, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल Who've रही made थी। 2 Brazilian super rosters work. And have made 3 grand finals in the last confused 12 है कि आपका भी गोभी जैसा है। That's bonkers. Success just feels baked into this Loud squad. भाई ये तो राउंड तो लाउड ही This time here split. मुझे लग नहीं रहा वैसे 3-0। See if there's going to be that extension. हाँ 3-0 हो गया यार, भूख लग रही है अभी। ये DRX जीतेगा। मैगी टिफिन वाली। DRX अच्छा खेलते हैं। And of course, I shouldn't call that third grand finals appearance too early, but it feels like it's on the cards right now. The way that Loud playing certainly does. A bit of damage there. That's some loose play. Double duelist. Duelist comp is so fast and loose and aggressive. Dropping down though, there's containment. Flash not ready for RPE. Jumping, dodging, weaving. An attempt at a trade with Buzz. Well, he's going to meet his match at heaven. It comes down to this, DRX. Nice. Swarming these positions. भाई पहला पिस्टल जीत गया ये। Nice यार। Nice. Completely blind. Bro, am I some prediction king, baby? Let's go, baby. Let's go. And that's massive. इतना clean prediction मेरा कैसा होता है? कभी-कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। Loud's team composition is going to be constantly. La. इस बार रेस लिया है। I think RB is double duelist. It's going to be the main focal point for that. नहीं उनकी साइड पे एक ही बस have we gained some subscribers? आपसे नहीं होगा। Holding on against the jet rays takes a lot. Bro, we have gained 40 subscribers. Let's go. नहीं 30. आप तो और बड़े निकले गढ़ में, आपसे नहीं होगा, रहने दो। Even put that potential of a comeback into the air. Mention of it. Expectations obviously on the shoulders of both of these teams. Dog's going to get some good info. So Stacks. Let's go. क्या info निकाली मेरी जान? Yeah, that's huge. Because one of the things that Loud does is take control behind this Viper setup and then force you to peek into them. भाई one tap मत खा लियो इससे please Deepak. Mako, potential to be overwhelmed. Flash deep. Gets the information, but contact play lurking up. Oh, nice. Strikes left him down. अबे इसको पता भी है left में है एक बंदा. Oh, nice shot. It's a reactive play. Stacks forced. Just bring him down with a spike out there. Nice. Pop flash as well clears some space for them. So By flawless. Now onto the DRX side, making him flawless. मिलने का stream बता दूंगा bro. Really nice. Mako. I feel like DRX in the last couple of maps, I'm including nice ones here, have actually been much better at shutting down Loud's economies. They finally found their moments to be able to punch back. And when Loud get onto the eco rounds, they don't look as dangerous.
Here you're going to see though that explosion. 200 needed. No. 300 subscribers needed for 487 guys. 300. I know. मेरे को पता है 300 लोग देख रहे हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया एंड फ्री मतलब उनको लगता है बहुत पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने में नहीं फ्री है Throw some uncertainty into the mix, but the boom leaning forwards. Fragment nade drops down, spam inside of it. भाई क्या भाई ये ट्रेड कैसे नहीं हुआ मेरे को जानना है यार angle watch for, will there be a trade? Buzz just getting that one pressure. वो देख रहे हो कैसे ट्रेड हो रहा है गेम And RB's left in a 1v3. He'll take a duel early against ASUS here and lose it. Loud responding very quickly. And despite the fact that DRX were ready for that hit to go through, their pull nade combo was still late. That's the pace that ASUS and Sadak are going to be playing with here. That's the tempo. They're so quick with their blast pack engages, with their dashes, that if you're anchoring a site, you can get overwhelmed very quickly. Caught with utility in your hands. चलो बाय जीतना प्लीज ये बाय मत देना यार बाय मत देना ये इको आ जाएगा You can see here how Zest and RB were designed to hold on to A. The knife shutting down a lot of the supportive utility. Grabs a ton of info in this round as well. 4 players found. Not holding on top of heaven, just lays down that fragment nade. But look, it's A ramp that's compromised. The job is going to be on Mako here. How does he play this one? Anti-flash drops down. Taking space once more. This nade is going to be causing all sorts of issues, and he chooses to back away. Snakebite though, but a utility traded out, making sure that nobody could really capitalize on that. Side ले रहे हैं वो heaven नहीं गए. This is where the fight takes place. Has to be the man of the hour. Dodge, duck, weave around. Nice. And helping him out. Nice. Flawless goal दे चड्डी गोल दे. Very nice hold. Very nice hold. Nice free one. Working themselves together, and that one was difficult. Loud's ability to explode forces DRX to use util early. Even though Loud were only taking a ramp, DRX have to give them the respect as if that could be a full hit onto A, and they use the pull and they use the nade early. So when Loud go for the re-hit, यार USB cannot be recognized कैसे भाई कैसे कहाँ लगाऊं हैं cannot be recognized हमने चूथड़ में लगा ली USB चार्ज होगा उससे. Read that very nicely, Stacks and the rest of DRX, and they hold on. But you're getting a glimpse into how dangerous Loud is. It takes a lot of preparation and very fast reactions. So, weaker weaponry. Loud have still been dangerous in the past when they've got Snakebite as well. That's laid down at the feet. Mako cannot see a bloody thing, but nice. Okay, once more Stacks there to bail him out. Bit of danger. Sagar, thank you for the 9 months. But Mako's there like a rock. Yeah, and it's let's just that go, constant let's go. making sure that they relieve the pressure, making sure that one player backs away, there's someone else to step up. Try karo. Flawless. It's a point. We didn't really bring up too hard, but in these best of 5s, it is a different element added. Your map pool is going to get pushed and pulled and tested. Absolutely true. Ways that it hasn't done before. Frenzy versus Phantom. And Loud have been a team that relies on their attack side split. Because of the way that their composition works, they've been bowling teams over on this half of the map. And I think back to the game against NRG. NRG had a decision to run an operator on their Astra defense that I thought एक बार देखें अपनी हमने जो इतना बेहतरीन अब लग रहा है ना DRX क्या बोलता रहा call to action दिया है याद रखना मैंने भी बोला था ये मैच instead the pace just bowled NRG over. भाई मेरे call to action देने के बाद एक बंदे ने सब्सक्राइब किया पता है एक बंदे ने सब्सक्राइब किया extremely sensible with how he uses his utility to help his other teammates. Analysis कर रहा है वो. He's become a very good site anchor, despite that not originally being his MO. He's going to get flashed in here and aggressive. There's no way you can come out with any sort of kills, and indeed ASUS does shut him down. Just after I'm talking about how safe RB usually plays. Zest and RB cook up a play like that. Throwing it into the mix. Thank you for the $5. एक बंदे ने सब्सक्राइब किया भाई. I think that makes sense as a mid-round informational play, but really early on, before you've got any idea that they could be in B main. And this opens the door for Sadak to double blast back in here with his ult. Showstopper. Zest miles away.
from getting his knife back online to try and cancel this one. And there we go, Dog. Satchel right up into heaven. The rocket, oh, it sings, but it doesn't quite land onto any sort of target. And now DRX make the play. They make the call. They want to try and contest this. They want to try and fight this. Sadak, well, is positioned 41 health. With the most to do. First one found. Crowd roaring. Nade is really good. What the भाई वो नेट से मर गया था भाई. भाई तुमने वो देखा सैचल से वो कैसे पीछे गया? Close for comfort for DRX, surviving with just one player, but Stax does shut that down before it got really dangerous. अब ये होगा देखो. And while the crowd are oohing and ahhing about the अब ए हिट करेंगे वो अपनी. I want to give crazy credit to how DRX are anchoring these positions. They are playing such safe spots and forcing Loud to overextend into them if they want a chance at being able to take that space. They had a player deep in B heaven, another player really safe in CT. नहीं देखा तो नहीं है मगर देख रहे हो वो दिमाग में देख रहे हो फ्लैश आया तो उसने exactly वहाँ पे डाल के वो सेफ पोजीशन पे चला गया. मतलब वो देख रहे हो मेमोरी ऐसे एक एक करके जब तुम 50 के होगे तो 500 हो जाएंगे. Vision by thank you when for this team was known as Vision Strikers and at the beginning of their time as DRX too. Challenge 3 for 10 gifted. What will be the race skill diff between Buzz and Sadak? Only difference of skills between both races. They dominated the defense. कितना kill का difference होगा? भाई exact number तो Presswell NH के भाई थोड़ा lower bracket upper bracket करो ना. चलो मैं perhaps just waiting for this big moment. What a time. 6 kills. 6 kills. 6 kills. Loud's map pick as well. They took them here. Thinking that they अगर guys प्रज्वल भाई इतने चैलेंज देने के बाद एंड में मेरे NHK के बाद अगर 50 गिफ्ट करेंगे तो कितना मजा आएगा ना. Let's go. If DRX deal with this double duelist composition well on split, that's exactly what Loud are going to be playing on Fracture 2. You've got to assume. How was the experience? Amazing actually, to be honest. अच्छी है. As long as DRX is going to hold on. Mouse निकालना है. Maybe there's still hope for them yet. Bode well. Early knife, the 0 point used towards A, and the Loud players looking to try and take that space in a more slow manner, contacting forwards. Hello. And this is the kind of round where Sadak is going to just try to get a feel for the protocols from DRX. If we dodge that knife on A, what is the response? म्यूट नहीं मेरा माउस चार्जिंग पे था पुश टू टॉप बटन है. ये बताओ वाह भाई बस हाय ना बोलना सिंगल डिजिट जीते 13 9 13 ऐसा नहीं अरे गन मिल गया ठीक है. Way further forward than the DRX players were expecting. क्या बोला था ए हिट होगा तुम्हारा भाई. Gonna be calling now for the back seat position, seeing what he can do for his team. See that cosmic divide, and Aspas is dealt with, playing so aggressive. कर दिया Jinx. Pushing back and forth. Mako just hunting for information. Spike still making his way to drop down, and that means Buzz. Let's rip this showstopper, but nobody else waiting for him. In fact, all the targets creeping and crawling behind them. I like this from Buzz though. Question is, can Sadak do something just as good to rip this one open? 12 bullets left. That's Mako. Small response. Satchel used to dissuade this one, pushing forward. Thank God, bhai. Listen, it got dicey. Raka, तुम्हारा बंदा मार रहा है. Marco. Making it 6-1. आसपास की तुम टॉगल म्यूट क्यों नहीं कर देते डिस्कॉर्ड पे कुछ की अगर माउस चार्ज हो रहा है तो. Push to talk is the pro streamer strat. But that is when your mouse is not charging. तुम माउस छोड़ के भी बैठ सकते हो ऐसे टॉगल म्यूट. क्या करेक्ट बट स्टिल मेरा माउस चार्ज हो गया. वो बोले तेरा पुश टू टॉक का बटन चेंज कर. Otherwise, it's very low. सब लोग ने ये सोचा कि शायद राका को बात नहीं करना. नहीं वो भी हो सकता है ना. No, aiming to break it, but it just doesn't quite work. मुझसे बात नहीं करना. नहीं अंकिता ऐसा नहीं है. ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं जिंदगी भर नहीं मिस करना चाहूँगा. I mean, their own Viper wall as well, right? So, bit of anti-synergy. Dog spots some zest. He's the casualty. There's a pull though, that's going to be used. Stax, does he still want to take this fight? That's the question. Backs away. By flag, they get picked in. A wide swing, repositions. Oh, Mako trying to as well help him out. The swing from heaven, readjust though. Nice, bitch. Nice, Stax, bro, you 3 kills for Stax. Huh? Damage being done. Buzz dropped down in the middle of all of this chaos. And the spike
Out wide, out in the open. It's ASUS looking to wide swing and take matters into his own hands. But Challenge 69 for 10 कोहली की Rotters के बॉयफ्रेंड का एडी नरेश भाई थैंक यू नरेश भाई ट्रिगर हो गए does he dare use them? अरे नहीं हो रहा है क्या विंग्स भाई सिंगल डिजिट से हारोगे क्या अरे विंग्स भाई नहीं हो रहा है क्या मैं खुद बोला DRX से मैच जीतेगा बेशरम भाई ये देखो पार्टी बदल लिया साला अभी क्यूटीज का क्या हुआ अबे ये मैप DRX जीतेगा लाउड 3-1 जीतेगा इवेंट ये बोला है मैंने बहुत सही खेला भाई वो Oh, looking so good. Readjusts to be able to take out the raise गरम player there, 8-1 Salah. I mean, that's just insane. ये 11-1 हाफ लग रहा है नहीं Seeker just 11-1 नहीं हाँ ये तो ये राउंड हो गया 8-1 हो गया and this is DRX looking so damn commanding. 8-1 हो गया तो 10-2 7-1 लगेगा knocking Loud once more on प्रज्वल भाई with a 5 gifted प्रज्वल भाई बोलते सबकी चड्डी खोलते प्रज्वल भाई thank you so much for the 5 gifted we appreciate that And on split, they normally have the vast majority of the trades. They're trading ASUS and Sadak, and that's how they get a lot of their kills. टाइमिंग भाई बिल्कुल जरूरत नहीं थी जाने की यार क्यों पुश कर रहे हो वहां पे rifle over as well. But DRX have still been very stable even in the As a silver player I can tell you they just drop back. That was a bad idea. Sadak no showstopper, that's a direct hit. Almost goes down to the full damage. यार अब तो HP भी नहीं बची यार अभी तो 2 health, smoke still to dissipate as well. वो अकेला बचा है RB trying to anchor. Look at the positioning. Is it going to be known? Tries to right there. Nice. Satchel. मत कर ओवरहीट मत हो अरे That was the last player alive. इसके पास कोई जगह नहीं बची थी ना जाने की उसके सिवाय Knows where they are. He had to win that. Wider swing. Will we see it? No trades. Let's go. Stacks तो लगातार हाँ stacks अच्छा खेल रहा है गरम हो गया इंजन डीजल का था पांडे भैया डीजल का था इंजन गरम हो गया A machine on split. This is his map. This is his home भाई ये territory. बहुत गंदा हुआ भाई I'm telling you, it doesn't matter how many picks that Loud are able to get early on. फ्लैश भी नहीं दिया बे फ्लैश भी नहीं किया उसने एम पे मारा एम पे अल्ट ऑन कर सकता था One side anchor, sometimes 2 side anchors, to play and dance around smokes, to dance around All the charge architecture of the map, and then flooding people in to try and help them, is working perfectly to counter Loud. 10-2 Yeah, break that भाई 0 क्या point. अच्छा Not a नाइफ है यार chance. ये मुझे Zest भी gets the सीखना है info. ऊपर जाता है ऐसे And वो तो ठीक है अंकिता उसके बाद जो एम से मारने होते हैं ना बंदे वो He डिफिकल्ट really रहेगा delays this A map अरे take. वो तो Currency not able to easy use है his trailblazer. Can't take that side of अभी the map. देखो It राखा slows मेरी everything आंखों का down मैंने from Loud. सर्जरी भी करा दिया तो अब मुझे है ना? और बेटर दिख रहा है But there's the snake bite and हाथ the का orb. कराना पड़ेगा ना हाथ से एम करते हैं क्या लेगलर एम तो हाथ से करते हैं लाउ लेकिन माउस तो घुमाना पड़ेगा ना एम Zest करना has been हाँ punished. वो Out हो of every जाएगा player on DRX, Zest has मत looked मत like मत the मत split. अरे मत रे ब्लरी दिख रहा है चेरीज भी That angle didn't exist before. हमेशा फाइट लेके मरता है हाँ बे बात तो ईगो फाइट ले रहा है Player to fall. But look how quick this is. भाग रहे वो And लोग Stacks आज तो nearly डांस has a करेंगे। flashback online. ये रीड बहुत अच्छी है I mean, the confidence to do this one. And look how Stacks it's बहुत अच्छी drifting है। all यार, of the B पे defenders दो back है। over towards B. B पे दो है। Buzz is ready तीन to हो गए help तीन हो RB गए आ whenever गया he स्टैक्स likes. भी Mako as well, going to be rejoining Mako the भी आ defense गया। now. But there are no stars left online. How does RB anchor without a smoke to play around? Astral form, nade at his feet, Trailblazer as well, and it's a flood retake, dropping down. Mako couldn't reset the aim, repositions though. अरे यार हल्दी अरे कंफ्यूज हो गए They all बस tumble भैया down. फ्लॉलेस हो गया उनका Desperate moves from Too Stacks. many targets बैक सीट गेम है 10-2 But a very good defense half next nonetheless. 2 round also DRX I जीतेगा mean, Loud have been putting up 7-8 in a more on their attack side so far this tournament. When यार we've ये seen जेस्ट थोड़ा तमीज से खेल लेना तो हो जाए So DRX have क्यों already लेना है got यहाँ a से great पीक इसको spot. And their economy is good enough that they should be able to buy for the rest of the map. Big ults to work with too here. Both teams have a Viper's Pit. कह रहा है रॉग भाई And split works so that the नेट defenders have गिफ्टेड map वन नीड control टू to बी start अर्न नो with. फ्रीबीज ठीक है Mako should be difficult to get through. It looks like he's going to use it in mid with a judge. लेट्स गो Maybe he's just going to लेट्स play गो the judge early on. भाई यहाँ के मारा इसने नाइफ जब वहाँ का नाइफ अच्छा है तो Right time.
नहीं पैसा तो होना चाहिए। नहीं डिफेंस में लेते हैं, पैसा है नहीं लेकिन डिफेंस नहीं पर उसने हाफ शील्ड भी लिया। Every time, God, that's good info. 2 players spotted. और प्लस आईडी भी है ना उसके पास। एक बात बताओ, जब उसका नाइफ ऊपर सही है तो उसने वहां क्यों मारा फिर से? अच्छा वो नीचे साइड से खेल रहा था। भाई अब हो गया, इनका गरम हो गया, इनका गरम हो गया इंजन। नहीं 9-3 करना है ना हर गेम। याद नहीं। And look what happens when the anchor isn't able to stay alive. When Zest falls, those players who are trying to flood in and help him, Loud can put the focus on the rotators instead. ये भी analyst. You contrast that to the round where they go towards B and Army stays alive for so long. Loud is still hunting for anchor players, so they can't focus on the players in B Heaven or CT that are flooding in. Subscribe. I would say Zest has got to adjust, but frankly, it's already late in the half. And I think DRX have done enough to be able to win here. Sure, another one on the board would be great. A 9-3 half. We've only seen 9-3s in the opening halves to these maps. So there would be some poetic irony to it. But I think either way, DRX will be very happy about this. मेरे इसमें ना पोल में 16,000 वोट्स है, ठीक है? कौन जीतेगा करके 1 पे DRX, 2 पे Loud, ठीक है? और परसेंटेज क्या था पता है? दोनों का 50-50। मतलब 8,000 ने इधर वोट किया, 8,000 ने उधर। चलो DRX पे कर दो फिर वोटिंग। राका मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। तुमने मुझे एक भी बार मैसेज नहीं किया, हाय अंकिता, हाउ आर यू, कैसे गया तुम्हारा सर्जरी? ठीक। I don't want to disturb you. नहीं मैसेज नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था because ले जी। हैं आसपास कैसे बच गया? Yep, not wasting any time. Look at this. Oh, maneuvers away. Nice stacks, nice. Contains that bit. भाई ये अल्टी खोलेगा? Overheat. Weaving his way around the pillar. Stays alive in this one. Less and 2 years. 2 smokes players with the most to do now. And it's cutting out the spike though, dropped up top. Fragment nade pushes it back. Ball on this one. Les moves forwards, picks up the spike. And uncontested. And where will be that trade? अबे ये देखियो क्या करने जा रहा है? क्या कर रहा है यार? ये क्या हो गया इसे नशे में क्या है? तू जा रहा है इसे नीचे देख के। ये नहीं करना चाहता उसको। Now going to be used. Why not? Throw everything at it. यो कूदा क्या? नहीं. To use it. वो POV change किया। Down. It's just. बिल्कुल जरूरत नहीं था वो करने का। Waves of that utility. जाना तो उसको रोक से पड़ेगा। 30 seconds contacting up, down, trying to clear it. He's got to know that RB is on that corner. They're both worried that they could have pushed through spawn at this point. Surely RB's got the clutch. Yeah, here's the timing for it. 2 years. Let's go. भाई वो Zest पागल है क्या? मान रहे RB। That wave of disappointment. अरे केओ को लग रहा है फेक क्लोन है वो। आरबी बेचारा उसके लिए आया ऊपर साथ में खेलने को, ये बोलते हैं मैं मार के आया। It is so great from DRX. क्या कर रहा है? ये क्या था? The clutching and the sight anchoring. So good from RB. This looks like a different team, and they've got 9-3. Come on. One more map. Bike curse मैं unactivate कर दूँगा। Yinsu is on the floor of a special interview. Curse. I am now joined by भाई ये कैसे बैठा है? streamer for Loud and also FRT. That's going to happen in a couple of days. Yes. बहुत गंदे thoughts आ रहे हैं भाई। ये रॉसी इसके टीम में खेल रहा है ना? The watch party is awesome. I mean, इसी की टीम में। especially like inside the crowd and everything. फाटू भाई यासीन, फाटू भाई लग रहा है बिल्कुल। Just chilling, yo. I mean, we did really good job. Just chilling, yo. I think we're going to recover this. Yeah, it's already a 2-0. और तो अपना सवाल कंप्लीट नहीं किया। FRT, I wanted to ask you. You know, in this crowd, there's so many Loud fans. क्या था बोलना? मैं क्या करता हूँ? भाई क्या गंदे लोग हो भाई तुम। कोई सवाल था।
They always like cheering. क्या गंदे लोगों? Interview देखो interview. They say like loud. It says like loud, 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 and then everybody's going crazy every time. Like they're like I don't know, smashing the thing and screaming, shouting. It's crazy. Can you guys teach me something? You know, if I want to be supporting loud out there, what should I say? The best word to say is vamos. Vamos! Vamos! Okay, I understand that one. Now, Tarek is actually right next to us. He's also captaining the show match. So, you got anything to say to him? You know, you're going to be playing against him in a couple days. I can't wait to play against him because I know it's going to be a great match. But I'm winning this game, bro. I'm winning this. Trust me, bro. I'm winning this game. You guys can't see this, but Tarek is right next to there, and I think he's responding to us. And lastly, is there anything you want to say to the players if they can hear you right now? Some words of encouragement, because they are 9-3 down. I mean, for DRX, I'm going to wish them good luck because Loud is coming really great. The changes on the roster, especially the coach as well, he's doing a really great job. मैं टिफिन में रोटी या आलू सूखे या फिर मैगी पर मैगी टिफिन में डाल रहा हूँ एकदम सूख ऐसा वो मगर का जो शेप टेस्ट ना टिफिन का शेप टिफिन का शेप में जो टेस्ट आता है उसके बाद आलू के परांठे हो गए बड़े तो फिर आलू के पराठे राका भाई का बचपन से शौक था मतलब आलू के पराठे का कड़ी चावल हो गया कड़ी चावल ले गए राका भाई कभी आपको बाहर के आलू के पराठे पसंद आए हैं नहीं के हाथ से ज्यादा नहीं कभी नहीं convert it on the attack side. तुम लोगों का फेवरेट नूडल कौन सा है मैगी पर ज़्यादा पसंद है कि ये टॉप रेमन करी मैगी हाँ मैगी क्या reluctant to get up in your face. वापस आते हैं इस पे Oh my goodness, that's a little bit awkward. Satchels. ये ज़ेस देखो HP देखो कितनी है इसकी कोई हील भी नहीं कर रहा उसको अच्छा हीलिंग है ही नहीं In the meantime too, Aspas and Kawanzine, this is what I'm talking about with this comp. It's so happy to get active on defense. 3 round जीतना है भाई DRX को क्या कर रहा है that they were going back through sewers, but they definitely heard. They heard us. I mean, elephant foot stomps. But from DRX's point of view, how do you expect that? In the meantime, Stax is the one who's also pushing up, getting himself into those favorable positions, and they take the timing. भाई ये क्या है भाई दीवारें मदद कर रही है क्या but this is where the backstab will really rain. Aspas spots one, holds it down. Let's go claim. There's the second and finally the third. Stacks so much to do. Nice shot, Ray. And just not enough resources. Backstab. Fantastic timing from Aspas and Kawanzine, but also. बेचारा ओमन कोई खरीद ले नहीं रहा पूरे चैंपियनशिप में is because this hit into A was so messy. I don't think it was necessarily Loud doing anything spectacular on their defense so much as Buzz with a bit of a beef trying to entry, the players getting distorted. This isn't a very bursty comp from DRX. It's not going to group up as 5 in A main and B main. Eco round आता ही नहीं bro, only every time buy. I would like to see them control mid. Go for A heaven. Run some splits, run some fakes. Make use of the fact that Loud doesn't have a sentinel that can give them information on the map. सही बोल रहा हूँ उनके पास बैकस्टैप देखने के लिए कुछ भी नहीं है ना DRX making the most of these eco rounds. Prioritize the ults for the next. Building up to their advantages. कैसा लगा लेकिन उसका नाइफ कितना मस्त दिखा ना Allowed to have any shot of trying to shut down. भाई एक बंदा कह रहा है the crowd is helping with timing. अंकिता फाइटर भाई ने जेट के अलावा कुछ देखा है ऐसे हो सकता है क्या वो ज्यादा चीख रहे हैं तो मतलब बैकस्टैब या कुछ तड़कता ऐसा कुछ And Aspas has not been pushed away by this angle. Marshall in his hands is deadly, especially when there's no armor. फर्क तो पड़ता होगा भाई ज़ेस को देख हाथ में फ्लैश लेके आया Farming up to that blade stroke. Scope भी नहीं खोल रहा ये क्या शॉट था लो एस vamos ना स्कोप करने की जरूरत ही नहीं है इसको एज दे रहे ओ दे या नहीं अरे भाई एज चुराया भाई वाइपर दे रहा था स्काई मार के गया और वाइपर वहां पे खड़ा होके देख रहा है बोले ये क्या percentage play, you know, Aspas has already got his ult online. Yeah. नॉइज कैंसिलेशन है कद्दू का नॉइज कैंसिल होता है वहां पे जाके हम खेले में हमें पता है Of all the ults to get आवाज online आती for a है bonus.
क्योंकि वो जो लाउड स्पीकर होते हैं ना स्टेज पे उसमें से आवाज आती है सारी कास्टर्स की. You're putting ASUS in a position now where if he plays aggressive in B main and goes for some kind of push, maybe in mid, you know, there's so many places where he can get onto sight lines early and try to challenge these players from DRX. So it has to be a clean round win for DRX. Don't let this bonus get out of hand. Got that full investment. You got the rifles. Boombot. भाई वो देखो कहाँ जा रहे हैं? Spots the one. Nade's going to be used, and but ASUS is pushing. Yeah, Mako pushed all the way back. ASUS is pushing. Trailblazers use this. Good discipline. Tags him. Stunned up. Has to use the dash to get out of there. Yeah, that's good. So from DRX's point of view, they've managed to take mid and push ASUS a little bit away from B main. They have given up the whole of A though as a result of that. And look at those loud players in A heaven, they're only looking at vents. They don't care at all. I mean, now they've just started to pay attention to A main again because there's a timing where DRX could have re-cleared. Oh, a bungle from Stacks on the flash as well. Doesn't even threaten like they could be going back in this direction, but still, Loud for some reason going for the gamble stack on A. Yeah, moving over, they seem to anticipate it. The wrong read. It's a, incorrect gamble. Diligence there from DRX, making sure that they clear all the necessary angles just in case. भाई ये क्या प्लांट है? कहाँ का प्लांट है? Heaven. 5v5, the full Yes, retake. Heaven plant. And Buzz. Oh my goodness! हो गया, trade हो गया. That's exactly what his team needs. So using the Seekers to push forward a little. Pushing them back. भाई ये Zest का अलग भी, Zest full throw mode में है, Buzz 4 there. Satchel play, flash. Connecting onto the back, but eventually going to be meeting him with that rifle fire, and it is Mako, Mr. Consistent. Mako! ये Zest throw mode में देखो, throw करेगा. Kozine. Close to the corner. Great positioning by Zest there. अब बोलो आवाज नहीं Lovely little है. अरे आती है बाबा आवाज, मैं मजाक नहीं कर रहा. Delay रखते हैं, delay नहीं होता. वहाँ पे delay नहीं होता. Really well played, very disciplined. One of the things though that I'm slightly concerned about with how DRX are playing their attack side, they're not creating much serious presence towards A. They're relying on this Viper wall kind of setup from Mako, but Loud are playing it aggressively at the beginning of the round, and they know that no one's getting back over there. And the other part to this too is, RB is really safe in B main. So if ASUS decides to get aggressive in B and hang around there for a while, DRX could run a B split without ever clearing garage. So a couple of things where you can definitely see an opening for Loud to start getting back into this map and controlling the game on their defense side. इस round में And it all बहुत comes down to how depend aggressively they play the outsides, the extremities of the map. It's going to come down to this, isn't it? Gun round. An operator in the hands of ASUS. Deep Trailblazer. Spots the one, and guess what? ASUS, of course, is taking it. He knows where it is. And this is dangerous for Mako. Juggle peek, fires, dash enabled. Snake bite to try and force the angle up close. भाई कहाँ जाके मार दिया भाई? Buzz bails him out. There is a trade. But did they anticipate this? ASUS still there. 2 years wide out in the open. That's going to be the response. Still dashing right. Arre bhai. Relieving most of that one. There was a pull. Great assistance. How do you salvage it if you're DRX? मुश्किल है ये. बट दो बहुत लो है, मतलब अगर दो निकाल पाए तो दो बहुत लो है. From RB. सादक और ये. Pull back there, making it look like they could have gone in, but the spike again is just wide out in the open. नहीं है, कुछ नहीं है. One little peek from less, and they know there's no threat. Boombot spammed. Almost every angle watched for. It has to be this site. That's where it's going to be landing, and it comes down to this crossfire. Impossible to break. Lovely by RB to whip it around and somehow return the fire. The players are weak though. Sadak in the danger zone now. Smoke popped up, but time pressure mounting. 11 seconds. Tries to go for the wider swing, but lovely patience by ASUS. गलती से भी headshot लगता ना हो. DRX are still grouping up really heavily on the outer sides of the map. I haven't seen them use mid great apart from the previous round. चला गया भाई. Look at the A pressure. I mean, the Loud's comp completely controls A main. वो रेस दीवार में मुंह क्यों दे रहा है? Whether it's ASUS pushing aggressive with Kawansine, or whether it's that kind of suck nade combo that they've got going on the opposite side of the map.
they नहीं मेरे को outer wings. वो वाला अच्छा लगा जिसमें ऑस्ट्रेलिस जीती थी DRX need to recognize. ना वो वाला स्टेज अच्छा था जिसमें ऑस्ट्रेलिस जीती थी ना, याद है वो वाला? ऑस्ट्रेलिस वो बीच में वो ऑस्ट्रेलिस नहीं, वो सेंटिनल्स, ऑस्ट्रेलिस बोल रहा हूँ, सेंटिनल्स रेकविक जीती थी ना सबसे पहला वाला। हाँ वो मस्त था फर्स्ट वाला। आइसलैंड हाँ पिछले वाले VCT की एंट्रेंस अच्छी थी वैसे। लाउड ही जीता था पिछले टाइम। हाँ जब सेंटिनल फर्स्ट वाला आइसलैंड वाला। अच्छा फर्स्ट वाला। रेकविक। They're letting an opportunity slip away from them. And that dominate करता रहा। अरे यार गलती से यार CS was love macha of picking up a trophy at this event. Any chance of pulling this back? ज़्यादा back चला गया। Getting us to 5 maps, getting the first Valorant reverse sweep in a BO5. बैंगलोर में कहाँ मीटअप बताएंगे मनाल भाई? जरूर बताएंगे। An opportunity like you said, Instagram पे बताएंगे भाई 10-7 close हो गया ये तो। Like कर दो सब bit of firepower behind this one still could be dangerous. नहीं तृप्ति तो मुश्किल है। 2 के बाद बाय है वैसे। Loud on the right foot now. At the end of the day, the pressure is still on DRX to be able to clinch the maps, the rounds that they should. That's a fast play. Sancho in the face and offsetting the weaknesses of the Stinger if there are many. And this is where I was talking about earlier. RB plays very safe, very passive. So they spotted us, so now they've got to go for the crunch. 13. Oh, for अरे ले लिया, nice. भाई हो गया बे तृप्ति अंकिता। Too many chances. The players swarming him, approaching him from behind. But this is so much better executed by DRX. And they've avoided that operator. Yeah, using the op. This round is अरे तो flawless हो गया अंकिता। Off the rim to set them up for the opening kill. The crunch on Aspas. Every part of this was lovely. RB even getting into a slightly more aggressive position in B main. अंकी अगर मैं बोलूं कि मैं this is what they talked about during the timeout, ये राउंड जीतेगा क्या तू भरोसा continue running this kind of round, Loud are going to be under भाई ये थ्रो करने की बात है फ्रेंड देख कहां से पीक ले भाई शॉर्टी से कहां पीक ले रहा है भाई जेस्ट कंटेंट के लिए खेल रहा है राका उसकी टीम जिता रही जेस्ट बोल रहा है मैं कंटेंट दे देता हूं भाई क्या भाई हेलो वाह भाई गन की isolation Stack shuts it down along with the cheers of the crowd. And this is quite a weird spot actually for DRX because they've saved them. तन्मय भाई एक YouTube शॉर्ट से बात आई अब जब से रेवेन्यू शुरू हुआ है तो YouTube शॉर्ट्स का जो वो है रीच कम क्यों हो गई? ये नहीं पता मेरे को। रेवेन्यू आता है क्या YouTube शॉर्ट से? नहीं आता है, रेवेन्यू मॉडल इंक्लूड किया उन्होंने बट रीच बहुत कम हो गई। February से शुरू हुआ है रेवेन्यू। Look at how rough the force is from Loud. That is rough. कम हो गया क्या? Guardian, no armor judge from ज़्यादा पेलने लग गए होंगे ना? I got a question why they're even bothering to buy. नहीं आ रहा होगा रेवेन्यू शॉर्ट। Why not go for the half? Not wanting to play for that OT, it seems. Well, thank you the responsor. Into this one, maybe with the ults online. उदय भाई कहाँ जा पहुँचा? Again. So much confidence to be able to push back Mako, even what timing? Hello? With a rifle, Buzz could have got something done there, but भाई ये क्या timing थी भाई? I mean, Aspas was very fast on the reaction to dash out. I think he knew that was coming. Grouping up into this crossfire. ये one tap का आएगा कोई ना कोई Aspas. Slows down DRX so much. Cosmic Divide though. Rips its way across. Now you're seeing it. The showstopper clearance. It's there. हाँ पर ले लिया Aspas. Rocket exchange. And a life for a life. I'll take that. Into the site now. Still. ठीक है, Aspas was the only one with a big gun. Relenting out here. Looks like Loud wants to play this. But okay, watch down. Zest this time. His turn with the operator. अरे KO ऑफ चला रहा है. So he has managed to approach his way into this corner, but not the greatest weapon for the job, and no armor to work with, or speak of 87 health. It's looking like DRX reaching that map point. अपना बंदा भी तो समझ critical for them. I think Sadak probably wants to go for this, and the other two should save. Hello, though. Two ways with a pick. मैं अभी Oh, nice shot, Ray Mako. Do that. 2 years. Right through the wall. Smoke drop down. Time running low, though. Anything to offset this, pull it back, has to tap it because of the pull. Pulling them in. DRX should know that's enough utility used. Enough भाई कितना बिल्टी है ना लेकिन pulling them in जब भी time में रहता है. Map point for DRX. Let's go DRX.
And that timeout so crucial between round 16 and round 17 to get themselves back into the headspace to win here. Loud are going to respond with one of their own, but it's a horribly broken buy. They made their last gamble. The economical gambit. Loud ka favorite map round 18. Throwing caution to the wind. Now this looks all but over. DRX with 6 opportunities to take us to map 4. And I think so far, you should be fairly confident that DRX can do something similar on the Fracture, because their dismantling of the double duelist composition, despite the fact that ASUS has 21 kills, is pretty gorgeous. They stopped all of the follow-up. Flood retakes were good. Here on their attack side too, they're playing some of the slower rounds, controlling the map a little better. Yes sir, why not? Signs of life. And listen, Josh, I'm happy to see it. Was thinking for a moment we were going to be seeing a fast 3-0. Bit of a repeat of maybe just the blunder the DRX were facing last time they played against Loud. But now they are one step away, securing split, extending that play deeper into the series, where it gets more so into that unknown, more so onto Fracture, possibility, the potential to really push Loud to the limit. And I don't think that I've gone to other quick states. 3-0 would have been a disappointing performance here. You know, it would have been incredible to see Loud looking dominant heading into the finals. But I'm all aboard for a close semi. And for DRX to keep their hopes alive of making it to a grand final and having a chance to lift a trophy. No time wasted with this one. Look at the space that's going to be taken. B main controller's theirs, and RB, he's got the stars in his hands, starting to lay this one down. Double satchel. 2 years. Timing's in though, and the judge is there. Spam though. Counterplay by the rifle. Drops down. Less needs to be dealt with. How does he claim 2? Inconceivable almost, but down to that 2v2. You have to do the most here. The weapons aren't too good for it. Seeker's committed. Dropping everything into this round. One down to the ground here. Start to split the site up. Is it going to be that crossfire? Zest? What is that? Taking a fight to them. Pop flash play. Pulling them in. Leaves it up to RB. Can he perform the slam dunk? A tap. Baits out the pull. Still plenty of time, but one of the players has got to hold this, and the rifles are in the hands of the Loud players. It just looks impossible. It looks just impossible. And ASUS pulls it off. अरे 3 बहने भाई similar. Have to get through. Because their weaponry was awful. They still managed to pull it off. Having said that though, Brent, only keeping one player alive, oh, that's so good, the 2K from less. But like I was just about to say, keeping only one player alive there means that their economy is still in a rough spot. They're going to have to keep pulling out round wins, and some of them a little more cleanly, in order to get their economy back into a level footing. Get it back in that manageable state, but again, similar tale to the first 2 maps in terms of there being no room for error for one side. Foot and that is just spam. I don't know what the read. Yeah, what is the cue of that? Not too sure, but it catches. No idea. Counterplay on the other side of the map as ASUS and Cohen take A away and make this a bit more comfortable. Having said that, they've got 3 players leaning on the A side. What is this clash? Pushing forwards, ASUS wins the fight on 8 health. But Stats has got to call a reactive push into B right now. He knows there's max 2 players there, and Tui's put under incredible pressure. Indeed he has still. Will a headshot be available to him? Side cracked open, wide, less. Abhishek, thank you for the responsor. But now you're playing right into this Viper's pit. Still 3 players available for Loud. Dropping down already. ASUS with the knives. Flash down, Kawazine finds time! Mako found, no more pit. Crossfire. Oh, shot, yaar. Buzz for the ace. Will it be the finalization? Will he be the finisher? Less, so much to do. And just buying time with a showstopper. Pulling it off the clock. RB, what a finish. Raka bhai. DRX are not done yet. Raka bhai,
क्या मैंने बोला कि DRX जीतेगा और क्या मैंने 13-7 का प्रेडिक्शन दिया? I just want to know यार. How do I do such a good prediction? How? You don't. अबे तुम पार्टी बदल लिया साला. हाँ? नहीं मतलब एक कोई टीम मैच में स्ट्रांग है वो भी नहीं बोल सकता. This squad, now tempered by experience, have got more to give. Chetan bhai, thank you for the 5 gifted. Just going to be another opportunity for Loud to close things out 3-1. The double duelist were expecting to come back out and play again, but it did not work here. A real test to DRX squad, the history of this team dating all the way back when they were known as Vision Strikers. They do not want to let that opportunity slip. They've never been to that grand finals of the global events. That's what they have been hunting for. बहुत ही गंदा खेला वो. Close to being able to fight back. 3 kill थे उसके अभी थोड़ा ASUS is still putting on insane performances, by the way. 8 first bloods, 23 kills. Matter. They shut down everybody else. It's the game plan of DRX that was just far too good. Can't overcome it. That's going to do it for this map. Do not go anywhere because you do not want to miss the rest of this series. और बताओ गाइस क्या चल रहा है. एक बार चेतन भाई के लिए प्यार हो जाए. चेतन भाई के गिफ्टेड मिले हैं अर्थर, मेहुल, राजू, समीर एंड ड्रीम को. कांग्रेचुलेशंस. आप थैंक यू होगा. प्रज्वल भाई थैंक यू फॉर द 10 गिफ्टेड. Thank you Prajwal bhai for the 10 gifted. Really appreciate that. Love you. Prajwal bhai going huge. I miss Bind. एक मैप था जहाँ बिंग्स अनबीटेबल था, हटा ही दिया. अनबीटेबल था क्या मतलब? बिंग्स बहुत अच्छा खेलता है ना वो. बाइंड बहुत स्ट्रांग था. हाँ. कि CS:GO ने 10 साल के बाद थोड़े टाइम पहले प्लेयर बेस का रिकॉर्ड तोड़ा फिर से. हाँ. और मैंने ये भी सुना है वो हर महीने 50 मिलियन या हर महीने शायद 50 मिलियन प्रॉफिट कमाती है फ्रॉम स्किन्स. हेलो भाई थैंक यू फॉर 40. CS:GO. इंडिया में तो पूरा डेड सीन चल रहा है, बाहर तो फुल बूम बम हो रहा है अभी. भाई इंडिया में जो हॉगवर्ड लेगेसी है गेम वो एकदम बिल्कुल डेड. बिग्स भाई आपकी हाईलाइट पे आया कुछ? भाई कसम से बोल रहा हूँ एकदम तिल लगाने का हाईलाइट. मेरे को खेल के बहुत मजा आया मैच. नहीं भी बोल. क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं, आप डिप्लोमेटिक आंसर कर रहे हैं. आपको व्यूज आए इस पे कुछ? पता नहीं, मेरा पहले इसमें 20 थे, बाकी ये ट्रेंडर इतना चोमू है कि 3 साल से मेंबर है फिर भी बंचों की तरह स्पैम कर रहा है. रेड ड्रैग को तोड़ दिया बाबा. ब्रिजेश भाई थैंक यू सो मच फॉर $5. मेरे को लगा था ब्रिजेश भाई हर $5 तेरे को कितना टाइम लगा था खत्म करना? मिश्रा जी थैंक यू फॉर द 5 गिफ्टेड गोइंग ह्यूज. आई थिंक मेरे को लगा है 27 या 8. मेरा 22 आवर्स बेबी. क्या स्पीड रन किया क्या तूने? नहीं 26 मंथ्स. मतलब जो मेन क्वेस्ट है वो किया. Thank you so much Mishra ji for the 5 gifted, Chetan for the 5 gifted, and जब भी गेम कंप्लीट हुआ ना मैंने बॉस को मारा तभी मेरा क्वेस्ट का 50% खत्म हुआ था सिर्फ. अबे मजा नहीं आया ना, मगर वो बॉस वैसा नहीं था. मेरे को मजा क्या नहीं आया मालूम है कि मैंने बॉस मार दिया लेकिन मेरा फिर भी 50% गेम बचा हुआ है लेकिन स्टोरी खत्म हो गई है. समझ रहा है? अगर तेरे को अपनी स्किल्स टेस्ट करनी है ना तो सकीरो खेल भाई. वो है गेम, स्किल टेस्ट होगा उससे तेरा कि तू गेमर है. इजी गेम्स में मैं नहीं. अच्छा इजी गेम्स नहीं खेलता क्या? नहीं. हाउ मेनी मेंबर्स डू आई हैव?
क्योंकि मैंने देखा है ना सौरभ भाई अगर राउंड ऑफ आप मेंबर बनोगे राउंड ऑफ के लिए तभी देखेंगे यू वांट 3 चैनल कांग्रेट्स राघव भाई थैंक यू प्रज्वल बाय मेरे को वो फेस देखना नहीं है तेरे को पता है वो वाला गेम है ना मटके के अंदर बंदा बेंच झूलता रहता है ऊपर तक हाँ वो वाला गेम भी मैं आधा घंटा खेला था माँ कसम अनइंस्टॉल मार दिया मेरा मटका कभी भी टॉप तक नहीं पहुंचा हाय बिलाल वो और वो क्या है वो क्रेजी मारियो अनबीटेबल मारियो कुछ तो है ना मारियो अनफेयर ये वाला वो मैंने 10 मिनट खेला 3 लेवल तक आ गया उसके बाद मैंने बोला बस भाई हाँ ज्ञान देने से पहले तू तो कंप्लीट कर ले नहीं करना इससे कुछ गेम ऐसा भाई तोड़ दिया भाई अरे ऑलमोस्ट हो गया रे कंप्लीट ऑलमोस्ट आई थिंक सिकीरो एक ऐसी गेम है जो एक्चुअली मतलब तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और मेमोरी मसल मेमोरी ना हाँ उसको एक्चुअली बहुत वो करती है टेस्ट सौरभ भाई थैंक यू फॉर द रिस्पांस उसमें भी वो है बे मैं तेरा देख रहा था ना उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना पड़ेगा समझ रहा डिफ्लेक्शन इज द की भाई बस टिप्स एंड ट्रिक्स ये बना के मारो वो बना के मारो थोड़ा बहुत है उसमें एसेंट गेमिंग थैंक यू फॉर 20 ये एल्डन रिंग का कैसा है एल्डन रिंग थोड़ी इजी है सेकिरो से बट वो भी है मजेदार गेम But who very much needs to be accounted for as we move forward in the series because even in that loss he was dropping some significant numbers. Also patience with us. 487 में कितना बाकी है bro अभी 290 subs. Who knows? Maybe I'll be wearing this bad boy. I want to go back to what you were just mentioning on Aspas. That guy was still out of control and it's kind of insane. By almost बहुत बढ़िया गेम है बहुत same day by he was 8-1 in first skills to first test. Getting over it. And I love that call out because Mimi it all started on the defensive half for DRX. It was Mako and Stacks holding sights. Yeah, thus far we have not really seen this double duelist, double dive competition tested on the attacking side for Loud. But DRX did such a good job at shutting down the side executes, and those two players you call out were fantastic at it. Both Stacks and Mako would kind of initially give space that double dive, then Stacks बहुत अच्छा खेला है together and found so much value in shutting down these assets, which was the brunt of the game plan for Loud. It's like countless 1vx. हाँ? तुम्हारे दिमाग में वो कौन सा रीजन या कंट्री आती है जब कोई तुमसे पूछे कि ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? It will be UAE रीजन में कौन सी है वो? रीजन ना बेसिकली. हाँ UAE रीजन. गलत मेरे को भी नहीं पता था. यूएस में होता है और रशिया में. ये क्या है यार? प्रोडक्शन क्या है राका जाओ थोड़ा बैक टू स्कूल पढ़ के आओ. क्या यार राका भाई यार क्या यार सीरीज नहीं इसने क्वेश्चन ही गलत पूछा. इसने क्वेश्चन पूछा कि आपके दिमाग में क्या आता है राका भाई. मैंने बता दिया क्या आता है. इसने क्वेश्चन थोड़ी पूछा कि क्या है. क्या यार फाटू यार मेरे दिमाग में भी वही आया था. देखो इसलिए तुम पोस्ट नहीं थे वीडियो पे. मैंने उससे पूछा कि आपके उसके बताने से पहले सबने मैंने एकदम बराबर पूछा. एक फ्री मेंबरशिप तो मैं भी डिजर्व करता हूँ भाई. अब्रानिल भाई 159 है ब्रो जस्ट 159. बाय द वे ट्विच पे अगर सब करूँ तो गाइज अगर मैं ट्विच पे यहाँ पे जाके ये रिएक्ट का क्या नाम ऑप्शन है. अच्छा इसमें सब का नहीं है. ट्विच पे सब्सक्राइब करने का सीन है 100 रुपीज एंड तुम सीधा जीपे वीपे से कर सकते हो. गाइज एक मेरे को बात बताओ ऑनेस्टली बताना ठीक है. ऑनेस्ट सर्वे गाइज ऑनेस्ट सर्वे अगेन ऑनेस्ट सर्वे नो जोक्स. चैट में कितने लोग हैं जो मेंबर इसलिए नहीं बन पा रहे जस्ट बिकॉज वहां पर एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत है. मेरे को ये बताओ अगर यूपीआई होता तो तुम मेंबर बन जाते. आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू. ऑनेस्टली बताना फॉर नॉन मेंबर्स ओनली नॉट मेंबर्स नॉन मेंबर्स ओनली. क्रातूस थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर. वेलकम बैक. अच्छा यार असेंट देखना चाहिए हमको. डिसाइडर ना. हाँ जाना चाहिए डिसाइडर पे भी यूपीआई है नहीं मेंबर पे नहीं है. मी
मतलब तुम पक्की बात बोल रहे हो कि अगर यूपीआई पे आया तो आप मेंबर बन सकते हो? 159 पे आपको महीने भर का एंटरटेनमेंट मिल रहा है यार, फ्री में। मतलब फ्री में नहीं, 159 में, वो भी डेली ऑलमोस्ट। Tatus bhai, thank you for the 9 months, man. I think there's a lot of similarities to Fracture play as far as how you want to play in chaos. Sorry. Yeah, no. Here's Bro, मेरे को इसका prediction लग रहा है 13-12 going up against Talon. Do we see a 13-11 readjustment? Everyone's DRX. begging to see RB back on the neon. I UPI से नहीं कर myself सकते am भाई। looking for, and this is a trend in the right direction. Buzz coming out with the KJ. No way. Prime Gaming Agent Select continues to throw us some curveballs here. I think it's going to be the neon. They're making that pivot. This is going to be really interesting because Loud is going back in with the same game plan. Another one of these double dive comps. It got shut down last map. But for DRX, this is something that they have played in history but have not done just yet at this tournament. And it works really well. नहीं, तन्मय भाई, एक honest question आपसे। ऑनेस्ट और मेरे लिए है कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब ऑन 2023। हाउ you stream less and upload more videos. Stream less and upload more videos. Like कितना frequent होना चाहिए था? मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था वैसे। जितना frequent, see, I think streaming is great to build a community, but growth comes from videos. I think more videos, और जितना तो वीडियो डालेगा ना उतना तेरे को समझ में आएगा कि क्या टाइप का वीडियो चलता है. And it might also be that you grow on a different channel. This could be a streaming channel and you grow on a different channel. But I think growth comes through videos. And it doesn't necessarily mean gaming videos only. It could be any type of videos. जिससे growth आ सके. क्योंकि देखना यार YouTube algorithm देख के समझ में आता है ना यार क्या टाइप का videos recommend होता है और. That is what I think is the strategy for growth. So more videos, less streams. You mean to say? So it's not that more videos, less streams. जब 2020 में जब मैं मतलब pandemic में चल रहा था मैं हफ्ते में 4 वीडियो plus daily streams कर रहा था मतलब दोनों एक साथ कर रहा था. अरे फ्लीट आ गया मेरे चैट में. हाँ तो मैं दोनों कर रहा था. तुम सही कर रहे हो. देखो तुम अपना स्ट्रीम करते हो फिर तुम डे टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो. सो यू आर ऑन द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक. बट आई एम आस्किंग कि अगर मैं दिन में वीडियो अपलोड करूं रात को स्ट्रीम करूं इज दैट हार्मफुल टू द चैनल? इतना मतलब वो तो नहीं होगा कि ओवर कंटेंट हो गया? No, it's not necessarily harmful. But if you are making videos of only the stream highlights. No, not stream highlight. It's राका देखो मैं तुमको बताऊं मेरे को ना YouTube इसमें बताया था एक बार चैट में ठीक है कि तुम अपने चैनल पे से 24 आवर्स में 3 से ज्यादा नोटिफ भेजोगे ना तो YouTube नोटिफ नहीं भेजेगा बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पैम देयर व्यूअर्स. करेक्ट. क्योंकि फिर अगर किसी ने अपने फोन में YouTube का नोटिफ बंद किया जाके तो दैट इज बैड फॉर YouTube ना. I think simple एक रखना रखा. I think once a day your audience should get some content from you. Either you stream thank you for the member or you upload a video. Okay. That's how I would look at it. दोनों भी कर रहे हो. It's not a problem because you are a daily streamer. But 3 से ज्यादा मत करो. Like तुम उसमें फिर तुम और एक्स्ट्रा चीजें पोस्ट कर रहे हो. शॉर्ट्स भी डाल दे ये भी डाल दिया तो मतलब वो डिसाइड करो. अगर आज शॉर्ट्स है तो कल ऐसा लाइक जिस मेक श्योर 3 से ज्यादा नोटिफ्स 24 आवर्स में नहीं है. ओके अंकिता ट्रूथ टू बेटर हमेशा से. और एक और ग्रोथ के लिए ये भी कर सकता है कि कैरी को पूछ. यार एक्चुअली कैरी बहुत बिजी हो गया है. ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी और काफी सही चली थी मेरे लिए. मैंने भी अपनाई थी मतलब अपनाई नहीं थी अपने आप ही हो गई थी. हाँ बट आई थिंक वीडियोस आर द वे. मतलब अभी क्या मैं कहना चाहूँगा क्या अलग आउटसाइड ऑफ गेमिंग और क्या अलग अलग टाइप का वीडियोस बना रहे हो? अभी तो आउटसाइड ऑफ गेमिंग इज मैंने नई सीरीज शुरू करी है. हाँ वेयर आई अपलोड मतलब एक 2 क्रिएटर्स को बुला के एक लाइक स्कूल जैसे 5वीं पास से तेज देखा आपने देखा होगा. हाँ वैसा शुरू करें. अच्छा बाय द वे DRX 2 नीला इस पे चाहिए तो अलग से बात कर सकते हैं हम लोग. हाँ बाद में बात करेंगे इस पे. हैप्पी टू हेल्प. लेट्स गो बाय फुल सपोर्ट. जो भी पता चले मेरे को WhatsApp कर देना. Do you do something aggressive?
You can certainly push the Neon out of tree. Because that's why मैं नहीं ले पाता मैं north side crunch. मुझे भी There's a बुला lot लेना of जब ये different बात things that you can look at. Did they even opt into तेरा buying ट्यूशन as कितने बजे well? खत्म That's होता what I'm wondering. So there's only 2 players surviving. Certainly looks like RB's going to go for 3 this, PM right? to 4 PM ही है मेरा ट्यूशन Fast play now. It's going to be that clash. Flash over the top, stun as well. और शाम को डांस Supplemented, करती but है pound for pound. Going to be और fine. ये भाई Fight to be taken. You just don't quite have the range of that one, RB. Less. शाम को मैं वीडियो Double गेम्स swing, खेलती double हूँ face, but a lot of utility being used now. DRX half by कैसे है? Loud. कुछ भी बाय नहीं है बोनस इनका है ना? बोनस फुल बोनस बोनस है Actually, पहले all दो the जीते shots ना on stacks, scaring them off. यार मैं पीछे चल रहा हूँ सबसे Zest goes to grab some information on the north side of the map. भाई ये कैमरा एंगल तो A है decent position to still try and fight वैसे this. मुझे एक Drop main, जेन्युइन it's a fast ओपिनियन reposition. पूछना है यहाँ They पे take जितने control. लोग हैं That's going to be the सुन name of रहे their हैं game, कि man. Wow. मैं मतलब what do you think of me if I Do it, was to hopefully drive no a car? more Would I be a good driver? Casino fight taking place. I think Our तेरे team को winning it पहले out, तो and the लाइसेंस rifles लेना really do पड़ेगा ना just come out on top. हाँ मतलब मैं ड्राइविंग gonna be the क्लासेस difference चालू maker. कर रही हूँ so would I make न्यू it मेंबर वेलकम कर दो or शुभ भाई थैंक यू फॉर द मेंबर यार कौन शुभ देगा गुप्ता मम्मी पापा कोई साथ बाजू में बैठा रहेगा कि तू अकेली रहेगी Any कि damage here is good for वैसे Buzz. तन्मय भाई द ड्राइविंग मोस्ट क्लासेस तो इनोवेटिव ड्राइविंग सिखाने I वाले agree. उधर Really, when you're looking at their defense side, it's about finding those opportunities to get ऐसा up and get सवाल aggressive. if you have to ask this question it means you won't drive well. I mean हाँ, I वही think When you're looking I would be हेलो very हेलो good at driving. आवाज आ रही है आ मेरे को रही है। अभी तक Then why you're आवाज asking? नहीं आ रही, एक सेकंड I want to see what others' opinions are on my बोलो। skills, I've never seen you which drive. are so ये far zero. But ग्रेट ड्राइवर तो बोलो मत अंकिल, लेकिन आप ग्रेट पैसेंजर हो, एकदम शांत बैठ के फोन पे हाँ वो इम्पोर्टेंट होता है पैसेंजर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार. ग्रेट पैसेंजर. What's going down to the spike, so denying any potential. हाय गाइस मुझे आवाज आ रही है पाटू, अगर मैं तुम्हारे साथ मैं पैसेंजर सीट में बैठना Backside, quite easy to climb up those orbs anyway. We'll see if they aim to do भाई that. आईफोन तन्मय भाई से मैं पूछो क्यों कि चला आपके 5 मिनट कब होंगे भाई रोबो भाई पूछ लिया तन्मय भाई कह रहे वीडियो क्या बात डालो चल अब रही है? बैठ के क्या मैं सीन और कौन जीतने ड्राइव वाला की है? बात हो रही है. अरे हम कितना भाई बैठ अब मेरे को भाई तुमने बोला है लाउड का मैप है players. हम्म And one of the risks actually of having less play killjoy तो on this अभी map is that it's quite easy नहीं to नहीं get मैं तो crunched. तब से स्ट्रीम देख रहा था आपकी. I wonder if हाँ, RB's क्यों going मैं to नहीं कर रहा हूँ try कह रहे? to push out भाई a horse here, sexist, ठीक but है. it doesn't look नहीं नहीं मैं sure. बिंग्स की भी देख रहा था. बिंग्स को बहुत सारे मेंबर्स गिफ्ट में मैंने देखा वो मेरे जान पहचान वाले ही है जिन्होंने किया. वाओ डूड Of all this मैं space, बिंग्स कितने मेंबर आ रहे हैं यूफो स्ट्रीम पे? तू भी Pushes all the way करेगा through 2 onto the 3 side. गिफ्ट Guess तो what? ऐसे Nobody मुझे कोई playing. प्रॉब्लम Look at the नहीं. natural setups though, Brad. As soon as this फिर alarm जब goes मैंने देखा off, बिंग्स की कमाई हो चुकी तो मैं चला गया छोड़ Mako's के. just got his ult off the back तन्मय of भाई that kill. गिफ्टेड के बाद Kill क्या? onto left there. Plant wall still goes down. तन्मय भाई भी कर रहे क्या मतलब कितना Just the मेंबर wall कितना now ज्वाइन हुआ swarms है at the back, preventing anybody from taking up. 70-80 आराम से. I'm so surprised that they allowed the 70-80 Maybe they 73 thought the plan had been disrupted by the 53. nanoswarm setup. भाई हट करना अच्छा मेरा Over to सिर्फ striking 42 out आया to है. Mako. मैं जीता? Space taken. Wow, dude. Couple of जीत players गया यार. falling quite low. After shock as well. That's pass off Hongo. नाइस शॉट Buzz just revealing an elbow. तन्मय but भाई it's कौन more से than चैनल enough पे स्ट्रीम now. कर रहे हो? Sticking all the way Channel. through. Remember That's only. an action. Half under the Oh. view. वाह भाई वाह ये अंधे हैं क्या But already is enough damage done. Over the strike नहीं trying हो to गया. disrupt it. Two years of it नहीं हुआ, online. नहीं हुआ, नहीं हुआ. It's अभी all ले up to लेगा. RB. Taps it. Trying to force the fight. 60 up. Gets it. Does he have time? होगा क्या Does he हो have जाएगा time? क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा अरे 0.04 4 इंच से बच गया. Heartbreak for DRX. And 2E's What with a the play that clutch. wins them the round. भाई वो A pivotal one at that as it drops DRX's economy back down into the dust. Damn. Take a look at these moments. Good counter spam, but it's the couple of kills that 2E's gets. 3, 0.04 including भाई. enough to get his ult online. Easy थी ना. And with 4 milliseconds the अपने देखें difference. अपने का कितने करे Just insane. subs oh members That's a back-breaking round if you're DRX. Needed that. आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो वैसे? DRX, we are split Your team 50-50, has been half pushed onto the DRX, back half onto the Loud. weaker by once Me, more. Raka, Pinky, Same play again. 58 DRX, members others are बेचे So 58 much util, faster play, RB loud, forced I'm them. loud. Pull out the ult, But now I want drive. DRX to win, so we Oh can my go to goodness. that Adjustment of the aim. It is chaos though. ये तो इको Inside the है smokes. टेक्निकली DRX को ही सपोर्ट करना चाहिए हम सबको Any and all क्योंकि वो advantages. हमारे यार side मैको की
को अल्टी मारनी थी पिछले राउंड में. गन बचा ले भाई. हाँ भाई पिछले राउंड में अल्ट क्यों नहीं मारी इसने?
Sadak's plant gets his ult online. That's going to be useful for the next. I don't see Mako winning a 1v4. या जीकी मैच है और एक है इसके बाद अगर ये लाउड जीता तो खत्म BO5 है ना DRX will have to make an adjustment to deal with this. BO4 है भाई. There's only a single player less coming from the bottom side, coming through tree. And the double jump is just bursting through arcade. मैं एक चीज देखा लाउड वो नहीं करता मालूम है ज्यादा फेक नहीं करता सीधा स्ट्रेट में खत्म कर देता वो फेक करने के पहले आसपास ऑलरेडी घुस जाता है is that sure they go 2 for 2 in that situation, but भाई then they lose the sight. क्या बोलते हैं आइस बॉक्स पे सपोर्ट कर रहा है हां भाई क्राउड पूरा हेल्प दे रहा है पता है यूफो भाई गेमिंग रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हो हां बताओ ना I think Loud could run the exact क्या खाते हो same strat breakfast में again and just throw Sadak's ult behind it, and it's going to make DRX very cautious. नहीं अरे नहीं तन्मय भाई को नहीं पता रहेगा ना चलेगा अच्छा नहीं कुछ नहीं ब्रेकफास्ट में हम बस मैच देखते हैं प्रोफेशनल Yeah, but this एक हादसा हुआ था this time on the opposite side by the look of things, right? Towards A, towards drop, never to fight it. हाँ कह सकते हो हादसा Maybe the plan to try and burst through with a showstopper, but खाने में क्या has खाते to try and put a stop to this one. Less for the first time is actually going to be pressured. बॉइल्ड चिकन Les goes down in the middle of all of this one. Sadak though, pushing forwards. And the fuse run out there, not finding You see. Let's it rip eventually. Spike. I'm kind of confused why Mako isn't using his ult to try and भाई इसको प्लीज मारो 4 जने देख रहे हैं इसको get into post plants for free. Locked down close though. Maybe anticipating they're going to be fighting. ये बंदे का नाम क्या सड़क Mako once more. This guy with a rifle in his hands. He's a menace. Lockdown's going to be destroyed. That bails out Aspas, but he's inside the cloudburst and they know it. He's dealt with. भाई ये टाइम नहीं है भाई. हाँ भाई ये कितना टाइम मिला है? Player really step up to the challenge, step up to the task time and time again, but अभी तो might be a little bit too much to ask of him in a 1v4. भाई लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट एमर्स हैं ये लोग. वैसे यूफो आप अभी तो दिन में तीनों टाइम स्काउट की गाली खाते होंगे. नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे कोई around and pinch. This kill is gorgeous. I mean, ज़्यादा ना वो शॉट. Earth he gets. नहीं शॉट ठीक है. चढ़ा कैसे ऊपर? Looking at the minimap, but that's almost more impressive. Not quite. भाई crazy neon player है यार. If they realize that Les is playing on his own on the south side of the map, look, he's here again. Les is the only player at the bottom of the map. If they do crunches, south side, Les is not going to be able to hold on, and a lot of the time he's not going to be able to escape on the rope either. Big ultimates to deny the plant. Rolling Thunder, orbital strike. And RB's hunting for Les once again in halls. Ball's going to get broken. Dash across there with a satchel, stunned up though, Zest. चलो यार मैं जाता हूँ बिस्तर पे लेट के देखूँगा. Taking damage and eventually will fall there. No one was able to get into the site. भाई अच्छा खेल रहे बे. तुम कह रहे हो लाउड गए? Good timing. मैं मेरे नए बेडमेट के साथ जा रहा हूँ सोने के लिए. पता है कि मेरा न्यू बेडमेट कौन है? अरे अल्ट है लेस के पास. मुझे पता है कल. Les just can't get value out of his ult. I mean, I think this is what Mako is saving it for, right? The orbital strike is their big counter to Les's lockdown. So भाई ये 3v5 नहीं आना चाहिए. I think you're going to see Nice बे भाई RB क्या मार रहा है बास साहब. This guy on the neon. He's those full domination भाई. For DRX, 5 surviving. The bank continues to build. And they're going to be happy. They're going to be pleased with this one. बोलोगे तो आज स्ट्रीम में ऐसे ही सबने सुना है. Bye तन्मय bye Batu. Great stuff. This round though, Sadak going ahead of the play, causing himself to get completely isolated there. A free pick that nobody could trade. भाई DRX की आंखों में ऐसा जुनून दिख रहा है तुम लोगों को. हाँ जुनून दिख रहा है पूरा. बहुत ज़्यादा नीडेड था. बहुत खुश वो लग रहे हैं. एनर्जेटिक हो गए. But this time, a lot of players ready for it on the south side. ने बोला कि कल से घर से बाहर निकलने नहीं देगा भाई. How's it going to be the response from Loud? Aspas, Blade Storm, good flash. Look how quickly they bail as soon as they realize the breach is there. Okay, कोरिया का है क्या? just less this time. We don't want any part of it. कोरिया का है. So backing all the way. Aspas, he's trying to get away with murder. वो भाई कहाँ चला जाएगा ये? Oh, it's creeping. Crawling. They don't know his position. Mako! And yeah. So unaware of that. Rifle picked up.
It's time. Looking a bit dangerous. This puts Sadak on the lurk. And he's got a great timing. I mean, they've got double lurk going on here. This retake could be too fast. Roll in front of her, roll in front of her, pushes them back in the cloudburst. There's no way. कैसे मारा उसने उसे one tap मार दिया. Reflanking through, spray down by Zest. But still, it's all up to him. Spike planted, what can he do? Offset, fantastic movement. बारिश की आवाज नहीं आ रही, वो बजा रहे हैं. Great control. Kawanzine pulled magical rounds out. I'm thinking back to their game against NRG, round 24, the 3K. Kawanzine found for them. All of these players are so comfortable on Fracture. But they're in a broken buy kind of situation. Risks being taken by Loud. The call made by Sadak or Aspas to try and contact in through B main reaps reward. And Buzz is using an operator. That is unusual, but he might spot Aspas. Yeah. You just don't anticipate this. Contact play. Well. Oh, nice one. Nice one, Ray. Iski kill chahiye thi. Great idea from Buzz. He's gonna be in an uncomfortable spot if they actually close around him. But he might be good for a couple. मैंने क्या बोला? क्या jumping मारा? What a shot! Oh my God! ये मेरा पीछे चल रहा है बे. इसके पीछे से टीम आ रहा है, इसको पता है क्या? I mean, just देख रहा ऊपर देख रहा still claims 2 kills now. We'll see what happens here. In tower, pushing forwards, and flash gives a perfect timing, but still, the fact that he's hitting them, nevertheless, so impressive. Prowler in the smoke. अरे 1 HP, 1 HP. Ult कर दे भाई. Down to 16. To try to hit another absurd shot. पिच में रिफ्रेश कर रहे राघव. अगले राउंड में भाई. All is quiet in São Paulo. Neon ult आ रहा है, Fade ult आ रहा है. 2x थोड़ी होता है. भाई इतना डिसिप्लिन है कि 5v2 में पिक में ले रहे थे. Having to use many तो वो ultimates. मैच में क्यों ऐसे पिक ले रहे थे? To be able to get these अरे वो rounds on the board. Zest अच्छा खेल रहा है. वो Zest खेल रहा था वैसे. अरे मैं देख के आता हूँ कहाँ पे है. You're exactly right, Josh. You just don't expect the operator to be picked up. Now, not with this composition. The Neon doesn't really the Neon's not going to be hopping, so नहीं RB मारेगा. no suitable targets. नहीं RB मारेगा. We didn't spot it there, but I've got to assume that Buzz probably has a shorty as well. मैं क्या बोला मारेगा. Bit whiffy there from 2Es. Yeah. Round win. Nah. हाय हर्षिता उत्साह. राघव भाई इसमें लोड लेंसी आता है प्लीज एनेबल. अकेले ने कुछ ऐसा पाथ फ्लॉलेस डिनाई किया. लोड लेंसी एनेबल. जस्ट सेइंग मेरे ट्विच पे 33 के फॉलोअर्स हैं. आई बीन बाजुओं में ही मार रहा है यार ये तो सिर्फ. The reaction times to get that. And also Kawanzine peaking just a hair before his flash pops. Approximately कितने बजे तक है ये मैचेस? डिपेंड करता है ये मैप पे. Amazing. अगर ये मैप हो जाएगा तो फिर 2:30 बजे तक जाएगा. ये 2 बजे के अंदर खत्म हो जाएगा. और एक मैच गया तो 3 o'clock तक. Okay, fair enough. But he has in this role, he moved away from that primary duelist because in these big moments, these big games, he couldn't quite live up to the expectations. Very true. And as well as that, Buzz has been able to keep up a consistent performance, despite the fact that now he's playing the Killjoy. He's played it before. He's been good on every role. But you would think that his impact would be mitigated. But it's just been strength for strength ever since that first map where he got brutalized. Yeah, completely agree. I think the mental game has become their demons. They did it at Champs, and they're showcasing it again here. क्या बोल रहा है? RB has gone from a player who crumbles in. हाँ बोलना. आप इतने सारे इवेंट्स में घूमते हो बराबर. आप वीडियोस भी कम करता हूँ. नहीं मतलब वीडियोस भी बनाते हो. इतना कंटेंट भी प्लान करते हो. फिर भी आप इतना कैसे फॉलो कर लेते हो हर चीज. क्रिकेट भी मेरे हिसाब से आप फॉलो करते हो. वैलो भी फॉलो करते हो. इतना टाइम कैसे? मेरा फोन का स्क्रीन टाइम बहुत हाई है रे. हाँ. ऐसा 9-10 घंटा तो है मेरा. अच्छा. रात को सोने से पहले मैं Effect on the map. As DRX pushed down here. BCG तो मैं properly time wasted yet still. Less tries to hold that one down. Okay, an exchange as well. Wait, but Buzz went 1 for 1. And the rest of them come through. Do they know that Stax is here? But chess सिर्फ headline follow करता हूँ. ऐसा कुछ बड़ा होएगा तो. Gifted that one. But this is chaos as well. Chaos. Look at Aspas and 2Es. Maneuvering, taking that space into their spawn. They got to know that the pinch was happening on the south side, so a call is made.
Zest uses his Nightfall to get information, and it's going to allow them to get a slightly earlier rotate. Does that help him take the duel against Aspas? He's got to be careful this one. Nice. No. Can't win it out. Weapon did The economy playing a crucial element in this one. Stacks. Hey, let's go. A jaunt in the park is what it feels like as he was approaching Dish. 7.5. And now they can take their time with it. And I'm telling you, Brent, DRX have figured this out from Loud. I talked about how less on his own is a prime candidate to do a crunch on. And DRX are looking for it. You see how quickly they bailed a couple of rounds ago when they saw a breach flash. And this time they don't see anything, so they know it's only Les there with the turret. And even though Les goes 1-for-1, it helps DRX control so much of the map. Mako pushing out, punishing. ये वो उनके ऑडियो का था ना वो? And Loud of course to play at such a high tempo, they make mistakes on their B hit, not accounting for stacks. The economy is in such a weird place, man. Loud are going for a half buy, I guess, but kind of some of their players investing fully. It's really weird. Still Les holding on to that lockdown as well. Doesn't want to use it when Mako's alive. Just waiting in his back pocket. I guess they are going to be able to buy next round, so this is just a straight-up save for Loud. Playing for it. But yeah, that's a great point, Brent. We haven't really seen a big ultimate clash yet. It's just a game of chicken. Your opponents are scared to use your ultimates just because you're holding one. Brim or Take that as a win. In some sense, the ultimate value that Mako is getting here. Some point. अच्छा वो अब तक हुआ नहीं है 5 seconds. You're going to be losing it. क्या था रेस का बूम बोर्ड का नर्व क्या? 10 seconds की जगह पे back line dash to the side. Reposition. Arnie stays alive, but into the cloud burst. तो बहुत बड़ा नर्व है. The guns are suited for it. Wow! He can't hit the spray down and wow, just overwhelmed. Speed भी बढ़ेगा ना. There's the value of the duelist finally rearing its head. कुछ ऐसा speed भी नहीं. Completely overwhelming. Everybody is weak though, or rather, I should say, Kawanzin and Sadak. Doubled up though. That's a high-low setup. Very difficult to break. So Loud, critical round win for them when it was looking so damn unlikely. If you consider where their economy was at. Yeah, they get it on the half buy. Tui is now pulling out 2 rounds where his orbital strike has been incredibly important. The double duelist though absolutely dominated Stacks and Mako's setup. Both showcasing why, you know, maybe he likes to call it the double dive. Because they have that mobility to break crosshair placement and break crossfires. Clear. Again, तुम लोग का favorite skin क्या है अभी game में? Phantom favorite skin कौन सा है? Much more passive angle from him. Phantom मेरे को only पसंद है. Only Phantom Prime Pass. कोई हार ही गया? मेरे को Vandal में River या They'll be gifted again. River या Champion. Another contact push. RGX की पसंद है. Okay. RGX अच्छी है, but it's not like मतलब all time. Get away with just a haircut. If I had to just keep one skin, I would choose like only Phantom Prime. Makes it look like this is going to end in a B split. मेरे पास ओनी है नहीं पर मैं चुराता ओनी. ये लेटेस्ट ये वाला कैसा है? मेरे को अच्छा लगा ये वाला. नया जो ओनी आने वाला है. It's possible that our नया ओनी तो सेक्सी लग रहा है. Or grab though, that's going to be given that rolling thunder. Double satchel playing a lockdown uses to response immediately. Up close, stunned up though, Buzz. He can't do anything about that. Not with the operator in his hands. भाई कोई हेल्प कर भाई ये हेल्प क्यों नहीं करी मैको ने अल्ट मार सकता था वो ऊपर Stay alive. He's aware that there is still that lockdown. हैं बिग्स क्या so does Stacks. ये ऊपर टावर में अल्ट मारता ना अल्ट क्यों नहीं किया There's a lockdown. Mako finally gets to use his arm. Finally gets to use it, and there we go. It will take it out, but a fight being taken. अब करिए अल्ट इसने भाई क्या टीम वर्क है ये मेरे को लग रहा है कॉम डिफ लग रहा है मेरे को फुल कॉम डिफ लग रहा है एक बात बताओ जब उसने अल्ट मारी है तो भाई टावर पे अल्ट मार के थोड़ा टाइम बचा लेता एक मार देता केजे किल क्या हाल है भाइयों व्हाट्स अप हेलो गोल्डी भाई आपका आवाज awesome response from Loud when it looked like things were spiraling out of control for them grabbing those final two नहीं वो माइक इनपुट आई थिंक गलत select है let's send it on into once again another special interview 6 हो गया यार कुछ बोलो गोल्डी भाई ये कंफर्म हेलो हेलो अभी ठीक है माइक से सही है हां अभी ठीक है ऐसा गोल्डी भाई
बढ़िया तुम बता All the day. This is a very entertaining series. Now, I actually wanted to ask you because you're a caster, तन्मय you're क्या हाल है a pro बच्चा? player as well. These guys down there, you know, they were 2-0 up, and now there's a possibility of a potential reverse sweep. So talk me through the mentality. भाई से तो अल्ट आई इनको क्या नहीं था? They can close the series out without the reverse sweep. अरे आजकल नहीं फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट क्या है? मसाला डोसा की रवा अनियन वालो देखो जल्दी रवा मसाला डोसा सेम गोल्डी भाई वालो देखो जल्दी वालो देख रहा हूँ वालो ही देख रहा हूँ इसलिए तो मेरे को देखा 11 बजे आने आता अभी फ्री कुछ बोल रही है अमीज सिबिंग्स अमीज से भाई साइड में बैठी है फिर भी नहीं तो शर्म भाई इसको यार वो भी बोलते हैं क्यूटे करके यार है क्यूट है मैं 1 सेकंड में आया इनपुट डिवाइस का भाई ठीक राका भाई जरा आई डिटेक्टिंग टेस्ट लगाना अपने स्क्रीन पे क्लाउड ड्रेसेस तुम दोनों एक ही इनपुट से कैसा है रे पिंकी और तू स्प्लिटर डाला ना क्या डाला तो स्प्लिटर और ये माइक करता ना वो और वो माइक भी दोनों का अलग-अलग ऑडियो उठा रहा है क्या? नहीं एक ही माइक। अच्छा एक ही का उठा रहा है क्या? हाँ तो स्प्लिटर से सिर्फ ऑडियो स्प्लिट हो रहा है क्या? हाँ सिर्फ हेडफोन में जो जा रहा है। फंस गया भाई मैं तुम्हारी चैट पढ़ रहा हूँ देख भी नहीं रहा स्क्रीन। वो तेरे पास है कि फिंकी के पास है? मेरे पास है। हाँ ज्यादा उसकी तरफ है लेकिन है स्टैंड में वैसा। अच्छा कंडेंसर माइक वाला है क्या? हाँ केजे की अल्ट रह लिया बचा। सॉरी गोल्डी भाई अनियन मसाला डोसा हाँ। और फेवरेट डिजर्ट क्या है? गए अच्छा गोल्डी भाई गए AFK गए नहीं बीसी छोड़ गए। That momentum is starting to build behind team like DRX. You don't want to be granting them the opportunity. मच्छर रानी के बनी है इसने। पूछ क्या? फेवरेट डिजर्ट कौन सा है? इंडियन डिजर्ट। पहले इंडियन करते हैं। रसमलाई। अरे सेम। मेरा है गड़बड़ बेबी। अरे डिजर्ट खाने के बाद क्या होता है नहीं पूछा। फेवरेट डिजर्ट क्या है? गड़बड़ बहुत बाप डिजर्ट है लेकिन मैंगलोर में सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है। भाई ये इंडियन नहीं है कैरेमल क्या है? आइसक्रीम है कैरेमल कस्टर्ड। कैरेमल कस्टर्ड को हिंदी में बोल के दिखा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? कैरेमल कस्टर्ड हिंदी में क्या होता है? कस्टर्ड आई हैव नो आईडिया। मुझे तो कैरेमल भी हिंदी में बोलने नहीं आता। भाई तुम क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे रहे हो। अबे वो कहां चला गया? जंप ड्रॉप करते हुए। How many matches? Feels unlikely because he's got his back wide open. He thought it was free. Thought it was available to them. Fantastic opening and now the plan can start to go down but a fast play. वाह भाई बॉम्ब प्लांट ही नहीं हुआ। Denied still responding in. अरे लेस है भाई लेस इन हेलो ये देखो बेस्ट भाई बिना केजे के अलार्म बोट है maybe he can do something still. साउंड सबका अजीब सा नहीं अब भी ठीक है। कैसे राका भाई क्या हाल है बात? बढ़िया गोल्डी भाई बताइए कैसे हो? Good उनकी क्या हाल है? To try and bait out the positioning. Good from Lesh. The choke point takes the fight anyway and Buzz will win it. Here's the pistol round and DRX VCT का शौक है? हाँ मैं पूरा सब कुछ दिखता है रे। तन्मय में खेलते हैं वालों लेकिन सुबह तक पता है मुझे खेलते तो है 2 से लेकर सुबह 5 बजे both on the board is massive. पता है And neither of these teams have been willing to force, go for it. Doesn't make too much sense from this point. कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा बता दो। DRX गोल्डी भाई DRX DRX को सपोर्ट कर रहे हैं बाकी सब लाउड की साइड है। पांडे जी भी DRX की तरफ हमारे साइड हो। तन्मय भाई ओह पांडे जी भी है। हाउ आर यू पांडे जी? आई एम गोल्डी नाइस टू अरे I am mechanical पांडे भाई। कैसे हो? deadly level. अच्छा सब लोग मिलके तन्मय भाई आप भी लाउड को कर रहे हो? नहीं सिर्फ मैं और तन्मय भाई लाउड है बाकी सारे DRX। हाँ पर मैं शिफ्ट हो गया मैं अभी DRX सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा शुरू से हो रहा है कि पैसिफिक रीजन की ये टीम है जो अभी अपन लोग तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइमर थे नाम रोशन कर रही है। इंडियन गेमिंग शो में डेली वैक्सीन लेते रिमेंबर भाई क्लच हर मैच के बाद आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हो आप सुन भी रहे हो सपोर्ट कर रहा हूं।
वाह भाई 8 पॉइंट ले गया वो। And I think that this is going to give a ton of info. ऐसा होता है ना I mean, automatically Sadak's under massive pressure. उसको सपोर्ट करने का मन करता है। Actually तन्मय अभी ना recently loud नाइफ अबे वाह भाई वाह अरे हद दिया ओ भाई करता ना नाइस Discipline was there. Aftershock starting into the corner. Got to be backing out. Damage definitely being done here. Molly at the feet. It's a great molly. Yeah, no one can push past this one, but Mako is taking a couple of straight shots. And damage is definitely being done still. Disrespecting him forwards, much play, dodging, juking, side to side. ये क्या थ्रो है? वो देख Just to लो। make it a little bit more dangerous there, but 2 years doesn't quite pick up any of these weapons. This guy is currently making a most of his time. स्पैम में भी मारा था हेडशॉट। Getting head after जेस्ट head. भाई बहुत ही गंदे खेलते हो, डिप्रेशन में चला गया ऑलरेडी पता है। Clean follow-up from DRX. And you can see how their composition गोल्डी भाई is सवाल designed का to जवाब work. दो ना। It slowly फेवरेट prods around them. इंडियन डिजर्ट कौन सा है इंडियन? रसमलाई। तू गोल्डी भाई है क्या? गोल्डी भाई का जवाब दे रहा हूँ ना। डोसा ये से मेरा मैं गेस करूं DNA passed away इसमें। हाँ जी गुलाब जामुन काइंड ऑफ वैसे I thought it was गाजर का हलवा no it's actually malpua but it's kind of a form of gulab jamun Stacks is building up to his ult again as well. It's a game plan that they have in almost every map. भाई ये Get राउंड Stacks the जीतना ult. चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा जवाब था Winning this one. भाई ये बहुत ही सही खेल रहा है आरबी यार, क्या खेल रहा है? Doesn't even pick up the weapon. Instead, it's left behind a cowardly. bro But still, he's worked his way into their spawn, and this is really just sowing that kind of chaos. ओ भाई बस भाई In the enemy ranks. सबसे काम में मिलता है कैरबिन का। कष्ट बनाते हैं And I love this decision. तन्मय भाई की बात Great pivot. Deciding to go all the way over to B. Cowan seen has Zest been भाई a को danger टरेस on this बना map रहा है, before. Zest You ऐसे do ही not खेलता want to give him a छत्तीसगढ़ chance जाके to the कैरबिन 1v2. कस्टर्ड मांगे वो गोली मारते भाई। मार देगा रोटेशन में वो कहां कर रहा है? DRX are going to be so happy with this situation. राउंड है DRX Bonus का round for them. They picked up a couple of rifles. उसका रोटेशन देखा उसने इतना लंबा रोटेशन दिया। मरेगा यही जेस्ट ही मरेगा देख। Everything on him, seeing what he can do. Saw the turret being set up though. So he's भाई got टरेट भी नहीं टूट रहा है इससे। ओ उसने टरेट वापस ले लिया। That's a little bit awkward though. Eventually getting that turret down and waits it out, but it's इन गेम वॉल्यूम थोड़ा कम करो राका भाई। ठीक है। It's all on timing. इसका नाम क्या है? काउंजिन। He knows that Buzz is somewhere in his spawn. Yep. But that doesn't make it any easier to deal with. So just trying to clear it out. गेम साउंड थोड़ा स्लो कर ले। Cross. Lovely flick of the wrist. 3 in the round. डिस्कॉर्ड का But a tap on the spike. गेम इन गेम And this is ice cold. Zest. He doesn't overpeak it. Getting back on the line. The swing is as a impeccable. viewer बहुत तेज आ रहा है। And Zest. और कम That's a shutdown. अगर घूम फिर के कहीं That से really जेस्ट is अभी मर ice जाता cold though, ना। Brent. Not even Just imagine thinking करो for one a tap मर moment जाता। that But he's Cowan sticking team it. could be sticking it. Yeah. That We is want to listen incredible. BC बच्चों से। मैं चाहता हूँ ठीक है guys। This round got really chaotic, but I think it भाई showed a बस couple of ने things निकाला राउट में। that DRX are willing to आप push भी कम spawn if करो। they need to. करा। What's your pick And for the that winner तन्मय? RB's What do you think? still got it on the मेरे को neon. तो अभी I was DRX a जो bit लग रहा है ना worried अगर when ये it मैच slid जीतेगा ना into- तो No. I think it was 2-east to begin Overall with. winner हाँ। Thank you Rahul for Position Raman। after the stun was perfect. को भी ना भी लगता है। And that horn is just immaculate. कह रहे Reveals बाबूजी के Aspas, पैर pushes कैसे him back, another stun as well. Lands his way across, he's close. This will fall. यार बाबूजी नहीं है। अरे इधर को आ जाओ कोई नहीं। Any more out of Guys hand ये if हमारे you are अभिनव भाई DRX, हैं। been handed a great opportunity आप to इनसे नहीं secure मिले that होंगे 10th मुझे। round. Plando going down, wall in their faces. Abi doesn't even seem to be aware of it. 2 players bye, waiting for him, and he's bye. put that ult online. Exchange one for another, back and forth. Aftershock as well in tower. Moves forwards though, Mako. With his ult. Trying to get out of there, and yeah, he's got it online. He can buy the time for it, but they've handed over the rifle still. Sadak and 2 years, they don't have them. Running back. Over a strike just to make sure that nobody is on it, and Mako so damn diligent. That's watched for. Sadak taps it, spam into the smoke, not offered an easy angle, not offered an easy kill. Beautiful play by Mako, 4 in the round. Showcasing there why people have him, myself included, as the best smokes player in the world. 16 and 8 on the map, and finding so many moments to have. एक और गए और क्यों न रहे वो
घातक भाई. Having a greatest of all time potential performance across the first 3 maps in a BO5. Map 4 comes around. तूने देखा सब फैंटम यूज करते हैं और उसमें रिकॉर्ड. अरे एक बात बताओ तन्मय भाई, आप तो बताओ अपना फेवरेट. हेलो. देसी डिजर्ट ना, मेरे को एक्चुअली रसमलाई बहुत पसंद है, पर रसमलाई में एक वेरिएशन आता है, रसमलाई सैंडविच. कभी खाया क्या? क्या? मलाई सैंडविच कभी नहीं खाया? मलाई सैंडविच नहीं. मलाई सैंडविच नहीं खाया तुम लोग ने? वो वैसा ड्राई टाइप होता है क्या बॉक्स में? नहीं नहीं, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं राका, ये नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में तो उसको चमचम बोलते हैं. ओ चमचम. चमचम हाँ खाया है मेरे. हाँ चमचम थोड़ी बोलते. चमचम भी बोलते हैं. नहीं नहीं, हाँ वो खाया. चमचम थोड़ी होते हैं. सैंडविच ब्रेड थोड़ी होता है चमचम में. नहीं पर वो ब्रेड वो सैंडविच जैसे दिखता है. हाँ, it's not an actual sandwich. Yeah. चमचम तो स्क्वायर दिखता है. चैट तुम लोग को मालूम है ना मलाई सैंडविच? आइसक्रीम सैंडविच मैंने तो आइसक्रीम सैंडविच, पर वो He इंडियन was नहीं forced है. out of position last time when he was defending B. नहीं, वो एक ही सैंडविच टाइप. चाही टुकड़ा. I just don't think he's going to get an opportunity. Look at the utility. Yeah, that recoil is immaculate. Pushes him back. ओ भाई इसको देखो. अंजुम दिया. ये क्या मारा उसने? Clearly underestimated ASUS. One way to shut it down, but goodness gracious me. DRX not letting anything get unsaid and undone. An immediate take there of balls. 2 kills for Mako. He has been the difference maker. He is almost set up there for a bit of a collateral play. 2 for the price of 1, but no, traded. So it's a 3v2, and ASUS forced to retake with the op in a 4 position. हो गया retake, हो गया. Lockdown's there though. This time nothing to break it. आसपास. ये ब्राजील की टीम है, वो पैसिफिक की है, कोरिया टीम है वो. Out wide. There is a gap at the back of the site where players are not going to be caught by that lockdown, but the pressure's on less. He has to take this timing, but Util out in his hands. क्या उसे पता नहीं लगा साउंड में? नहीं, उसका अल्टी आगे का ही था ना, पीछे का अल्टा. काका भाई पीछे हैंडसम कौन है? हमारे मित्र हैं यार. Only assuming that there was one. Oh भाई. अभिनव है वो. Ridiculous way to open the round, but in the midst of all of this, it wasn't really a heavy commitment. You can see here that entire play was to bait this kind of reaction. अभिनव भाई कह रहे कुछ बोल RB दो. is sent in as a distraction, while the rest of the team just holds for the flank. DRX are one step ahead, and they look right back where they were at the top of the world on Fracture. This team with their fast play and Na'Vi with their slow play, both looking insane. भाई एक RB बहुत sexy खेल रहा है, मैं बता रहा हूँ. Nana Swarms though, that's an adjustment. RB पे माता This जुड़ time गई placing it at that connector, making sure that RB can't Full get अंधा away घुस with रहा है it. अभी. Another fast flank coming up behind Mako. But will Mako contain? It's all on that. Mako तो And he's खेल रहा है favoured. भाई. He's normally so good. Rifle nade though. Well, it's going to push him away. Yeah, okay. But Under से मारा, The buzz under just comes to help. Yep. God is easy tunnel. control. It was a half by round from Loud, so they are kind of playing to get to OT. बता रहा हूँ अभी He's ये. going to take them 6 rounds in a row to get there. और RB That's DRX finding themselves. Easy होने वाला है. क्या भाई DRX अभी. We put it up in the air, didn't तुम्हारी we? भाभी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उनके मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी शक्ल देखो, पहले तो राउंड में इतनी हंसी हुई थी, अभी वैसी Get that reverse sweep started. Listen. One round is what separates. किंग्स भाई नहीं हो रहा क्या? हेलो 12. भाई इजी हो रहा था करके थोड़ा टफ करा के दे रहे. थर्ड मैच देखना. तो लाउड का राउंड है, लाउड का मैप है, लाउड का मैप है. Made angry honestly. An amazing answer back. अब सच बोलूं तो एक्चुअली लाउड के होम ग्राउंड में लाउड को हराने में मजा तो आ रहा है. लेकिन ये लोग नहीं पिक किया था, DRX ने पिक किया था बहुत ज्यादा ना. मजा तो आ रहा है. Owns it. 3 बजे तक जा रहे हैं. हाँ 3 बजे. Always seems to be. पुरानी चेयर पे लोगों पर टेप लगा के बैठा नहीं सकते. अरे पुरानी चेयर कैसे लगी? यार ऐसा क्या है? चेयर होती तो बैठा नहीं. क्या सीन आपका, क्या प्रेडिक्शन? Too much danger. Another great timing here from DRX, who have all the ults in the world to play with. दाल फ्राइड राइस इनकमिंग. भाई जीतेगी दाल फ्राइड राइस नहीं. Clearing जीतेगी dish. DRX. Do they commit to this? It could be a fake from RB. It could be अभिनव real. भाई आपकी बियर्ड मस्त है, हमारी तो जान. मोमेंटम बढ़ गया भाई. Controlling so much of the map. And now now ulted put DRX back के पास towards easy Halls. निकलेगा round. They don't want to overstep themselves though, because that's where Mako is. और ये 12 पिछला मैप कितना 12-10 आ रहा है. Exactly what that feels Sorry, like. 13-10 आ रहा है. ASUS with the knives. भाई That's what they're worried natural about. है. Late storm. अब आपको पूरा भाई उसका stun देख भाई. Waste. I don't think it tagged onto anybody. Still, the Sun will catch onto this target. ASUS disrespects it. Stands his ground. Eventually dashes back, but it is just going to be that 1-for-1 play.
2 years 4, still. Reflank attack. Mako close. Mako ka ult Stuns there. Wants the refi positioning. Reveal. Beautiful by KarwaZine. Just by बचे अपने. Down to Zest. Can't understand that. Not when the blade storms in his face. थोड़ी सी. Finally, the flank finds value. मैंने पढ़ाई अपनी. And nice work from Aspas playing around it too. I was amazed at how accurate the relay ball is. I'm just in awe whenever I watch RB play Neon. But it's this play that really wins things for them, right? Being able to evade the utility, and also Stacks and Mako not really fighting together in the way that we've seen them before. 5 rounds in a row now. Yeah, bus. नहीं उससे हाँ उसके आसपास नहीं उससे ज्यादा नहीं होगी उसके आसपास बस 10,000 यूरोस अरे राका क्या है सैलरी सारी रीजन टू रीजन डिपेंड करती है समझ रहा है बात को मतलब उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि लास्ट इवेंट वो लोग जीता था इजी अरे पर मंथ बहुत होता है भाई 10,000 What are they waiting for? Fault line. Push them back. RB taking all that space. Right past the boom bots. Glides through. That's that 1-for-1. So contained. KarwaZine will get that trade. भाई डुएलिस्ट डिफ तो है आरबी हर बार जाके एक डुएलिस्ट को मार के आ रहा है बस अरे मतलब 10,000 यूरो for example Mako might have to save his smokes just to do that. VCT का भी वैसा है ना Riot is supporting Spike makes the intrepid trip over the pit. 8 लाख रुपए भाई कम है यार मेरे हिसाब से तो So this to me looks like they're going to try and go through sand. It doesn't require as many सबसे ज्यादा सैलरी मेरे हिसाब से यही पे रहेगा ना You don't have to be as भाई कम है मेरे हिसाब से ये को कितना मिलता है ये को and louder gambling on the other side. ये को मिलता होगा $20,000 वो लोग टीम ढूंढ रहा है $20,000 टीम ढूंढ रहा है 20,000 पर मंथ नहीं $20,000 रखा उतना नहीं है क्या बात कर रहे हो अन्ना का तो बात अरे अन्ना का बात हुआ था ये से ऋषि का भी बात हुआ था अन्ना का भी बात हुआ दोनों का हुआ था उसका एक कंडीशन था ही कांट कम टू इंडिया ये क्या किया भाई क्या कॉम्बो दिया स्टन और वो ना $60 $40 एवरेज है वहाँ वही तो सिंपल की कितनी है सैलरी सिंपल की कम से कम $60 होगी वो CS:GO भी है Molly's going to be coming over and he has the ult too. Jonas is on buzz to buy time here. ये की 750k मतलब ऑलमोस्ट $1 million कमाता है अल्ट भी तो है and the order strike held. Molly's good for it. Mako वो भाई TikTok lineups waiting for that sound cue and he knows it precisely right in his head. माको मैंने क्या बोला था गोल्डी भाई माको मारेगा ना माको तो मार दिया भाई उसने बाप को भी माको मारा भाई माको मारा मतलब मैको ने मारा अरे राका भाई अब मजाक नहीं कर रहा अब तो गर्लफ्रेंड ने क्लीन शेव भी कर एरिन ने अगर पहले जवाब ना दिया ना माको तो वुड क्या हैव कर बीन सकते इंटरजी हाँ दोनों का साथ में बात चल रहा था मेरे को लेकिन स्टैक्स बहुत अच्छा लगता है पता नहीं एज अ प्लेयर नो स्टैक्स मगर गोल्डी भाई अगर आप ये रीजन से उठाओगे ना तो लैंग्वेज बैरियर आएगा ही क्योंकि उनमें इंग्लिश बहुत NHK है तो हाँ तो वो लोग भी ऐसा आते भी रहेंगे ना ऋषि ने जो प्लेयर्स उठाए ना वो उसमें सबसे अच्छी बात ये कि तीनों की ना इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है तो वो भी एक की फैक्टर था दोनों लेने के पीछे और जी में तो पूरा रीजन ऑल ओवर द ग्लोब प्लेयर्स है वैसा सीन है तन्मय भाई क्वेश्चन हो जाए कमबैक मारा है भाई तन्मय भाई क्वेश्चन हो जाए अगर आपकी एक वैलोरेंट टीम हुई तो क्या नाम रखोगे उसका ऑल इंडिया बकचोद दिस इज मी एंड तन्मय का पर्सनल जोक ओके नोबडी एल्स ये वो नाम की कंपनी बंद हो जाती है भाई नहीं सक्सेसफुल भी होती है ऐसी बात वो भी है ऑल इंडिया बॉट्स हां जैसे तूने इंग्लिश में PhD करी है ब्रिजेश भाई थैंक यू फॉर $5 मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है वैसे वो कंपनी मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट तो कर सकता हूं सिंगापुर सर्वर में कुछ भी बोलो था तो वो एक मेमोरी अच्छा बताओ ना तन्मय भाई हां क्या मेरा वैलोरेंट टीम का नाम ऐसे कुछ रखा हूं मैं बॉट ई-स्पोर्ट्स बॉट आर्मी ऐसे कुछ तो नाम रखूंगा मैं बॉट ई-स्पोर्ट्स तो है बॉट ई-स्पोर्ट्स है ऑलरेडी ऑलरेडी है वैसे मतलब इतना बड़े लेवल पे नहीं बट अभी जिसका ओनर है स्टार्टेड टू इन्वेस्ट सो या अच्छा हां मैं रखूंगा S9UL
अभिनव भाई थोड़े बियर्ड ग्रो एंड मेंटेन के टिप्स भाई। अच्छा टिप्स दे देना भाई, जाते हैं जान खाने के लिए। वो देखा राका भाई वोट्स ज्यादा है, लाइक्स कम है, दुख तो है बैंक की, क्या बोले यार सब। एटीट्यूड है सब में, क्या बोले। थैंक यू फॉर 40 ओलंपिक्स 24। वो मेरे को डाइसी लग रहा थोड़ा सा। डाइसी क्या लग रहा है? क्या गेम्स है ये? क्या गेम्स है? क्या सच है? वो वी गेम्स हैं, वी गेम्स है, WII गेम्स है, हां वी गेम्स हैं वो सारे। एंड तुम्हें क्या पता वैलोरेंट स्ट्रीमर्स, हेलो। अरे बट तो बेसिकली आई टेल यू द आइडिया, एक सेकंड, क्या GTA वाले ने कुछ बात किया? ओ भाई 4 डिफरेंट मैराथन है, घर जाएगा तेरा। राका तेरे घर पे तेरे पीछे कोई खड़ा है भाई। अच्छा वो मैराथन जो वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो आपसे बात करने आए थे। ओ मुझसे बात करने आए थे। हाँ हेलो अभिनव बोल दो एक बार। क्या हाल है अभिषेक? राका का टीम कचरा गैंग। नॉक्स थैंक यू 3 months। यार इनसे नहीं कर सकते तुम गाइस, नहीं जीत सकते। सॉरी तुम लोग कुछ बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? क्या थॉट है आपका ट्विटर का ओलंपिक्स के बारे में? ट्विटर का अच्छा ओलंपिक्स में ई स्पोर्ट्स आने वाला है क्या? आजकल हाँ ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है आजकल। अच्छा तो उसके बारे में क्या ख्याल है? उसमें उन्होंने वी गेम्स, निंटेंडो बेस्ड गेम्स जैसे आर्चरी, टाइक्वांडो, जस्ट डांस, चेस का भी सेगमेंट रखा है जी। व्हाट आर योर थॉट्स? आप बढ़िया आइडिया है। ऐसे भी आधा स्पोर्ट तो मैं देखता नहीं हूँ ओलंपिक्स में, इसी बहाने थोड़ा और देख लूंगा ओलंपिक्स। अगर कर्लिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट हो सकता है तो मतलब चेस भी तो हो ही सकता है। मारियो भी डाल दो, मेरे को तो लगता है डालो। Actually, इनका ना what the idea behind this is that any game which is referred to kill या third party या first person जिसमें gun usage है, blood है, killing है, they won't let that in Olympics at any time of point of time. हाँ fair. इसीलिए also the thing is that any sport which any esport or see all esport games are like capitalistic and private company led, no? So that doesn't feel like no sport is owned by a country or one company anywhere else in any other sport. So like chess still feels like it's okay. So esports in the main Olympics feels like it's against the spirit of the Olympics. Hello guys. Whereas like बहुत गेम्स होंगे जिसके सर्वर इंडिया में नहीं है, तो इंडिया से अच्छे एथलीट्स निकलेंगे नहीं। राइट बुरा लगा अभिनव भाई, ये ऐसे ही दोस्तों घर पे बुला के उड़ता है ओलंपिक्स, बट यकीन ना हो तो एक्सेलर को esports का अलग ओलंपिक्स another $5 which are not like an Olympic federation. No, but मैंने क्या बोला है भाई, तन्मय भाई से नहीं बकचोदी कर सकते। ओलंपिक्स नहीं अनाउंस किया है the games coming into Olympics। कौन से गेम्स है? बुरा लगा अभिनव भाई, ये दोस्तों को घर पे बुला के बहुत सारे वो देख आर्चरी, दोस्त आके रुका था 10 जस्ट डांस, आई थिंक एक रेस का भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ गेम्स लाइक ये भी मिलता है क्या मेंबर बनने पे? सही है राका भाई, कैसे हो? बट उसका अलग होगा ना इन द सेंस दैट उसका नो सेम कांसेप्ट, एवरीथिंग विल बी सेम। countries that win just dance उनका मेडल will get counted in the physical Olympic also. Yeah, equal gold. Yeah, गलत लगता है मेरे को एक्चुअली ये। मतलब obviously मतलब practically तो अलग-अलग होना चाहिए बट दोनों, but I don't know why. It's archery, baseball, chess, cycling, dance, motorsport, sailing, tennis and taekwondo. Cycling? हाँ। मैं देखो पता है साइकिलिंग वो होता है जैसे रेसिंग व्हील आती है ना बिंग्स, वैसे साइकिलिंग भी आता है एक पूरा सेटअप। वो है क्या? वो वाला गेम है क्या जहाँ पे वो ऐसा फ्लिप मारते हैं वो लोग पॉइंट्स के लिए? अबे नहीं, नॉर्मल ओलंपिक साइकिलिंग। जो ओलंपिक ने ट्वीट किया उसमें फार्मूला 1 और बहुत बड़े-बड़े ऐसे डेक्सेटो जो मिनी ट्रक ब्रांड है, उन लोगों ने सबने उस पे क्वालिटी बढ़ाओ, वो अपने ऑटो है वो मार्केटिंग कैंपेन उनकी ट्वीट पे लॉन्च कर दिया। हाँ ये तो फुल निंटेंडो का फायदा हो गया भाई। फ्री मेंबरशिप सब देश को खरीदना पड़ेगा। यार तुम फ्री मेंबरशिप ले रहे हो तो आगे बांटो ना किसी को। निंटेंडो का मतलब ऑनेस्टली इंडिया में कहां, इंडिया में पार्टी का बाजार में निंटेंडो पढ़ाते हैं क्या एग्जाम? भाई फिजिक्स वाले भी थोड़े उसमें भी कैसेट डालना पड़ता है, किसी को ही बोलेंगे फिजिक्स वाला नहीं है वो। लाइकू
फिजिक्स भी पढ़ा देंगे एग्जाम में ओमा गाइस और भाई सुनने दो यार take space and die, right? But they did so well at supporting him and putting him in. राका भाई टेक्निकल गुरुजी आए हैं, बट टेक्निकल गुरुजी तो कहीं से नहीं लग रहे, ठीक है। एक बार को घातक भाई तो मैं मान सकता हूँ। ये राका तेरे पीछे बस ऐसे ही बैठा है क्या ऐसा? अभिषेक नहीं, अभिनव वहाँ मतलब आए हैं ना वो घर पे, तो वो देखना, वो एक्चुअली गेमिंग इंडस्ट्री से नहीं है। अच्छा, कौन से इंडस्ट्री से? हाँ, वो तो समझने आए कि क्या करता हूँ मैं। अच्छा, तो तेरे पीछे ऐसे बैठ के हाँ, तो वॉच और पार्टी ज़्यादा समझने कंफ्यूज हो गए होंगे। तो नहीं वॉच पार्टी समझ दोस्त है क्या? हाँ तो जरा उसको अभिनंदन क्या सीखा तू अब तक? सीखने थोड़ी ना आया। अभिनंदन कभी अभिषेक। बचपन में बड़े कजन गेम खेलते थे वक्त और अभिनव भाई को तेरी तरह दिखाया। ड्रैगन का हिंदी में क्या कहते हैं? ड्रैगन को? हाँ, बड़ी चिपकली। बड़ी फ्लाइंग चिपकली। बड़ी चिपकली। ड्रैगन को वो मारियो के एंड में आता है ना वो। अभी तो बहुत किसने गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी डब देखा है गाइस? नहीं। मगर गोल्डी भाई एक क्वेश्चन आया वापस से, काउंटर क्वेश्चन जो आपने बोला गन वाला। ओलंपिक्स में रियल गन शूटिंग वाला तो है, शूटिंग होते हैं ना, तो उसमें कोई मरता नहीं है रे राका। उसमें बंदा नहीं मारते ना। पॉइंट पे गन मारते ना। इसमें तो वैलोरेंट में हेड पे मारना होता है, तो ओपा होता है, समझो बात को। पॉइंट तन्मय भाई बोलो सिर्फ वो बैठा नहीं है, चैट और आपसे अभिनव बिंद्रा ने किसी को मारा नहीं। भाई तुम्हारे साथ बहुत भूल गया। कह रहा तन्मय भाई को बोलो वो सिर्फ बैठा नहीं है, चैट और आपसे टूट भी रहा है। टूट रहा है मतलब भूली वाला। ये अभिमन्यु करता क्या रखा? वो एंजॉय कर रहा है। थैंक यू अभिजीत भाई फॉर अनदर $5। लोगों को मार बोलो रखा भाई क्या करते हैं, बताया नहीं आपने? नहीं मेरा क्लियर हो गया डाउट एकदम। अच्छा नहीं वो तन्मय आंसर तो करो यार। मैं बोल रहा था अभिमन्यु करता क्या है? आप क्या करते पूछ रहे? तेज बोलो जा रही आवाज। अरे राका तुम्हारे पीछे कोई बैठा है? बोलो ना तेज बोलो, सुन रहे हैं कोई नहीं। So I work with Chayos. Oh, welcome to stream. I love this guy already. I just love his vibe. और वो एक्चुअली वो सब देखते हैं तन्मय भाई, प्रमोशन वगैरह। यार मैं तो रोस्ट वर्ड के चाय पीती हूँ। भाई मैं तो कॉफी का सी भी नहीं पीता। आई एम अ चाय पर्सन। आई लव चाय। थर्ड वेव भी अपना है। तो क्या हम की प्यास लगा, एक चाय बताओ। क्या हम अपरिच को ये भाई को नेक्स्ट शार्क टैंक सीजन 23 में देख सकते हैं? किसको? We don't need anything. अपरिच से नाम है ना इनका? नहीं इनको चाहिए नहीं, चायोस तो बहुत बड़ा है यार चायोस तो। ए अभिलाष तेरे को हल्के में ले रहा है गुल्ली भाई। अरे नहीं मतलब इस बार शार्क टैंक में देखा ना, मैक्सिमम सब बड़े स्टार्टअप्स से ही आए हुए लोग। चायोस तो बहुत बड़ा है यार। बहुत नहीं अरे तो मैक्सिमम इस बार शार्क टैंक में जो आए हैं काफी सारे कंटेस्टेंट्स, वो किसी ना किसी बड़े नया स्टिकर ऊपर। अच्छा उसको छोड़ के आए। वैसे जस्ट सेइंग गाइस, उनको गौरव तनेजा को अप्रोच किया था ना पूरा कैंपेन हुआ, वो नहीं हुआ वो। हाँ थोड़ा बजट हाई था उनका, वैसे अप्रोच किया था। सुन अच्छा, चायोस छोड़ के तेरा कोई प्लान है क्या अभिष मैथ्यू? सबको इधर बता दो ना, सबका नाम इधर ही ले दो जो आपके मन में आ रहा है। मैं एक्चुअली इतना जोक मारा, क्या? मैं भूल गया असली नाम। क्या है असली नाम? अभिनव। ओह अरे अंकिता तुम वॉक इन कर रहे हैं लोग। गाइस गेम स्टार्ट हो गया, लेट्स गो चलो। हां गेम स्टार्ट हो गया। वॉक इन कर रहे हैं। The space was taken.
वैसे this onslaught, Buzz. चलो इस बहाने पता चल रहा है तन्मय भाई को कितना नाम पता है match him pound for pound, take the fight right to it, flash over the top. भाई DRX जीत गई मैं बता रहा हूँ DRX जीत गई भाई. Being played with the composition. रका क्या बोल रहे थे? Push to the limits in map 5. It all बताऊंगा बाद began में with a pistol round and it ends in a whimper for Loud. ये हम वापस पिस्टल जीत गए. DRX pick up another तन्मय pistol. भाई ऑर्डर कर लो. And after Loud got the first 4 in a row. दाल और फ्राइड राइस. दाल और फ्राइड राइस. Wins that we've seen DRX. भाई जेट को कुत्ते ने काटा फिर भी उसने 3 मारे. Where they're getting favored. They're also starting out each of the maps more favored. 5 मार्च 2021. I think also the Des mentioned it, but DRX have undergone a positional shift too. They've been playing triple initiator pretty much since they filled the composition in May of last year. And now they're back to just playing the standard stuff. This is the most meta comp you could possibly come up with on this map. Oh, Paranoia is good. मैं पहले ही बोला था कौन मनुष्य बोल रहा था ब्रिटिश was decent enough to drop Mako down to 32 health. No kill claim, no. बचा Strix ने अभी तक जो टीम को सपोर्ट किया सब हारे हैं सब के सब मनुष्य है ना वो बहुत ज्यादा as these two killjoys try to use शायद the अपने Viper भाई के all 500 against की each other. वेट कर रहे हो So तब that's से कर something to देंगे keep your eye on later on. यार 500 की नहीं हो जाएंगे इस साल हो जाएंगे So far it's being played, just cutting up the side in that manner. It's an unusual composition, unorthodox from Loud, and moments like this, Josh. Listen, map 5, you get pushed to your limits. You've got untested players newly added to your team. तो अब सब लोग DRX से ही moments like this where sometimes that can loud DRX. तो DRX. पांडे जी भी DRX. भाई Francis been on the big stage before, but never in a moment like चायो स्टिकर नहीं स्टिकर मतलब क्या बोल रहे हैं pretty much brand new to it. ये जैसे ये लगा हुआ है ना As Aspas was, as Les was, the year prior. Pressure formed those players into absolute diamonds. इनके sponsors हैं. They had the whole year to get up to that point. For 2022, this is a different tale. First major event of this 2023 VCT season. ये कह रहे हैं अभिनव अग्रवाल भाई हैं क्या ये? We can buy pistols. किसने पहचान लिया तुम्हें यहाँ? Cannot withstand it. Nice. Mako's an IDH, but the matter's not listening. Make sure that you start building up those ultimates onto everybody else. तू तो है ही पनौती वो तो अंकी और पिंकी सपोर्ट कर रहे हैं वैसे DRX जीत रहा है. ठीक है भाई. Welcome to Flawless. यही होता है लड़कों के साथ. देख रहे हो क्या भाई पूरे sexist. This platform में sexist comment they're going to be more no, complex just based on the composition that's being played, and it doesn't look as defense-sided to be the comp. I love Bangalore. Maybe it will play out like that. We'll just have to wait. अरे भाई अभी लोग नहीं करेंगे तुम्हें देखना जॉब के लिए. Unmarked territory here. यहाँ boss. DRX on a bonus. Guys, unemployed लौंडे कितने बैठे जल्दी बताओ. As Loud take A main. हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं बताना जरा. He was here before. Yep. He's doing the same play twice in a row. Paranoia. कल रात को भी तुम लोग वॉच पार्टी करेगा ना मैं कल रात को भी आएगा. अबे मार. Contacting. Notices Oh, nice. no way does Mako get away with that. देखो ये दिक्कत है यहाँ पे ना हेल्प नहीं कर रहा उसे कोई. TP smoked across. Sadak making the most of it. Running and gunning. अरे निकल गया वो. नहीं मारा. Sadak invested in the same type of wall in all of these rounds. You can see the response that it's had from Zest. He's trying to get in. बोनस राउंड है ना DRX के लिए. Everybody from Loud though grouped up ready to go for an A-side hit, but without the jet, how do they actually get in? Take the molly. They please go for some kind of TP play. So much knowledge. That path, fragment nade is good for it. Knife as well, no abilities. जीत गए भाई DRX. कहाँ Time किसके being bled off साथ? the clock. मैं और पांडे खेलता है मेंबर्स ओनली पे खेलता है. हम लोग अभी एज ऑफ एम्पायर्स बहुत खेल रहे हैं. The call is made to just barrel through and take the space. Brute force. ए राका तू एज ऑफ एम्पायर्स खेलता है क्या? The gun नहीं मैं नहीं खेलता एज ऑफ एम्पायर. मैं खेली नहीं आज तक. एज ऑफ एम्पायर्स अगर कभी खेलना हो ना तो मर्सी को बोल दूंगा मैं. वो तो मतलब मर्सी के 2 खेलता है 3 4 खेलता है. माइथोलॉजी का खेल पूरा पागल है. ये जो कॉन्करर Placement slightly. वो Oh, सारा dash into the cloud burst. The rifle spam enough. Loud too well there. Yeah, another thing Who that killed Loud the are doing Patu? fantastically Age of is Conquerors that का खेला. when there isn't a smoke in A main, they're holding angles and Any slowly other moving chat to the kindly side. give me an And that's actually intention something the of old squad did Age fantastically of too. Conquerors. Making sure that they post many players up as they scale into A. अविनाश नहीं है अभिनव है भाई. ये भाई स्क्वाड मोड गाइस एक गोल्डी बार में मर्सी का नंबर भेजो ना. हम लोग डेली रात को 1 घंटा मारता है.
Age of The anchor's Empires. swinging. Abhinav. मर्सी को मर्सी का नंबर भेजना मैं मर्सी को पूछता हूँ अभिनव मर्सी को सीधा बोला फ्रेंचाइजी 8 player game है ना वो? Mako Age of Empires मैं भी खेलता था wine बचपन this में time. 8 player फ्रेंचाइजी है ही नहीं फ्रेंचाइजी भाई इसमें बहुत कुछ हो सकता है वेरिएंट्स है 1v1 अभिनव भाई आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर सकते हो Broken drone. Just now clearing some space into mid, another tag. हो गया भाई स्पैम हो गया ओवर टाइम जाएगा तो कितना मजा ही And what a आता smart turret position here actually from RB. ऑडियंस का क्या हालत होगा ना वहाँ पे Information behind the Viper मैं wall. चाहता तो हूँ वैसे ही होगा जैसे हमारा Stack PLT three लैंड players मैचेस from the होता है defense on the A side. They don't have to be worried about the Viper. 2-3 ब्राजीलियन फैन रो देंगे तो मजा ही आ जाएगा Smoke dropped down and the fragment nade. They thought there was going to be a bit more थैंक यू फॉर द फाइट behind that push. Loud happy to wait it out. Immortal Setting themselves up now for a bit of potential attempt here at the split. बहुत just holding his मैं space. बोल रहा हूँ अगर Smoke dropped down at the feet of Buzz. Has to respect it now with a snake bite there. ठीक है केस ने गन वो ड्रॉप करने Forwards, Trailblazer, dash forwards though. Aspas. It's the man to watch here. ये तो मैंने ड्रॉप क्यों किया Positioning into Jenny and he opens it up. What is the response? Any sort of answer? The answer is no. ओमेन के ब्लाइंड दो से भी निकाला टूटता है मातो ने राका दो पता है Sight ना hits are still looking immaculate. It's ओमेन the का same ब्लाइंड से वो strength. कांच ओ पे डाल भाई! के The भी form टूटता of है। the भाई, but the almost. way that they हाँ, दो hold for shot each other, getting into the sight is perfect. हील हो गया वो पूरा 2v3 पॉसिबल है डूएबल ये है पता थ्रो हुआ है पिछला राउंड 2v3, पूरा थ्रो door हुआ broken. Enough done. Dart now online. एयर ट्रीटमेंट बता दो प्लीज Cross. भाई हाई अपना अरे वो कैसे जाएंगे उसने अंडर स्प्रे मारा But it's left it down to the 1v1. Test drops down. भाई तो Silence एपिक enters the अरे arena. यार With bated breath. उसने स्प्रे अंडर हेवन स्प्रे में 2 मारे हेडशॉट But it's time. No जो जीतेगा उस disappointment. रीजन की टीम को जापान में चांस मिलेगा Great 1v1 to win for Currency. जापान में One of those rookie players, like you said, Brent, stepping up. What was the? भाई ये that क्या is था भाई absurd. ये क्या था भाई Something कुछ भी weird मर गया happening with the भाई recon dart. I mean, the recon does look really interesting. पता है लाउड के actually फर्स्ट expected- मैच में Seems क्या like it हुआ would था clear quite a lot of the site, but that is just उनकी all audience है ना, intuition. लाउड Nevertheless, a round on the board for Loud and वो demonstrating shout करके really calls good performances करी from their newer players कि in terms of जब the डिफेंस teamwork में and लाउड the तो clutchability. एक कमिट हो रहा है तो पूरा ये ऐसे कोई चिल्ला नौकरी रहे है तो बताना DRX's attack side really let them down earlier on in this tournament. It was with a different composition, but they lost to BBL. That's not the kind of team that DRX should really be losing a set to based on their prior record. But they just couldn't get an attack round going. अब आ रही And है that मैं means बता रहा हूँ DRX, अब the pressure is लाउड on अब ये this गर्म हो गया side. आसपास Definitely is, but with the weapon difference here, it should be easy pickings. Indeed, it is. Wider swing of stacks. बजने ओ भाई The crowd. Silence for about a moment. And so, अभिनव भाई से around पूछो that was पाकिस्तान में कोई necessary, or at ग्राउंड least should have been going Loud's way. They do get it. And now Loud start to build up to some big ults too. Timeout for लड़कियां अगर रोएंगी तो Yeah, कितना मजा DRX आएगा take a timeout here. What kind of dark Looking to adjust. And I think at this point in the game, if DRX have looked at any यार of मेरे को Sadak's प्रोडक्शन spots, अच्छा नहीं लगा and I say Sadak specifically, जीत गया लाउड जीत गया this मेरे को कितना लीक्स स्कैरी मिला दिखता है वो Loud स्टेज नहीं नीचे से खाली है मेरे को लीक्स मिल चुका है लाउड हैज how वन Sadak calls on this map, DRX there's a one, huge nice. amount of Loud. explore the map, end in an AXX. मेरे को कॉल आया था Take A main early, DRX 4-1 split भाई into कुछ भी A. हो क्राउड पे है Huge amounts of that. हाँ And then रखा they get अरे like 4 अरे मैंने rounds उस on their मतलब attack के नहीं side. करा यार मैंने रैंडम नहीं बोला था This roster is going to play differently, but so far, Sadak's calling on the attack side is quite similar. And so this timeout might be useful for DRX to make some necessary adjustments. And I think one of the big Instagram पे खोल adjustments रहा is तू? from Mako. A main has got to be smoked off all the time. None of this playing aggressive in A. The one way is not even really that useful because you can't stop Loud from taking it. वॉच पार्टी में भी आरपी का असर There है when Loud tried to hit into the site, and that IPL means camera. Loud are going to be able to set up many people, 2, 3 people with guns holding angles as they get into A. अरे कैमरे बदल A lot of parity between these two teams. Will DRX have the answer to bring us even? तन्मय भाई स्टैंड अप Timeout कर was भाई taken तन्मय just for भाई this. स्टैंड अप Buzz has that operator. Could be part of it.
close knife. Dart over the top. भाई कितनी मेहनत से उसने लाइनअप सीखा यूट्यूब से और वो वहां जाके उसने तोड़ दिया पहले बात कर दिया इधर आ रहे ऑपर को ऐसा मारा उसने So good from Les. That's the third or fourth bullet that connects with the head of Buzz. भाई पूरा ऐसा मोटिवेशन टूट जाता है हार गए बस भाई अब मैं बता रहा हूँ आसपास मारेगा बस Great opening pick. किसके टीम में है मेरा अरे यार मैं हूँ DRX की टीम में बदलते हैं यार ये देखो ना Putting a stop to this, but still the Vipor lets them रका get in. चुपचाप वापस आओ DRX पे Up and समझे around ना Stacks. Will he be the difference maker? हाँ TP into the back of the site. Reinforcements have arrived in the form of भाई Mako. स्पैम कर दे भाई वो भागे वो साइड लेके फेक साउंड देके वापस भी जाएंगे मोस्ट And this now puts everything in the hands of RB. Sole player on A. Looked like he wanted to cut them off the catwalk, but instead just playing around the swamps. No smoke on the site to play around. Where's that from Mako? Entire team is just funneled right now from Loud all the way into the site straight through. Paranoia. RB not caught by it. Off to the side. Spray. Oh nice. Lustbuster's not come up with the goods. Viper's Pit though might do some सब damage. यूज कर दिया भाई इस पे उसके क्यों मार रहे Pushing forwards. So much damage though. Yep, Kawazine not going out unscathed. Dart. करना A स्पैम bounce there into hell, broken. Sees Zesta hunting Doran. लेकिन वो लोग देख रिटेक के लिए आए भी नहीं रहे Nobody हाँ, else उसकी टीम looking आई like they want to go for the retake. क्या सेव कर रहे हैं वाइपर अल्ट मार दिया HP, a 3v3. तो इसके बाद ड्रोन नहीं DRX अच्छा ड्रोन They don't want any piece of that. चांसेस था अगर सोवा अल्ट मारता पार्ट 2 भाई 4 आदमी घुसा देंगे पीछे जो है हमारे पर किल ले लेंगे थोड़ी अपनी लॉबी चल रही है भाई ये 1 HP पे है यार कोई तो ट्राई बनता था रे उनको नहीं मालूम ना 1 HP हां वाइपर अल्ट या बाय नेक्स्ट राउंड $200 तो मैं तेरे यार को मगर अगर सुबह की अल्ट मस्त है Here at map 5. गुड प्लेयर And honestly, they're not मैं राका भाई को रेफरेंस दे रहा हूं कि अपने को गोल लॉबी नहीं है 3:30 रात 4 हमारे जैसों को आगे घुसा के किल ले लेंगे और that you see 2:30 everything. बजे अभिनव भाई पे ध्यान दे रहे कुछ तो रिएक्ट करे मैच Throwing DRX off a little bit. अरे उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना क्या है और पार्ट में ब्राजील में जाके मुंबई सर्वर पे नहीं मिलता याद रखो Buzz does भाई not ब्राजील का expect to सर्वर lose मुंबई his head सर्वर that होगा quickly मान after a ले थोड़ा तो दिमाग लगाओ नहीं आप ब्लड लाइन से बुला सकते हो तब मैं आपको कौन सा सर्वर पसंद है मुंबई या सिंगापुर या मुंबई खेलते हो खाली मैं सिर्फ मुंबई खेलता हूँ Just that snake bite. भाई मजा आता है यार जब पब्लिक ऐसा That's so much difficulty. पब्लिक ट्रिगर होके गाली देता है उनको ट्रिगर करने में भी मजा आता है मतलब वैसे थोड़ा तो तन्मय भाई आपने कभी अपना जैसे वैलोरेंट का एक्सपीरियंस कभी सोचा स्टैंड अप पे यूज करने के लिए स्टैंड अप में वैलो इज माको नॉट माको एज चल रहा है ना पॉपुलर लोग स्टैंड अप में रैंडम जनता आती है हां तो मतलब उसमें चले they उसमें won't चलेगा be नहीं। even aware about what's happening उनको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं वैसा सीन है मेरे को बहुत मजा आता है मैं मुंबई सर्वर पे खेलता हूँ और मैं तो चैट से बात करते करते खेलता हूँ तो मैं खराब खेलता हूँ और एक बंदा मेरे को 3 बार भोसड़ी के बुलाता है फिर उसको पता चलता है कि मैं हूँ फिर वो सॉरी भैया बोलता है मजा तो आता है यार बच्चों को ट्रिगर करने में ये अलग है। क्या टैप था You could have been that extra element, the backstab into this अरे भाई आरबी तो है आरबी तो आसपास मारा आरबी एक और किल मिलेगा लेट्स गो आरबी भाई ओह शिट भाई आरबी क्या होल्ड कर रहा है भाई आरबी सेक्सी खेलता है अब ये लोग नहीं जाएंगे किल जाके साइड weapons still in their hands, the bank can start to get built. नाइस Very nice play. भी जाएंगे Look at Buzz here. क्या मस्त साउंड है ना हां इनकी गर्ल्स की बारा भाई एक बार ट्राई कर रहा हूं मैं अभी स्पेनिश लगा के गेम में मैं करने वाला हूं एक गेम हर गेम डिफरेंट लैंग्वेज मगर एक डिफिकल्टी है वो वापस चेंज कैसे करेंगे हम सेटिंग तो उधर ही होगा ना अब देख लो वहां पे मतलब इजी है Buzz creeps into an advanced position here. स्काई का फ्लैश इनको भी देता है राजू भाई नंबर गिन लियो ना कौन सा नंबर Flash over the top. अबे इस राउंड से पहले आरबी एक Then what's your भाई अच्छा खेला agent? किल की बात नहीं होती उसने एक राउंड निकाला आई प्ले जो चाहिए था सेंट्रल में मैं सेज खेलता हूँ ये भागेगा कंट्रोलर में मैं ब्रिम खेलता हूँ ये मना और ड्यूलिस्ट में सिर्फ फिनिक्स आता है Remove 4 and Buzz. मुझे पता था इनिशिएटर कोई नहीं है गोल्डी भाई मेरा ऐसा मैं चेंबर खेल रहा हूं फिलहाल लेकिन अभी मैं फिनिक्स और रेना थोड़ा रैंक पुश करना है तो ड्यूलिस्ट ज्यादा खेल रहा हूं An absolute rock, the foundation of the team in the last 2 maps.
सोलो की कुत्ते ने स्पॉट नहीं किया सोलो नहीं, मैंने अपने ही चैनल नहीं किया, उसका एक्सपी फुल है। अरे काटा है उसको 3091 है, क्या बोल रहा है? 30 HP का है उसका। नल्ला बूट कैंप है हमारा। Oh my goodness. It's getting tenuous. नहीं, नाम Les नल्ला really बूट wants to कैंप। get into an advantage. Does RB even choose to go for it? 3v5 and DRX. गोल्ड वेलक नहीं यार, ऐसा मत बोलो यार। गेम वापस सेव कर रहे हैं लोग, देखो। At some point here, you're giving up too many बेस्ट ऑफ 5 है, तो ये लोगों का ऑप्शन ही नहीं है ना, 5 दिन क्या जीत चुके even in the दो जीत चुके हैं। ये अगर ये जो होता है ना 13 पे खत्म हो जाता है, 13 इज मैच पॉइंट। जैसे अगर 5 पे ये लोग अटेम्प्ट भी नहीं करते, लास्ट राउंड चल रहे हैं, ठीक है, ये 5 ये 5 ये टीम है, इनकी 5 मारना है इसको। अभी बॉम्ब प्लांट करना है बस, ये हर राउंड चल रहा है ना। अब उन्होंने बॉम्ब प्लांट कर दिया, मार उन्होंने डिफ्यूज हाँ खेला ना, ये गन बचा के नहीं रहा है, खेला शायद तुमने भाई एक बार लाउड वालों को what's really going wrong for them is that they can't stop the A split. बॉम्ब प्लांट करना है, They run out of utility. या तो बॉम्ब Maybe part of that, Brian, is that Stax is getting pulled away from A. Right? He feels like तन्मय भाई के हाथ पे मैंने भी भरोसा किया। मैंने हाँ बोला ही नहीं था यार। करो, मैंने हाँ ही नहीं बोला था। करो, भगवान से बोला था कि शादी है इस डेट पे गोवा में, मैंने बोला ठीक है, ठीक है बोला था। ठीक है, कर ले शादी। राका भाई से बढ़िया नहीं, मैंने बोला था इन्फॉर्मेशन रिसीव। It's a little more difficult when you play sat back in the site. टुट्टू नहीं क्या है? और कितनी कम करूं भाई, 20% है, सुनो ना आगे मैं। Second क्यूट लग रहा है timeout लेकिन। used for DRX in the first half here. तो इसमें क्या है, इन चैट में ये जो लोग हैं ना, जो ये वाली कस्टम इमोजीज, ये मेंबर्स हैं, मतलब ये 159 पर मंथ पे करते हैं। और ये डिफरेंट देख लो, ये रेड वाला है, ये 1 मंथ हुआ है, ऐसे ब्लू वाले को 2 मंथ हुए हैं। लेकिन मेरे और गोल्डी भाई के बीच में बेटर कौन खेलता है? पहलो गोल्डी भाई ये सबसे वाले को 12 मंथ हो गए, ये वाले को 24 मंथ। गोल्डी भाई बेटर खेलते क्या? तो मेरे को ठीक से देखा नहीं है रे बिंग, मेरे को प्रॉपर्ली देख रहा है। मैंने आपका क्या है रैंक, क्या है गोल्डी भाई? मेरा रैंक तो है प्लैटिनम 1, बट मैं ये असेंडेंट्स के साथ खेलता हूँ, कभी-कभी इनसे ऊपर टॉप, मतलब बेटर फ्रैग करता हूँ। पार्ट 2 नहीं, तन्मय भाई 100% बोल रहा, बात मान लो। वो अंडरएस्टिमेट कर रहा है मेरे को बिंग को। मैं तन्मय में बोलता हूँ 6 महीने पहले तक इफ यू वुड हैव आस्क्ड आई वुड हैव सेड यू। नहीं 6 महीने पहले भी आप ही गोल्डी भाई मैंने इम्प्रूव किया अपने स्किल्स को। He just can't find value. सेव कर लो सालो, Loud know exactly क्यों where ही he's खेल रहे going हो, to सेव ही कर be, लो। and that is massive value coming out from the Viper Wall, वापस right? बस मार गया। It can stay up for so long. भाई अब लाउड हार Doesn't गई, feel मैं बता रहा comfortable हूँ। pushing through it necessarily because you take so much damage. Very राका difficult for Buzz to play around this when Loud are इतना so पार्टी बदल रहा है slow राका। and diligent at the beginning. अरे यार वो पता है 2 राउंड थ्रो हुए लेजिट, वो उसमें वो कर सकते थे, वो 3v3 जो छोड़ा। ऑल दे देगा ना फिर रखा। अरे आरबी ले लिया एक, और हो गया एक और ट्रेड हो गया। अरे यार 2v2 नहीं 2v3 सब साइड पे रे सैक्स। बहुत दूर है। चलो तीनों साइड। पैसा है, एक और बाय राउंड कर सकता है। दोनों के पास ब्लाइंड है, हो सकता है, दोनों के पास ब्लाइंड है। 2v3. ये स्पैम भी तो नहीं कर रहे। ओ नाइस, बोला था ना बड़ी, मगर एक बात बता, वो स्पैम क्यों नहीं कर रहे बॉल पे वहां पे? वो उसका फ्लैश ऊपर फ्लैश कैन से राइशा एनएचके, राइशा थैंक यू। ओ राइशा एनएचके भाई गॉड फ्लैश था वो, एक्चुअली पूरी साइड फ्लैश थी वहां। A lifeline for DRX to hold on to. Actually, women के flash से flash getting ripped out of their hands. But the retake looks nice there. बहुत अच्छा रीटेक था, बहुत अच्छा था। Perhaps playing retake B and stacking players more towards A would be the solution here. एक सेकंड आएगा, इस सी ऑफ करके सब लोग लाइन in a fairly even situation.
Stax drifting over to A, uses the fragment grenade early though to try and establish a main presence. Very early. But surely they can't hold on to this. It's just to get Buzz set up with the operator. I mean, surely he doesn't get away with this. Oh, contact big dash. Disengaged. Cutle. Oh, bye. Just one more tick of damage might have done it. Paranoia used as well though. And Mako forced to smoke up. Pushes it back, spam down onto the Trailblazer. Oh, Smexy blind दिया था, लेकिन उसका भी blind बहुत अच्छा था. Survive in the midst of all of this unless is that backstab. Revive मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा. Pressure down. There was a no command मिलेगा popped ना off क्यों though. नहीं? इतना जल्दी नहीं So let's see करेंगे if they can get a वाला. resurrection there onto Stack. Smoked off. Mako wants to take the risk while the rotation is happening. There was no punish. And this looks like it's going to be another A split. Mako has used one of his smokes here on Catwalk. So Sanak's going to have an opportunity to support the rest of his team. Mako's just got to go huge. I mean, and this smoke, it's not going to last forever. Smoke's going to fade away in but a moment. Stack's jump peeking just in case they pushed. Kill found. Does not gain the second. The trade online but Buzz still back at the site, knows that they're going to be coming and misses the shot. Oh, miss कर दिया. Big miss. Turn snap though. Locked on and players are weak. The time, the pressure is mounting. ये क्या था? एक बंदा just down to less. पिक करके मारना चाहता है, एक बंदा रिकॉन मार रहा है. Shock darts going wide, maybe. Bit of a blunder there by Zest. Pop flash Play-Doh, fully blinded and Stack's not willing. भाई ऑफ फ्लैश क्रेजी लग रहा है लेकिन. देख रहे हो Zest से उन लोग ने केवल ले लिया राका, बोला तू नहीं खेलेगा. Pretty critical kill. DRX are just about holding on here. You can see their macro game is really getting tested. Stax as an IGL is struggling at the moment to find the right answers. But Stax as a player still makes all the right moves, gets himself in position to rely on his gunplay. And as Mako buys time, wow, that is nice. And then swinging off the recon dart that Zest throws in. Good stuff. And it draws things level at 5-5. It's still a great attack half. Yeah, it is. Feels like DRX haven't quite earned enough rounds to bail themselves out just yet. They're still in that danger zone. When the sides end up swapping. This time it's Mako. Attempt into mid. Deep push. Different angle. And look at that. Holding for the common dart position just to pre-fire it. Stacks. Just a cat there. Mako backs away. That's crazy. They were going for a mid-crunch off Mako's Paranoia, and Stax was supposed to be trying to contest them from Cat. He just got blown up. And now Mako's got no utility. Semifinal Smoke will come back online shortly, but drone forced to be used as well. Lauda set up for another great A split. No one to offset this one, is it? Trailblazer. Aspas not making any noise, but the alarm bot now is going to be notifying them. DRX are aware there was a player pushed up behind that one. Looks like Laudo trying to fake like it could have been just a bit of presence. Dash still online. Turret broken. It's now going to be the time to strike. Angle blocked off. Alba's going to be fading though, and a re-smoke as well so that they can cross. And Mako, will he be the player to watch? Will he be the difference maker? Snake bite! Oh my God! And he holds it down in the smoke. Pressure at his back. Less will respond in kind. RB, wide swing. The players the spike is on the other side of the door. This is some They've got to go and break it. Have to break it, and they have retrieved it. भाई ये लोग क्या लेवल का क्रॉसफायर रखते हैं? Stops the blood. Nice. अरे एक सेकंड और लेफ्ट आ जाता ना नाइस भी होता. इजी जा रहा है यार ये मैच. Throw round from Mako. Loud answer back. क्या क्रॉसफायर रखते हैं ये लोग? What more can he do? 3 kills inside his smoke. Should have shut the round down, but a response perfect from Les from Tui's. Look at the timing there. That re-swing just as the door's coming down. It's great, and there's the frustration rippling through every part, every bone in their body. Can DRX make it 6-6? Give us a half with the same level of parity as Fracture. 6-6 ascent pay is like really good, no attack. At the attack. moment, it feels like everything is with Loud. Managed to recover. लेकिन जैसा अभी Loud कर रहा है ना वैसा DRX नहीं कर पाएगा. Map 3, map 4. Drone from Zest. ये Loud के पास डबल कंट्रोलर है ना तो वो लोग बहुत
वो कर रहे rotation hold कर रहे. There's no Hunter's Fury. Just looks like he's trying to break it with shock darts. He might get punished here. He's trying to evacuate out, and it didn't break that lockdown. Still doesn't get detained. Has to be the full retake. नहीं, Loud के पास double controller है ना. हाँ, वही मैं बोल रहा, तो इसलिए DRX rotate नहीं कर पा रहा ना बराबर. DRX के टाइम पे एक ही है. Watch for a little bit too late. Buzz doesn't recognize the threat that was coming his way in 2 years. A very smart reposition. Has to be the committal. Flash. Push them back, Sanak. Lines it up. 7-5. Tumbling, falling, this way, that way. But उसने 3 मारे. Marco. Unable to stand up to it. Oh yeah. Style points, baby. GG. Loud is back. बढ़िया attacking है. First pistol जीता तो. I'm sure the players can too. Loud have set themselves up in a winning position to head forwards into the grand finals. नहीं, attacking map ही है, लेकिन seal the deal or for DRX to answer. वो लोग बस एक ही controller है ना, तो वो लोग जल्दी rotate. Bit of disrespect there towards the end as well as Cowan lands the final kill with a shorty of all things. They knew that he was low, and still, well, send it down to Yinsu on the floor, who's got another special guest. Thank you very much, Saisho and Brand. They're all special guests, and I'm joined right now by John. Welcome. I know you're an IRL streamer, and this is your first ever time at a Valorant event. So, what's it been like? Have you been having fun? Yeah, I've been having fun. It's an amazing time, amazing energy out here in Brazil. Fans are going crazy. Yeah, content creator Loud. But dang, it's wild what they made here. The craziness, all the people. उसका watch देखा? I like it. Is this what you कितने diamonds expected? उसमें? You know, you didn't really know. owner है क्या? Transparent. Valorant esports. Earphone सबका same है. वो तो. अरे ये इसका Loud का ओनर वो है ना, ब्राजीलियन वो ब्राजील कह रहा हूँ, वो साउथ क्या है यार, ब्राजील का फुटबॉल प्लेयर. Neymar. It's really special for Brazilian fans. Neymar need retired. Out here, it means something. Neymar, Hulk, Oscar. So would you be able to tell me about? Yeah, I mean, there's a huge meme on the internet. It's like, come to Brazil, come to Brazil, come to Brazil. They throw it everywhere, and it's literally like, hey, we love the sport, we love the music, we love things from around the world, and we want some love as well. You know, give us your energy. We're gonna give you energy back. It's gonna be something wild. I think you guys are gonna like it. You're gonna rock it, and it's. ये streamer है क्या बंदा? भाई 7 million subscribers हैं. 7 million. Channel your energy to them. What are you gonna say to them? Man, they've got this. They've got this. Sergio Aguero है. Bring it home. And Argentina. their house. हाँ, वो तो it's their home city. It's the script is written. Back-to-back champs? Back to back. Let's go. Okay, well, John believes in them. I'm not sure what's going to happen in the second क्या? round. 7-5 पे half खत्म हुआ? Because I can't wait to find out. तू कहाँ था इतने टाइम? राका भाई जाओ, दाल खाओ जाओ. Pushing Loud forwards. जल्दी राका भाई दाल गरम करो, चलो. Make it inaccessible for DRX to make them repeat history once more. And insane that if they win this half, they 7 million तो मैं सोच ही नहीं सकता कभी मेरे होंगे. जो भी Loud जीतेगा तो भी DRX अच्छा खेला रहा. अरे बहुत अच्छा खेला रे, क्या पिकअप किया 2-0 हारने के बाद इतना. और बेसिकली बात की जाए बस की, 3 किल पे था वो फर्स्ट मैप में. मैं तो बोलूंगा जो भी हो DRX जीतेगा पर Loud going to be true of this squad. Fast push out for ASUS, who's struggling at the moment to be able to generate kills, but its team's got his back anyway. I'll be close. Spam play, one-way smoke behind him. Where's the swing? Where's the attempt? Just wait it. It's a call to be made. DRX भाई वो वहाँ से वापस चले गए, मिड से नहीं आए. Know that it's going to be an accessible A side still. That util. Placed down, Nana Swarms on the one side of Jenny. Stacks is in trouble, and it does offset that plan. Crucial time being bought. Loud. 5v5 now on the retake. And it's starting to swarm all the way in. Opening kill found. Jumping right clicks. It's DRX who just cannot withstand it. The tempo has been brought to. 1 second में 3 Time मर of the गए. spike. Viper all blocks. Nice. Wow. What is that? Denied. Smoke. Dissipates. Reset of the aim. RB. He's buying time right now, and he just can't get the kill. 10 out for Marco. कहाँ मार्क कर रहा है उसका टीममेट? भाई क्या घूम के दिया लेकिन? एंटी यार. वो भाई इसको भी दिया. And it does. Josh Phil. भाई गलत मार्क कर रहा था मैं, यही स्पाइक गलत मार्क कर रहा था. हाँ, कहाँ मार्क कर रहे थे उसके टीममेट? राइट पे कहाँ मार्क कर रहे हैं? नंबर भाई नेक्स्ट वीडियो कभी आ रहा है? 4 तारीख परसों. और? Okay. Just a tumble at the final hurdle.
It's one thing to defeat your demons and get over the choking problem. It's another thing to go from title contender to trophy lifter. It really is a long way up to the top of the mountain. Maybe DRX just aren't quite there yet. भाई close तो था यार मैच कुछ भी कहो. Let's take a look. कोई नहीं आप reason ready रखो. Sanak's going to be controlling this area of the map with those snake bites very often. It's going to bleed a ton of time off the rounds. You can, of course, go across and over them, as Buzz has just done. But it means you're dropping from a height and not Super chat में whenever we get a chance to have Guru Masal. Dual controller ही नया meta पता. अभी भी doable है, but he's 4-11 right now. नहीं अब हो गया खत्म. Defense में या उनको जहाँ पे smoke डाला वहाँ पे वो लोग को जाना ही पड़ेगा. उन लोगों को option नहीं है. Across fracture in a set, he's currently 13 and 27, I think it is. But the rest of Loud has stepped up. It is not ASUS carrying the team anymore, like it felt like on the first 3 maps. लेकिन मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा है DRX के लिए क्योंकि जो 2 मैप हारने के बाद 2 मैप जीता है ना. रेस्पेक्ट तो कमाया. नहीं रे भाई रेस्पेक्ट नहीं वो भाई बनता है जीतना पता है वो अच्छा खेली. तो लाउड भी तो अच्छा डिफेंस में अबे डिफेंस में 2 राउंड थ्रो हुए भाई क्या फ्रैक्चर क्या खेली है भाई DRX. चलो एंड में आपको 2 राउंड एक्स्ट्रा दे दे फिर भी आप हारोगे. Come on guys, come on. I still believe. Let's go boys. Let's go. Korean Jet आजा यार बस Korean Jet हो जाए. DRX have got to stop this one. Sad हुआ. At the very least, if they have a chance here of pushing some attacking rounds through, they've got to be able to convert when they have an advantage like this. Needs to happen here. The advantage is on their side. It's a round that they should be converting. Dire circumstances. They're unable to grab. ऑर्डर कर दो डाल. नहीं. आप पहले गाली दे दो फिर सपोर्ट करो. किसको सपोर्ट कर रहा है? मैं स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहा हूँ DRX को ही. The layers of this utility, Loud are just able to really control most areas of the map. भाई वन टैप मत खा लियो भाई. ओ माँ को वन टैप मत खा लियो. Now though, regrouping up and well. Tuku, thank you for the response. Welcome back, buddy. A flash into middle from Kawanzine. Doesn't see anything. And Loud are going for a gamble over towards A. It's correct. Smoke drop, Paranoia, that's ripped its way across, and so Sadak does have to back away, but he's still alive inside this smoke. Eventually those spammed out. Shots rattled one after another. Loud are making this dangerous. Bulldog now. Upgrading a weaponry for ASUS. What can he do? Reset. भाई अभी थ्रो हो जाता पता है. Can't manage the spray transfer, can't quite. भाई ये लेस मारता है यार. So 1v3. ये देख रहे हो बहुत हरामी है ये बंदा. क्या है मैं बे बहुत सही मारता है ये बंदा. देख रहा 4-3 गन गिर गई. उसने शायद ट्रिपल डिंग दिया उसको. My word, was it expensive? Yeah, very expensive. लाइक करो. स्कोर देख रहा है राका. स्कोर देख रहा है. Everything on the other 3. आसपास के पास ऑफ आ गया भाई. मैजिक नंबर हो गया है. हाँ. ASUS is going to pick up the operator for this next round as we just take another look at how that A site works. अरे यार ये सैड नहीं ले सकता. कितना दुख है यार. मैं भी ऑर्डर कर लो दाल फ्रेड. अबे रुको बे. And he's got a great feel for when to take these aggressive timings. ठीक है. You saw it before. The former team that had last ASUS still as the tip of the spear. Unbeatable essentially on this half of the map. अंकिता मेरे हिसाब से आप अकेले अभी DRX में क्योंकि पिंकी भी नहीं मैं भी भाई मैं DRX ही हूँ अभी भी. DRX ए गोली में भी DRX. But space in mid is going to be gained. चलो भाई ऑफ से तो बचे. He's missed his chance though because guess what? DRX barreling through. No time wasted. Sadak. Nice. Paranoia was slightly delayed though. It does return the fire and it returns the kill. Oh भाई 1 HP बचा वो. They pushed everybody from Loud out of the site. The question is, can they reposition into good post plant spots? The emphasis is going to be on Mako.
holding down in B main, smoked off now. What kind of timing can he take here? बस एक किल ले ले बस. वैसे तन्मय का सजेशन है वैसे तो मोस्टली वैलो या GTA खेल रहे हो स्टोरी मोड के पास जाके रोज पे डालो. हाँ ब्रिजेश भाई वो मैं करने वाला हूँ. अरे नहीं रे. अरे क्यों जा रहा है ये? हाँ रुकना था ना. क्यों जा रहा है ये माको? Leave it spray down, dropping down still. Planted, Tapovic. उनको पता नहीं हो रहा है. उसको दिख रहा है. To do so much repositions. Oh, let's go! Oh, let's go! Vijay bhai, thank you for the $20. मैं करने वाला हूँ Vijay bhai. And got the lineup of his Let's go. Unbelievable. DRX ने comeback मारा ना ये round याद रहेगा. 11-6 होता था वरना सीधा. Josh, you made the call as well. I believe that was his smoke right at the back and decided he was playing around. ये क्या था यार? अरे ये ओमन के स्मोक ने हेल्प करी इसको. वो प्लांट अच्छा था. उन लोग ने वो छोटे कॉर्नर में जो किया ना. भाई वो ना वो जो ये माकू रुकना बी पे. हाँ भाई रुकना अभी. जान दे उन्हें डिफ्यूज करने. तो तेरा डिफ्यूज प्लांट है. आगे से याद रखना. अरे यार भाई ये भाई प्लीज ये मत करो यार. भाई प्लीज फॉर फक्स सेक डूड. बिल्कुल जरूरत नहीं थी पुश करने की. राइफल दे दिया भाई. वो स्मोक करके ले भी ले. उसको राइफल लेने मत दे. सब वापस बी पे आ रहे ताकि राइफल ना ले पाए. Especially if he burnt his dash. I think the question is just whether or not he wants to take the gamble, take the risk. Please ये राउंड भी आओ यार. ये राउंड चाहिए बहुत. ये राउंड चाहिए. एक और लिया. कुछ यूटिल करके जाओ यार. हाँ भाई ऐसे. He will fall. हाँ एक भी यूटिल नहीं किया ना कुछ नहीं. हाँ ऐसे ही ड्राइली जा रहे. भाई ये अल्ट कर दी इसने. जब नहीं करनी थी तब कर दी. भाई क्यों करिए भाई को है. वो लोग लेकिन अल्टी मार के वो लोग भी निकालते हैं ना राउंड. नहीं पर 8-9 जरूरी है. निकालते भाई निकालते. भरोसा नहीं है. एक तो शायद वाइपर अल्ट है. Splits that one up. Buzz was handed an easy angle once more. Ow! You grabbing that one? जी. Turret broken though. But a spam still. वो शॉट है यार. भाई फिर भी 2 गन गिर गई. ठीक है 2 गन इज नॉट बैड. प्लीज ये राउंड और लेट्स गो अंकिता. जीतना DRX. लेट्स गो DRX. भाई क्या फाइनल्स है यार. मजा आ गया. बहुत फन था यार. अरे कल रात को नहीं Navi will steamroll. Generally to be getting more value on the attack side with no counter on the opposite. But crucially, the economy is so close to being broken for Loud. And they're already struggling on this defense half compared to what you'd expect from the former roster. This time Fnatic is looking super clean. Set up play. Yeah, but Navi is looking brutal. Looking to the sky. Like Durka needs to have a day and a half. Canceling the approach though. Opting for the lockdown. But Fanatics versus DRX will also be a sexy game. Loud are not obviously running. Fnatic और Navi भी एकदम. Buying them some space, but all players ready and waiting up there in heaven. Aspas dash forwards off to the sides. Lovely util. Nanosword pushes back with common angle. Flash play. Just trying to survive inside the smoke. बच गया भाई. Whizzes past his head, but they haven't dealt with Aspas. अरे कैसे नहीं मारा. The dog in his face. Sky should have Zest has to use his Hunter's Fury now to respond. लैंड हुआ. अरे यार इसने अल्ट कहाँ चला दी. Zest ने बहुत बाप बे. Too strong. Arby and Zest. Lone players holding down to just Zest. Half on the defuse already. My retakes बहुत strong है Loud का. 5 retakes. Fuck. अभी करोगे watch party mostly yes. भाई Zest ने कहाँ अल्टी चलाई अपनी. DRX play too many players off site. How are the players supposed to survive here, pushing heaven and in hell, when there are 2 players in A main that are doing nothing until the very end? Loud's way of getting in and applying full pressure, full aggression, all gas, no breaks. It splits DRX's post plants up into 2 fights.
First you find the people on the site, and then you worry about the people afterwards, holding, baiting their teammates. And you can feel it. जो टाइम पे स्काई ब्लाइंड किया, फिर वुमेन ब्लाइंड किया, फिर स्काई डॉग किया. But they've got their eyes set on that prize, that grand finals appearance. बहुत बुरा लग रहा है DRX मेरे and Loud were doing a bit of content together recently, just during the break, during the last 10 days. उसके बग से DRX had a काटा fun वो little, कुत्ते ने इसको. you know, Twitter video where they went and stole the trophy. Ha, you know, all funny. Loud responded with, "Yeah, don't worry, we'll just win another one आप this year." देख रहे हो मैच? Heavy details. I mean, the बस quality मारेगा. of this squad, by the look of it, they might be aiming for multiple. To really try and set up a dynasty before we get ahead of ourselves here. It's on Buzz. Updraft play. Nana Swarm, downless. भाई इसको देखो क्या भाई. My God. अरे सेव राउंड था, सेव राउंड था. नहीं लेकिन फिर भी राउंड गया था. फिर भी राउंड तो गया था. भाई तीन बंदों ने पिस्टल से मनी मारा. दो बंदों ने वेस्ट कर दिया. वो लोग ने जेट को ऐसे छोड़ दिया साइड में, और जो लोग अंदर घुसने वाले थे उनको मारा. अरे ठीक है, पर सेव राउंड था इनका. DRX. नहीं भाई DRX. तीन का डिफरेंस है. Come on, still, let's go boys, let's go. हो सकता है मेरी जान. 8 to 11. ये राउंड क्रूशियल है, ये राउंड आ गया. 2 opportunities. ना ये क्रूशियल है. खत्म. Try and get all the way. It's a good 0 point. Suppresses ASUS, but he's still going for the peak. This guy's confidence is unmatched. Dodges the drone. Not going to be used as well. Updraft tags him. Has to use the dash. उसने अपड्राफ्ट मारा ताकि ड्रोन टैग ना कर पाए. मैको कहां मर गया? भाई क्या दिमाग लगाते हो लोग? That seeds the whole half of the map there. What is Kawanzin up to? अरे जीजी रे. फिर भी मारा उसने. आईडी रहता ना. To readjust his aim. And it's just shambolic for DRX. जीजी रे. Left to desperation, contact plays through mid. Seeker's going to be meeting them pound for pound. The re-peak is there. Hey, पड़ी उसे, पड़ी. 5 HP. And Bounce falls to his knees. ये. हाँ, पांडे में कौन सी टीम है? इको डैमेज. कौन सी टीम में पांडे में? जीजी हो गया. मैं सपोर्ट वैसे अगर बोले तो मैं तो लाउड ही बोल रहा था ना. आज पैसिफिक के हिसाब से बोलने में आपको पता है. मैं तो बिग स्पाई का फैन हूं यार. लाउड. As soon as DRX go towards mid, they वाह, मैंने तो सुना था आपने पहले से लाउड बोला था. and Loud have 4 chances of going to the grand final. इन लोगों ने हमारे जी 4 chances, and there's never been a better one than this. The money for DRX. It's desperation. They're able to convert this and at least bring it back. I don't know what to say. It looks primed and ready for Loud to send the uncrowned kings all the way back to their region. And with how aggressively Loud have been playing, it could all be over in a flash. DRX are in. Dash forward, smokes to drop it, but it's going to be util used in kind. Still less is alive and waiting at the back of the site. No one dealing with him. Dodging this one, the reposition. ब्लाइंड दे दिया. ओ ब्लाइंड में मारा नहीं उसने. Good. It's all on the line. तू इसने नहीं मारा एक भी. वो क्यों भाई दिस भाई? अरे नहीं भाई जैश भाई. ओ ये किल के बाद अल्टी आ गया. पॉसिबल है 2v1. जल्दी करना पड़ेगा इनको. नहीं भाई 5 HP है ये. नो. क्या बिफ्ता हो भाई. भाई ये बहुत क्यूट है. ये बंदा ना सड़क बहुत क्यूट है. देख सड़क पे बहुत रोज आया होगा भाई. इनका जो हमेशा लाउड का बहुत ही ब्राजील. अच्छा भाई आसपास तो है भाई. आसपास तो है. Such a bitter feeling for DRX. Once more reliving the nightmares, reliving the history books. अच्छे खेले DRX यार. Good, well played. Well played रे, well played. घंटे रे. अच्छा खेले वो.
to be able to push Loud. What a comeback, bhai. Maza aa gaya. And this Brazilian crowd has absolutely been treated here. To see Loud overcome NRG. Thank you for the 50 more gifted, yaar. And then see Loud take down DRX in 5 maps. Oh, putting themselves into a third grand final. No Brazilian girl was harmed today. With 2 new players. What can't this squad do? Just unheard of. IGL कौन है इनका? सड़क. इनका. हाँ, इनका सड़क का. In a couple of days' time, to be the नए 2 players कौन है? ever to lift 2 trophies in Valorant. And Sadak, the player there at the front, the team captain in IGL, would surely cement his position as the top IGL, the top team leader in the game if that was last to become a reality. last Loud ही था. This team has achieved so much. The rookies becoming veterans instantly and bringing ये मस्त है. I mean जो सर पे था. हाँ मस्त है. देख रहे हो ध्वनि क्या कह रहा है? अरे जो सर पे था. ध्वनि देख लो क्या कह रही है? क्या कह रहा है ये? वो मस्त है. साथ में भी बैठी है. पराई को कह रहा है मस्त है. इसको ही बोल दे. इसको ही बोल दे मस्त है. भाई टीम लाउड की टीम मस्त है भाई. ये बोल रहा था. फ्रेंड्स मैं कट रहा हूँ. कल मिलते हैं. बाय. फोर्थ को मिलते हैं. बाय बाय. Thank you. Thank you for the member. Welcome. Bye Pandey. Bye. We've never had an era in Valorant. ये कल भी कर रहे हो ना तुम लोग वॉच पार्टी? मैं तो बैंगलोर जा रहा हूँ. मैं तो बता मैं तो हर दिन किया है और भी करूँगा. तुम नहीं जा रही क्या अंकिता? नहीं. ओके. तुम क्यों जा रहे हो? हाँ भाई बनाते क्या बोल. भाई अच्छा खेले भाई. बैंगलोर से गिफ्टेड इनकमिंग. लेट्स गो बेबी. बैंगलोर जा रहा हूँ. अच्छा. भाई कुछ भी कहो भाई. अच्छा नहीं खेले DRX. बहुत भाई. बहुत अच्छा खेले यार. बहुत अच्छा. फ्रैक्चर जो खेला ना. चिराग भाई with a 50 gifted. Hello. 3-2 मतलब डिजर्विंग है. 3-2 मतलब इट्स लाइक अ कॉइन टॉस. कोई भी जीत सकता है. 50 गिफ्टेड. चिराग भाई ह्यूज है भाई. एक बार चिराग के लिए प्यार हो जाए चैट्स के लिए. प्यार हो जाए चैट्स में चिराग भाई के लिए. Thank you so much चिराग भाई. Really appreciate the 50 freaking possibility that an extra team from there will go to Masters Tokyo. For Pacific, that hope is dead. DRX was carrying the flame for the region, and they've been eliminated. It is either Americas or EMEA that are winning this tournament. Age-old clash. Guys, good night. We are being Bye-bye, Goldie. I love you. What a series this was. Bye-bye, Uncle. DRX really gave it their everything. Seriously showcased some heart in this match. Bye-bye. But I'm so impressed with Loud. Unbelievable stuff shown in the series. But that's it over now. We'll see you on the other side of this. कितने बजे है? 9 बजे ना? कल फ्लाइट कितने बजे अपनी? वही तेरे से पूछ रहा था. 9 बजे ना शायद. 9 बजे नहीं. राका लाउड जितने में तेरे को 50 गिफ्टेड मिला है. हाँ. लेकिन आप तो DRX सपोर्ट कर रहे थे. इस भाई DRX अच्छा नहीं खेला यार. सच्ची बता. दोगला पेन पे कुछ व्यूज है आप पे. सिद्धेश थैंक यू. व्यूज ही तो नहीं है. व्यूज के वजह से सब्सक्राइबर्स भी नहीं है भाई. कैसे होंगे? थैंक यू. बात तो बराबर है. मेंबर का ए तेरा ये वाला कैसे जा रहे हैं वीडियोस सीरीज के? थैंक यू द मिनट. हां ये अच्छे जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा ये अच्छे जा रहे हैं. 9:30 ब्रो. सही बोला मैं. 9:30 है ना. ए हम वॉच पार्टी वहां जाके कर सकते हैं. वैसे नहीं कर सकते ना भाई. तो पागल है. 9:30 23 10:30 11:30 12:30 बजे पहुंचेंगे भाई हम. और वो दूर भी कितना है गाइस. 8K लाइक्स तो मैं भी डिजर्व करता हूं. दुख दर्द और पीड़ा. चलो चलो बाय बाय. चलो बाय बाय. मैं भी जा रहा हूं. विंग्स बाय बाय टू विंग्स. बाय 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 बाय. के भी नहीं हो रहा. क्या दुख है भाई. क्या दोष है भाई. कोई प्लीज. चलो यार
Thank you so much for joining in. DRX बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा खेले. Thank you so much for joining in. अगर आप नए हैं तो you can definitely like and subscribe to the channel. We are close to 487k. We're just left with 250 subs. So yes, you can definitely go subscribe if you want to. That'll be amazing. ठीक है? Telegram बनाओ, ठीक है? वो करते हैं. 7k done. Sheesh. पता है क्या चीज़ है? देखो, हाउ डज यूट्यूब, मैं तुम्हें सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ. पता है कैसा है यूट्यूब का क्या सीन रहता है? तो जैसे भी कुछ भी वीडियो अपलोड होती है ना, तो वो वीडियो जितनों को दिखती है ना, मान लो अगर मैंने वीडियो अपलोड करी और वो 10 लोगों को दिखी इनिशियली, तो उन 10 में से अगर 6 लोगों ने उसे क्लिक किया ना, तो उसकी परफॉर्मेंस डिसेंट रहेगी. ठीक है, अगर 8 लोगों ने क्लिक किया तो यूट्यूब को लगेगा भाई ये वीडियो है देखने लायक, समझ रहे हो? तो वो और लोगों को रिकमेंड करता है. तो ऐसा एल्गोरिथम है. ध्यान देने को बोला गया, ठीक है भाई, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं. चलो, तो बस हिंट दे रहा था थोड़ा सा. चलो गाइज, मैं चलता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. आई होप यू गाइज एंजॉयड द स्ट्रीम. इफ यू डू, लाइक, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे RakaZone Gaming है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो. मैं मिलूँगा आपको कल दिन में स्ट्रीम करेंगे हम, तो दिन में मतलब आफ्टरनून टाइप्स. तो कल मिलते हैं. टाटा, हैव फन, टेक केयर, बाय. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. लव यू, बाय. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make them time, it's only to the end. So pray